Asha ji sitting here, and all my CA brothers and sisters and other professionals who is joined this webinar, because basically today topics are various topics has been lined up to the evening, but starting is my CA brothers and sisters and other professionals who is joined this webinar, because basically today topics are various topics has been lined up to the evening, but starting is my brothers and sisters and other professionals. What is this? Join this webinar. कोई अनम्यूट है क्या आशा जी? किसी के मुझे लग रहा है यूट्यूब से आ रहा है ये. हाँ यूट्यूब से किसी के आ रहा है. नाउ इट इज ओके आई थिंक. So I welcome Ashok Batra sir and everyone. Today topic of starting is basically with regard to the GST updates by the budget, and we have with us Ashok Batra sir, who is a guru in the indirect taxation, and basically I hand over the mic to Sumit ji to welcome Ashok Batra sir, and then I request Asha ji to basically line up and tell all the schedule of the today webinars to everyone. So over to you, Sumit ji. Thank you, Ankit ji, for welcoming all the participants here. First of all, I would like to thank Ashok Batra sir, guru of the indirect tax and all professionals, who are always ready to spare time for the professional cause of the profession. So really thankful to you for opening this budget webinar series. And thanks to all participants who have joined in this panelist on Zoom, and all who have joined through other forum, YouTube. As Ankit ji told, we have planned various sessions, various discussions. So we are really working for the cause of the profession, what we can deliver, what we can learn from the senior professionals to practice in our daily routine, in our professional life. So this is the day when we will discuss 6 different topics in the different sessions. And with this, welcome to each one of you once again. And I request Asha ji to enlighten all the series about the topic. Over to you, Asha ji. Thank you, Sumit ji, and thank you, Ankit ji. वैसे थोड़ी सी आई गेस कि हमारी स्टार्टिंग में ऊपर नीचे हो गया अशोक सर का वेलकम करने के बाद. वी आर एनलाइटिंग ऑन द प्रोग्राम, बट आई विल नाउ हार्डली टेक 1 or 2 minutes with your permission, sir. Yes. I welcome each and every participants in Zoom and watching in the YouTube live. And आप सभी का स्वागत है कासा के इस ऑल इंडिया सीए कॉन्फ्रेंस ऑन यूनियन बजट 2023. As we all know कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी ने 1st Feb 2023 को she presented this budget in the parliament, and now it's almost a week, and I guess every one of us has analyzed on their respective parts in whatever field they are practicing, whether direct tax or indirect tax or anything. So these sessions must be going to be a very interactive, because जब एनालिसिस हमने खुद कुछ भी की है तो आज उसका एक बहुत टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है, बिकॉज जैसे ही बजट आता है हम लोग सब सुनते हैं, ऊपर प्रोविजन पढ़ते हैं और हो गया, क्वेश्चंस आने अब शुरू होंगे. तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, एंड वी हैव विद अस इन आवर फर्स्ट सेशन ऑफ स्टालवर्ट ऑफ आवर प्रोफेशन सीए अशोक बत्रा सर. वेलकम सर. तो फ्रेंड्स, दिस होल प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 6 सेशंस, 1 hour each, and each 6th session will be taken by 6 different experts in their fields. And ye session starting with the indirect tax proposal, and then we will have impact on real estate sector, then the amendments in various heads and income and deductions. This is the part of direct tax. And then we will have international taxation, and then we'll have capital market projections, and then the last session will be judicial analysis of the direct tax proposals. So starting with the first session, I will now request Ankit to give brief profile intro of Ashok sir to further proceed with the session.
Yes, Ankit, please. I once again welcome Ashok Batra sir. And with regard to the profile of Batra sir, I say as in income tax we say Grisha Ojha sir is there, and in indirect tax we say Ashok Batra sir is there. Right. Sir is basically, with regard to the profile, I say to sir, what my age is around 39 years, and sir is more than that years of experience in the indirect taxes and handled various upper levels of appeals, tribunal, and much more than that. What to say about the sir? And sir is a author with regarding to the basically GST books. And in case of any problem I face in indirect taxation, which is of upper level, which is not on our level, I call to sir and ask sir, what is the solution? So giving the profile of the sir from my mouth is a very small thing. So sir profile is too big. I, without wasting much of time, I basically request sir to start the deliberation, and I welcome sir to give as sir as spare his precious time for Team Casa, and always sir available for the Team Casa. Thank you sir, and I over to you sir. Let's start. At the outset, am I audible? Yes, Yeah, sir. sir. Perfect, sir. Perfect. Yes. Perfect. At the outset, I would like to thank CASA team for providing me this opportunity. And I fully agree with Asha's comment that it is 8th day now since the proposal made in the finance bill has come to the public light. Every professional, every stakeholder, maybe a investor, maybe a businessman, has analyzed the budget from his own angle. And I will take you through to the indirect tax proposal, particularly GST proposal, which has been made in this Finance Bill 2023. Before I start my journey, I would like to request all of you, in case you had any particular issue. These provisions are there, but we are not able to understand this part, that part, or this is the query. So I'll suggest you, either you can write in the chat box, you can raise your hand, or you can in between. I don't know what is the procedure, whether everybody will be muted. So then we have to mention in the chat box, etc. So that I can deliberate on those issues. That is more important, according to my understanding. And wherever there are two different interpretations, I would like to deal with both the possible explanations and the views of the professionals. Friends, starting with the journey, I'll say that this finance bill exercise has become totally predictable so far as indirect taxes are concerned. Because in the finance bill, they come out with the proposals amending the statutory provision which are likely to be affected by the decision of the GST Council. GST Council met couple of times in the financial year. Whatever could have been exercised through the delegated legislature by way of issuing notification, amending rules, etc., that is being done immediately after the meeting is there. But wherever they require amendment in the statutory provision, then this is the only opportunity for the finance minister to do it. Union cannot brought in any change without the recommendation of the council for the area which has been specifically reserved for GST council. Two big disappointment, of course. One is in the news today. No roadmap for the GST tribunal, but when I was looking at the newspapers today, I could find that the government is thinking of setting up tribunals, and they are working very seriously on it. How it will be done, I don't know. But I'm sure once the roadmap is there, the infrastructure, recruitment of members, etc., and the things will be taken place. Second important thing, amnesty scheme. I was thinking, because GST was a new proposal, a huge shift in the way the indirect taxes are to be levied in India after the implementation of GST. And not only that, as they could not get the technical support as they were expecting from the GSTN portal. So therefore, there have been
some changes in the basic structure. For example, 1, 2, 3 could not be made applicable. As a result of which the amendments have been made too much and at very regular interval. Even the professionals could not cope with it. So in my humble opinion, the amnesty is required. For example, in circular number 183, they have talked about mismatch for 17, 18, 18, 19, and now the Kerala High Court has already stated it will be applicable for 1920 also, 2021 also. So I still hope there can be some amnesty because it need not come only through the finance bill. Now, friends, we will continue with the proposal. The first proposal which is being proposed in this finance bill is with regard to Section 10. Section 10 deals with composition scheme. In this section, Section 10, subsection 2, Clause D is proposed to be altered. Similarly, 10(2) capital A, Clause C, wherein the word goods are proposed to be deleted. Section 10 deals with the composition scheme, and by deleting these words, they are giving a very big relief to the small and medium enterprises, because anyone who was selling the goods through electronic commerce operator was not permitted to opt for the composition scheme. So a small businessman doesn't want to get or opt for the regular payment of tax because his products are mostly B2C and the recipient is not likely to get the credit. And the compliance for a regular supplier is somewhere very, very complicated. Whereas in the case of composition dealer, these are very simple. He has not to claim any credit, only quarterly payment of tax, one return, etc. So it is a big relief. And believe me, the way the things are going up, and particularly when you go to the new towns or cities which are being developed, for example, Gurgaon, I have recently shifted there. So I realized that now no vendor is permitted to go into the complex. Most of the gated complex are like that. So everything is coming through electronic commerce operator. So if these small vendors have to register themselves as a regular dealer and they are not being allowed to opt for the composition scheme, things are really difficult, and it's a very, very big relief if they can still supply the goods through electronic commerce operator and opt for the composition scheme. This is applicable to both the composition scheme, either it is a services 6% or it is 1% trader and manufacturer. So the only thing you need to be very, very cautious is, in spite of this relaxation, you are not being permitted to make interstate supply of goods. Second precaution, it is applicable as the word goods are supposed to be deleted and not the services. So even for the purpose of services, this interstate supply is not being permitted. So these two restrictions will continue to be there. You cannot make supply of services through electronic commerce operator and not for the composition scheme. You can certainly supply goods. That sale has to be intrastate and not interstate. Then friends, the second proposal is in section 16. We all understand section 16 deal with the input tax credit eligibility. But this time, the proposal is to trigger with not the clauses, but with the proviso second and third. Second proviso talk about payment has to be made for the value of supply and tax thereon within 180 days from the date of invoice. Earlier, the language was otherwise it will be added to your output tax liability and shall be payable with interest. Even section was not mentioned. Now, because a 1, 2, 3 system could not be materialized, and now very recently they have amended 37 also, where the language uses you have to pay the tax along with interest. So the language of section and rule is being allied. Though I fully agree as a professional, firstly the section should be amended and then the rule should follow. They are following the
other way around. Firstly, they have amended the rule 37 and then they are aligning the section with the rule. But in any case, it is a technical correction wherein the rule has been aligned with the section, or the section, rather I should say, section has been aligned with the rule language. Then comes proviso 3. In third proviso, I was supposed to make the payment to the supplier. Supplier was supposed to make the payment to the revenue. So they have added the word payment shall be made to the supplier. Earlier on, you have to make payment for the value of services and services thereon. And in case it is paid after 180 days, you can claim the credit. Now they have added the word to the supplier. Appears to be a very simple change, but in my humble understanding, it can create a real problem. If I am not making the payment to the supplier, but it's a deemed payment to the supplier, you can say where it can be the situation. The situation can be, I had a dispute with my landlord. Court has instructed me to pay the rent with the court. Or there is a garnishee order, and as a result of which I am supposed to make payment to the competent authority, not to the supplier or the creditor. Similarly, when we talk about recovery under section 79, there may be attachment, and they send the letter to the all debtors. This much money owed to Mr. A, who is a GST defaulter, kindly make payment to the GST department if it has become due. Of course, if the payment has not become due, the department cannot do anything. So, in this situation, the question may arise, the payment has not been made to the supplier, but the payment has been made to the authorities, court, or to the department. In my humble opinion, if you look at these provisions, because these provisions are there in income tax also, whenever we are making payment to these authorities, department, etc., then that payment is deemed to have been made to the supplier. So in my humble opinion, they have aligned the language with the rule, but even if you have made payment to the department, authority, or any court, your credit eligibility will not be affected, and that shall be treated as payment made to the supplier only. Chaliye sir, now we move to the third amendment, because there are 15 amendments in CGST Act and 2 proposed amendments in IGST Act. Third amendment is section 17. बड़ा खतरनाक और बड़ा अच्छा सेक्शन है. It talk about apportionment of credit. Section 17(1) कहता है when you are carrying out your activities, your business and non-business. Subsection 2 कहता है when you are providing exempted and taxable supply. Now, they are not triggering with the section 1 or 2. The proposals are in section 17(3) first. What is 17(3)? 73 tells you how to calculate the value of exempt supply if we are providing taxable and non-taxable supply. And they have given their own formula. What is the definition of exempt supply for the purpose of section 73 is entirely different what has been defined in section 2. So here the basic rule was activities specified in schedule 3, which are 8 in numbers, 8 paragraphs are there. So those activities are neither treated as supply of goods, nor treated as supply of service. And even if you earn revenue from those 8 activities, let us say high seas sale or whatever, then that revenue was not included in the definition of exempt supply except under para 5. What was para 5? Para 5 used to say sale of land and subject to clause B of para 5 of schedule 2, sale of building. So that means a builder who was getting the payment before occupancy certificate, that revenue was to be included in the definition of exempt supply, and rest 1 to 8 were not to be considered. But now they are making a change wherein they say activity specified in para 8A shall also be considered as exempt supply if you had made any sale.
for the purpose of calculating the eligible ITC. Now, what is para 8A? 8A talk about when you are making a sale from the custom bonded warehouse. So meaning thereby, once in the case of builder, and if you are making a sale from the custom bonded warehouse, before filing the bill of entry for home consumption, that revenue shall also be included into the bracket of exempted supply. So once I'm calculating the exempted supply, the scope has gone up. I'm calculating my taxable supply, then I'm apportioning, I'm making A plus B add and the percentage. So when I look at the eligibility of credit, that is percentage of my taxable supplies, which bears to the total turnover as calculated in the formula I have discussed with you. Or I'm not eligible, or I am supposed to reverse the credit in terms of what my exempted supply bears to the total turnover. So now the scope of exempted supply. In nutshell, in simple language, any supply directly received for bonded warehouse sale or builder, no credit, and common services which are being used for these two activities has to be proportionately apportioned. So this is the 17.3 proposal. Then I'm sure all the chartered accountants who are dealing with GST are fully aware of one section 17.5. It is such a notorious section and it is nothing but block credit. Everybody is aware. These credits are not available to us. So what is block credit? So now they intend to insert clause FA in section 17.5, wherein they say if once the company is incurring certain expenditure on corporate social responsibility under section 135 of the Companies Act 2013, then they are not eligible to claim the credit of the GST paid for fulfilling their obligation of corporate social responsibility. इनकम टैक्स में खर्चा नहीं देना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में, यहाँ कह दिया आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेंडमेंट है, दिस अमेंडमेंट इन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड settled principle is you cannot fasten off any liability retrospectively. Of course, they have got the power, but normally in case they have to do it, they will have to specify it specifically. So once it is not being stated, so this clause, that means I will not be eligible for the ITC on expenditure incurred to fulfill my obligation of corporate social responsibility. That credit shall not be available to me from the day this section will be notified. Don't understand that once the act is enacted, this section will come into force. No. In GST, ऐसा नहीं होता है. We all know, because the corresponding amendment has to be made in the SGST Act, UTGST Act, and then they have to be notified. Now, in this regard, the question which may arise, what will happen to the expenditure before this section is being notified? Let us assume it is notified in October 23. It may be subsequent to that also. So assuming for a minute, October 23. So I am into February 23 and I have already incurred certain expenditure where I have claimed the ITC. Should I reverse it or should I not claim? In my humble opinion, there is no doubt there are authority of advance ruling which are in favor of the assessee, which are against the assessee. But once they say that we are proposing this clause from this date, that itself is a ground to claim the credit. Because one can say that this restriction was not there prior to this. Number two, as per the judicial discipline in pre-GST era, anything which I am duty bound or legally compelled to do it, and that is a mandatory condition for the purpose of carrying out my business, the credit should be available because you cannot do any business.
And those judgments were when the credit was linked to the taxable event. For example, excise. You were eligible for the credit of input for the manufacture of final product. So canteen services, which was the requirement of the legal, labor law, or in the case of BPO, they are supposed to have a cafe and all that because they work for 24 hours. So क्या उन पे क्रेडिट जो PGST लॉ तो उसमें मिलता था. अब GST लॉ में तो वैसे भी मेरा क्रेडिट 16(1) का लिंक कर दिया बिजनेस से. It is not linked with supply. It says all the GST paid, used and intended to be used in the course or furtherance of business, not for the purpose of making taxable supply. Kindly mind it. So once that definition is rather wide as compared to pre-GST era, so in my humble understanding, it is a good case to contest with. And one, if one wants to, litigate the issue, he can certainly claim this credit till this section is not being notified. This is my personal opinion. Anybody has to take a conscious thought looking to the amount involved. If the amount involved is not much, why should one go into litigation? But if the amount is substantial, then you have to consult with your consultant and take a call with regard to it. So there is no doubt the day when this section will be notified, after that you will not get the credit on the expenditure incurred to fulfill your obligation of corporate social responsibility under section 135 of the Companies Act 2013. Next change is in section 23. This is again a very important change. What is section 23? If you look at this section, section 22 talk about registration. Then 23 says person not liable to seek registration. 24 talk about mandatory registration. And 25 talk about procedure of registration. So what is likely to be triggered is 23. If you look at section 24, which used to say, notwithstanding anything contained in section 22(1). So 24 was getting a superiority over 22(1). But 23, nothing was mentioned. Now, what was 23? Who was not liable to be registered? So clause 1 talk about two situations. Number 1, if I am engaged exclusively in making supply of goods or services which are not taxable or which are exempted under the Act. And second was an agriculturist for the sale of produce out of cultivation of land. इन दो आदमियों को registration नहीं लेना था. 24 was having non-obstant provision only with reference to 22(1). Now, in a situation, let us say I have to pay certain expenditure to the advocate, which is at a reverse charge, or I have to make certain payment to the GTA for procuring certain material which are under liable to tax. And then in terms of section 24, if I am not mistaken, clause 5 shall. But anyway, it is there. So I was supposed to seek mandatory registration. 23 says that once you are dealing with exclusively taxable goods, you are not registered. Now what will you do? Whether section 24 shall prevail, though it is notwithstanding only with reference to 22(1). 23 is not being mentioned there. So this proposed amendment is with effect from 1st July 2017, the day GST was introduced. And it is a very good amendment which says, notwithstanding anything contained in section 22(1) or 24. So now 24 is subject to section 23, meaning thereby, in case of any conflict between 24 and 23, 23 shall prevail. So if I am providing only medical services, or I am providing only educational services, or if I am a dealer who is selling the flats only after receiving the occupancy certificate, then I am not supposed to seek registration even if I am receiving the supplies which are subject to reverse charge. Very, very important to understand. Such a big relief
particularly for the educational institutions, for the suppliers who are engaged with the supply of medical services, maybe paramedical, clinical establishment, etc. So it's a very good change, and the change has been proposed with effect from 1st July 2017. तो अगर कहीं आपकी नॉन कंप्लायंस है and the department is already investigating this issue, then it is my suggestion, keep that issue alive, responding to the show cause notice, responding to the adjudication proceeding, and in case the adjudication has been done, responding to the appellate. Once this section will be notified, the provision will come into picture, and you are without any doubt liable for the relief. Then friends, the next change which is being proposed is 4 sections which I'll take collectively. Section 37, Section 39, Section 44, and Section 52. In all these sections, for example, if we talk about 37, they intend to insert subclause 5, subsection 5. In 39, they want to insert 11. In 44, into the full section, that is being made subsection 1, subsection 2 is proposed to be inserted. And in 52, I think section 15, subsection 15 is proposed to be inserted. Now, this section, which is proposed to be inserted in all the 4 sections, what does it provide for? Earlier on, you were supposed to file GSTR 1 in terms of section 37. You are supposed to file GSTR 3B in terms of section 39. You are supposed to file annual return in terms of section 44. And you are supposed, the electronic commerce operator was supposed to file GSTR 8. We could have filed these forms with the late fee, but there was no upper limit till what time I can file these forms. Now they say they are proposing an upper limit of 3 years from the due date of payment of tax. Of course, they are also taking power. They can permit a registered dealer or a class of registered dealer who can file even after 3 years. But then that is enabling provision. Wherever they want to give concession to certain persons, they will give it. But the main proviso is that you cannot file your GSTR 1 after 3 years, GSTV after 3 years, annual return after 3 years, and GSTR 8 after 3 years. Looking to the present position, I really fail to understand. I cannot file my GSTR 1 for the subsequent month or for the current month if I have not filed GSTR 1 for the preceding month. I cannot file my GSTR 3B till I file the GSTR 1 for that particular month. And as per the provision section 29, my RC is liable to be cancelled if I fail to file my 6 returns or 2 quarterly returns. Now, where can be the situation wherein I can file these returns after 3 years? And what is the objective of this amendment? What they are going to gain out of it? I have tried to apply my mind, in my humble opinion, putting up such a long return period, which is practically not possible. I have yet to see a dealer who has not filed the returns for 36 months, GSTR 1, and his RC is surviving. In the case of annual return, you can say, I cannot file after 3 years. Then what will happen? In any case, I have to pay the penalty. Maybe the department has not taken any action. I want to take advantage of 73.5, 74.5. But is it possible? Practically not. If I have not submitted my return for 3 years, department must have taken some action. I don't understand what is the practical usefulness of this provision wherein they are restricting the time limit to file this. The only thing, maybe those cases will be very small or limited number, and they don't want to put data on the portal.
So they are putting up their portal in such a manner. After 3 years, this data will go somewhere and you are not supposed to submit the file. So maybe some technical advantages the government is likely to have on the GSTN portal. Otherwise, in my humble opinion, this amendment is not going to serve any useful purpose. And in any case, I cannot file my GST or run my business रुक जाता है. E-way bill नहीं मैं issue कर सकता, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं. तो मेरे हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So far as trade and industry is concerned. Sorry brothers, मेरा थोड़ा सा गला खराब है. I went to the dentist, उसने पता नहीं क्या डाल दिया मेरे मुंह में. Anyway, so this section, these are the proposals there. Now moving to the next amendment, which is in section 54. मेरे को याद है कि ये section 54 भी बड़ा notorious और बड़ा important section है. हर आदमी को इसमें struggle करनी पड़ती है क्योंकि ये section deal करता है refund से. They intend to make amendment in section 54(6). The word provisionally assessed. When I apply for the refund, 90% provisional refund is to be given after reducing the provisional ITC. Now, because that scheme 1, 2, 3 has not been made operational, so this provisional ITC has got no meaning. So they are proposing to delete these words. Otherwise, also, we have so many professionals now, 75, I could see the number which are attending. I don't know about YouTube. Can anybody tell me कि उन्होंने रिफंड फाइल किया और 90% उनको प्रोविजनल रिफंड मिल गया? तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शंस है, because now that provisional scheme is not over with effect from 1st January 2022, I think. We have to confirm the date, but in my memory, it is the date. So उन्होंने उसको align कर दिया. Then the next amendment, which is being proposed in section 56, which deal with the interest on delayed refund. Date has been notified. Earlier on, the language was within 60 days from the date of filing the application. Now they say when the refund beyond 60 days after the application is filed. In my humble understanding, both are having the same meaning. जब तक आपके application proper नहीं होगी, proper application means when your defect has been removed, in case you have filed a defective application. When the proper application is being filed, उसके 60 दिन के बाद interest मिलना, अब beyond 60 days मिलना. It has got the same meaning. But the second amendment which they are proposing is enabling the government to frame rules how this interest is to be calculated, putting up conditions and restrictions. But I don't understand, once you are liable to pay the interest, the calculation has to be simply arithmetically done from the due date of filing the return till the date of payment. But anyway, because they want to have standard operating procedure all over the country, and they are vigilant that perhaps this section is not being, interest is not being given. And ultimately, when they lose the case, a lot of money goes as an expenditure to the government in terms of making payment of interest to the person who are entitled for the refund. जैसे इनकम टैक्स में भी आपने देखा होगा, रिफंड जल्दी आते हैं, गवर्नमेंट इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ाना चाहती है, क्योंकि यहाँ 6% देते हैं, उनको 2% पैसा मिलता है या 3% में मिलता है. बैंक का FDR भी 3% था अभी. Now the things have started changing and the FDR interest is going up. So maybe they want to reduce their interest cost, so they may put up certain conditions. So we have to see, it is only enabling provision for the government, wherein they can formulate the rule how this interest needs to be calculated, and also putting up conditions and restrictions there. Friends, उसके बाद जो section amend होने वाला है, बड़ी लंबी छलांग लगी. We are moving to section 122 directly now. What is 122? 122 में 1B section is proposed to be inserted. This section deal with the subject of penalty, and this sub clause which is proposed to be added
cast responsibility on the electronic commerce operator that in case he permit any person to make sale for which he is not entitled to, or he himself doesn't comply with the provisions in filing GSTR 8, or third is if he is permitting any supplier to make interest rate sale, which is not permitting. I've changed the order. The first was second, and this was the third one, non-compliance on his part. So they say order is being changed, otherwise subjects are the same. Electronic commerce operator shall be subject to penalty amounting to 10,000 rupees or the amount of tax involved, whichever is higher. So the minimum amount of penalty is 10,000. Now, because a composition dealer is also permitted to sell goods, so while calculating the amount of tax, will it be the tax which is payable by the composition dealer? No. They say for the purpose of imposition of penalty, it is not composition dealer tax. Rather, it will be presumed, even on the composition dealer with the penalty, it will be presumed that the goods have been sold by a normal registered dealer. So this is the penalty on electronic commerce operator. Mind it. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे तो आ ही गई, पर जिस आदमी ने इंटरेस्ट रेट सेल की, whether he is not liable to pay the penalty. Suppose I am not supposed to make interest rate sale, I made it, or I am not supposed to make sale through electronic commerce operator, and I does it. Forget about the third one because that is a default on electronic commerce operator itself. तो क्या मेरे पे penalty नहीं लगेगी? Or whether there can be a double penalty for the same cause of action. I am doing it, he is permitting me to do. Can it be said these are two different cause of action? One can argue. So the government is proposing the penalty. So it will not absolve the supplier also. He will also subject a penalty. Whether double penalty is leviable or not, I think the matter will be debated in the court. And finally, it is the court decision which shall prevail. After this, we are moving to another interesting section. Section 132. एक ऐसा सेक्शन जिससे सब डरते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो. और प्री जीएसटी एरा में इनडायरेक्ट टैक्सेस में अरेस्ट होती थी, बट नॉट टू दैट एन एक्सटेंट. मेरे 25 साल के कैरियर, 40 साल के कैरियर, आई हैव बीन डूइंग सेल्स टैक्स इन सिटी 1. मैंने एक केस में प्रोसिक्यूशन देखा. And I was having reasonably good volume of work. Excise may I have seen 2-3 arrests. But in GST, in these last 4 years, I am excluding the number of professionals. Businessman may more than 800 arrests as per the official data, and the average period behind the bar is more than 45 days. तो बहुत डिमांड थी कि सर ये गलतियां जेन्युइन भी हो सकती हैं और इसका मिसयूज हो रहा है. So the government has decided to decriminalize certain things. वो decriminalization की जब बात आती है तो उन्होंने 3 चीजें कही. 132F, 132G, J and K, if I am not mistaken. Yes, it is 132G. बिल्कुल सर, GJK है सर. जी जी. G talk about obstructing or preventing any officer in the discharge of statutory duty. J talk about tampering with or destroying any material evidence or document. And K talk about failure to supply any information which is supposed to supply under the provisions of Act read with rules, or fails to supply information. अब ये तीनों clauses बड़ी generic है. मैंने जब इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया. इट मे बी टाइपोग्राफिकल एरर, इट मे बी एनी अदर ह्यूमन एरर. ऑब्स्ट्रक्टिंग, मैंने उनसे कहा सर ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कैमरा में प्रोसीडिंग करेंगे, अब आप सर्च के लिए आए तो मैं अपने कैमरा से चला दूं? तो कहना क्या बदतमीजी करते हो, कहीं बात हो गई. So whether I have obstructed or he has not followed the law. So these are all general situations. So they say that in these 3 situations,
there will be no prosecution at all. They have been decriminalized totally. दूसरा उन्होंने कहा कि जो prosecution की limit थी, if I am committing any offense which is subject to prosecution and the amount involved is up to 1 crore, there was no prosecution. Now that limit of 1 crore has been increased to 2 crore rupees, except in one situation, जहाँ 1 crore ही रहेगी. वो situation है when I am supplying the goods or services and issuing an invoice without supply of such goods and services. Meaning thereby, once I am issuing only an invoice which is not being followed by supply of goods and service, this has been treated very, a grave offense by the government. And in this case, the limit of prosecution has not been enhanced from 1 crore to 2 crore, and it continues to remain up to 1 crore only. Chaliye sir. The next section, which is proposed to be deleted, is proposed to be amended, is section 138. 138 किस पर डील करता है? Compounding of offense. So जहां कहीं prosecution होगा, what is compounding of offense? मैं कहता हूं सर मैंने एक offense किया which is subject to prosecution, I can be imprisoned. तो मुझे मत करो, फाइनेंस का इशू था, मेरे से पैसे ले लो जो लेने हैं और मेरी जान छोड़ो, मैंने पैसे की हेराफेरी की है. तो कहता ठीक है. They permit you, if the department will not initiate prosecution against you if you pay that compounding fee. Now the changes are, first of all, because 3 offenses, 132, G, J and K, have been decriminalized, so there is no question of any compounding fees for that. That is being aligned with. Then there was a clause, if I am committing any offense under any other act. If I am committing any other offense under any other act, that is also being streamlined into this provision. So, firstly, the clause is being amended to take care of the changes which has been proposed in section 132. And one additional change, if I am committing any offense under any other act. Then friends, in subsection 2, the amount of fees, which was earlier on minimum 10,000 rupees or 50% of the tax involved, and maximum was 30,000 rupees or 150% of the tax involved. Now it is being proposed to be reduced. Minimum fees 25% of the tax and maximum fees by to the amount of tax involved. So this is the offense. Kindly appreciate, जब हमने कहा कि जीएसटी में प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, but that doesn't mean कि अगर वो आईपीसी में आती है सेक्शन तो आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा. ये सिर्फ एक मिथ लग रहा है कि सरकार ने बड़ा रिलीफ दिया, पर कोई रिलीफ नहीं है. If you obstruct any officer from performing his duty, is it not a punishable offense under IPC? IPC में prosecution हो जाएगा, GST में नहीं होगा. If I am giving a false document, मैंने चलान गलत दे दिया, is it not a case? अभी आपको सबको याद है, मैं याद कराना नहीं चाहता, but context है गुड़गांव के जो CS के साथ जो issue हुआ था, तो उन्होंने कहा भी they have given a false certificate, which is an offense under IPC, where the imprisonment is much more. यहाँ तो सिर्फ 5 साल ही है मैक्सिमम. इस बात को ध्यान रखें, यहाँ जीएसटी से हटा दिया, लेकिन आईपीसी में यू कैन स्टिल बी प्रोसिक्यूटेड इफ दैट डिफॉल्ट फॉल्स अंडर आईपीसी, राइट. सो 138 में भी कंपाउंडिंग में जो रिलीफ दी है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया. अब एक सेक्शन नया इंसर्ट करना चाहते हैं 158A. मुझे नहीं समझ में आया ये notwithstanding anything in respect to section 133, which deal with the liability of officers and certain other persons, subject to section 152, which deals with the bar on disclosure of information, deals with 158, which deals with disclosure of information by public servant. So in case of any conflict between these 4 sections, 158 shall prevail. अब 158 क्या कहता है? Very interesting.
ये कहता है कि whatever information has been given by the supplier at the time of his registration in his GSTR1, in his GSTR 3B, in his e-invoice or in his e-way bill. So in सब की information the department can share with the other portals, which may be enforcement directorate, which may be income tax, which may be corporate affair. तो इन सब के साथ ये information share हो सकती है. But what is really interesting is subsection 2. I would like to just read the language of this section. What they say? They say for the purpose of sharing the details under subsection 1, the consent shall be obtained of the supplier in such and such situation and recipient in such and such situation. In order to operationalize subsection 1, you are asking for कि supplier और recipient की information चाहिए, तो कौन supplier आपको information दे देगा? That means this section can never be operationalized. Or they intend to say आपकी जो consent है that is deemed to have been received by the department, but this language doesn't suggest so. This language clearly says shall be obtained. अगर आप मेरी मर्जी पे हो और आप मेरे से कोई परमिशन दे दो, मैं आपकी इंफॉर्मेशन ईडी में देना चाहता हूं, तो मैं दूंगा क्या परमिशन? सबसेक्शन 3 इसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस सरकार पे नहीं आएगा, जीएसटी पोर्टल पे नहीं आएगा फॉर एनी लॉस व्हिच इज बीइंग कॉज्ड टू द सप्लायर और रिसिपिएंट फॉर शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का तो ये हाल है सर, अगर आपने मेरा जीएसटीआर 1 किसी का शेयर कर लिया तो वो तो मेरी अपना सारा कस्टमर के नाम सारे चले गए, रेट चला गया, सब कुछ चला गया. बट देन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. देयर दैट रिमेन टू बी ए कॉन्फिडेंशियल only. But what they are trying is they may share with the other portals of the governmental authorities, where again, in my humble opinion, that confidentiality clause will certainly apply there. So there is nothing to worry. But in case your permission is required, then how will you operationalize this section? And then you say कि notwithstanding, अगर सब clause 3 पढ़ेंगे ना, तो क्या कहता है? Notwithstanding anything contained under any law for the time being in force. हिंदुस्तान के सारे कानून पकड़ लो, हमें कुछ नहीं कर सकते आप. अगर आपको कोई लॉस हो गया इंफॉर्मेशन शेयर करने से, हमने तो आपकी कंसेंट भी ली थी, कंसेंट देगा कौन? I don't think that this section can operate in its proposed form. अगर इस फॉर्म में ये सेक्शन आता है तो ये ऑपरेशनल हो ही नहीं सकता. The government need to make some amendment. There appears to be some error in drafting this section. Then friends, the last change in IGS is amendment in Schedule 3. Schedule 3 deals with the activities which are neither supply of goods nor supply of service. Para 7 and Para 8 was inserted with effect from 1st February 2019. The question was, if it is not a supply with effect from 1st February 2019, then how can it be a supply for the period 1st July 27 to 31st January? When there is no change in the charging section, there is no change in the taxable event. The department has already started issuing notices with regard to these 3 supplies for the period 1st July to 31st January. And these 3 transactions which are being covered in Para 7 and 8 are when I am buying the goods from China and selling it to Dubai. That means I am buying in non-taxable territory and selling it in non-taxable territory. Secondly, when I am making a sale from the bonded warehouse before I file the bill of entry for home consumption. Thirdly, high seas sale. When the goods have left the custom frontier of India and before it touches the Indian custom frontier. So friends, in my humble opinion, if these activities were not supply on or after 1st February, they were not supply before the period also. The government has realized it and they have said these amendment will be proposed with effect from 1st July 2017. So
there is no doubt there will be reduction in the litigation. Then comes subsection 2. They say wherever tax has been paid to the government, refund shall not be permissible. In these three supplies, can there be a situation I can collect the tax from my recipient? If you say I have not borne the cess or tax, therefore it is possible, but वो तो है ही नहीं ना. मैं जब दुबई से माल लेके चाइना को बेच रहा हूँ या चाइना से माल लेके ऑस्ट्रेलिया को बेच रहा हूँ, तो मैं कहाँ से टैक्स लूंगा? हाई सी सेल्स में कैसे ले लूंगा? एंड थर्ड, बॉन्डेड वेयर हाउस में जब मैं सेल कर रहा हूँ, मैं जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकता सेल फॉर द फॉरेन टेरिटरी. So in any case, withholding of interest will be against the constitutional provision, and I'm sure somebody will certainly challenge it. So with this, we are concluding our deliberation with regard to the changes proposed under CGST Act. Now we are coming to IGST, where two changes have been proposed. As per the existing provision, anyone who is receiving the online information database access or retrieval services and falls under the definition of non-taxable online recipient, the tax has to be paid by the supplier of OIDR services. आज की डेट में OIDR services में ऑनलाइन नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग है, ई बुक्स है, ई म्यूजिक है, ई वीडियोस है. तो इन सब से जो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने डाल दी सप्लायर ऑफ सर्विस पे. अगर उसका कोई एजेंट नहीं है तो ही हैज टू अपॉइंट. तो ठीक है, बिकॉज हर घर में नेटफ्लिक्स देखा जाता है, हर घर में अमेज़न की पेमेंट होगी है, सरकार कहां से टैक्स लेगी? उन्होंने कह दिया आप दोगे, नो प्रॉब्लम. अब क्योंकि सरकार टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना चाहती है, तो उन्होंने 216 which contain the definition of online non taxable online recipient और OIDR 217 दोनों की डेफिनेशन को अमेंडमेंट के लिए प्रपोज किया. The proposal is earlier on non-taxable online recipient includes government, local authority, governmental authority, individual, any person who is not registered and is receiving such supplies otherwise than in the course or furtherance of business. अब क्या proposal किया? सब हटा दे word, only unregistered. And not only that, they said whether it is for the purpose of business or not. So in fact, if they are supplying goods to the unregistered persons, then whether it is for business purpose or not business purpose, because they were finding it very difficult. If I am Ashok Batra, whether I am using it for AK Batra and Associates or using for personal purpose, पता नहीं था. तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा जब टैक्स देंगे इसको सिंप्लीफाई कर दो. तो सिंप्लीफाई कर दिया. नेटफ्लिक्स वालों ने जितने भी जीएसटी नंबर की सेल नहीं है, सप्लाई नहीं है, सब पे टैक्स देना है. चाहे वो आप बिजनेस में यूज करो, कहीं करो, तो उनका काम आसान कर दिया. OIDR में उन्होंने दो कंडीशन ऑटोमेटिकली those services are provided and with minimal human intervention. इन दो कंडीशंस दी, इन दोनों कंडीशंस को प्रपोज कर दिया, हटा दो. So the scope of OIDR is now widened. So practically everything which you receive on internet shall fall into the definition of OIDR. So with this, undoubtedly scope will go up. But GST में बहुत चीजों का क्रेडिट मिल जाता है, तो अगर इसको बढ़ भी जाएगा, टैक्स लग भी जाएगा, मेरे बिजनेस पर्पस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो जिस आदमी ने नेटफ्लिक्स देखना वो देखेगा ही, थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है. तो दिस इज वन चेंज. फाइनल चेंज इज इन सेक्शन 12(8) and this change has also got its root from 1st February 2019. जैसे शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट लाए थे 1 फरवरी 2019 से, बैकडेट में लिखना भूल गए. यहाँ भी 1 फरवरी 2019 में एक अमेंडमेंट लाए थे, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ IGST, which deal with the place of supply. In the case of transportation of goods by road, if I am providing a service to a registered person, the place of supply is the supplier. तो मेरी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे है, क्लाइंट अगर रजिस्टर्ड है तो जहाँ वो रजिस्टर्ड है, that is the place of supply. So if I am providing service to unregistered person,
and the place of supply was where the goods are delivered for the purpose of delivery, for the purpose of transportation, sorry. तो ये बड़ा सिंपल था. 1 फरवरी 2019 को वो उन्होंने एक प्रोविजो ऐड कर दिया, इफ द गुड्स आर गोइंग आउटसाइड इंडिया then the place of supply shall be the place where the goods are destined. This is similar to the provision which is applicable under section 13. 13 comes into picture when there is one party is a non-resident. तो 13 वाला प्रिंसिपल यहाँ ले आए. गुड्स नेपाल जा रही है, आप दिल्ली में हो, सप्लायर ट्रांसपोर्टर में दिल्ली में, पर ये IGST लगेगा. अभी इन्होंने एक सर्कुलर 184 इशू किया था, जहां उन्होंने ये कहा था इट विल बी IGST सप्लाई, आपको अदर टेरिटरी कैलकुलेट करनी, सिलेक्ट करनी है, एंड देन दिस अमाउंट इज एलिजिबल एज ए क्रेडिट टू द रिसिपिएंट जिस आदमी टैक्स दिया है. क्योंकि ITC में कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपने IGST टैक्स दिया है बट अगर आप एक स्टेट, दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट एक स्टेट में है तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा. तो ITC में ITC का भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा. अब हुआ क्या, स्टेट ने कहा भैया बात सुनो, आपने तो कह दिया क्रेडिट मिल जाएगा, आपके यहाँ लॉ नहीं है, बट जब वो IGST देता है तो पेमेंट कहाँ जाती है? टू द अकाउंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. और वो ट्रांजैक्शन में सप्लायर कहाँ है? दिल्ली का. ट्रांसपोर्टर कहाँ है? दिल्ली का. माल कहाँ जा रहा है? नेपाल. अरे दोनों सप्लायर मेरे स्टेट में या मेरी टेरिटरी में, रिसिपिएंट मेरी टेरिटरी में, और टैक्स यूनियन लेते जा रही है. तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम इस प्रोविजन को डिलीट कर देते हैं. तो ये प्रोविजन इज प्रपोज्ड टू बी डिलीटेड, एज a result of which now I have to see if I am providing a service to the registered person, then its place of location. इस एग्जांपल में जो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली का व्यापारी नेपाल माल भेज रहा है और ट्रांसपोर्टर भी दिल्ली का है, तो ये SGST CGST लगेगा now once this amendment will come into picture. So obviously, Delhi government will get 50% of the revenue. Now they are also happy with it. So this amendment has been done to please the state government, who was not getting any revenue in spite of the fact that supplier and recipient both were located either in the state. And according to them, it was a violation of destination-based consumption principle also. But चलिए सर, वो तो principle generic होते हैं, specific situation में कुछ भी हो सकता है. I have already exceeded 3 minutes. My eyes were exactly on the time because you have taken 3 minutes. I was being given 3 minutes less. So मैंने आज ही बदला ले लिया. मैं कहीं इन्होंने 3 मिनट लेट मेरे हाथ में माइक दिया था. मैं 3 मिनट ज्यादा तक चलता हूँ. और with this, I am concluding my discussion. I am going to the chat box if there is any question. Whether voluntarily CR expenses ITC can post. Sir, once the amendment is there, from that particular date, there is no question of claim of any ITC on CSR expenses, whether voluntarily or mandatorily. Voluntary में तो मेरे ख्याल से पहले भी आपका केस नहीं है, वहां भी नहीं मिलेगा, because then it is not for the purpose of wages. Anyway, RCM on royalty stone crusher, what is the date? Output sir. देखिए सर, रेट ऑफ टैक्स का तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सारे रेट याद नहीं हो सकते. बट सर हम सेपरेटली बता देंगे इसको देखकर. हमें भी याद नहीं है, हम देख के बता देंगे, आपको बता देंगे सर. दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि रॉयल्टी का मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 9 मेंबर्स के पास पड़ा हुआ है, और आप उस डिस्प्यूट में ना जाए. मैं एक प्रैक्टिकल हिंट देना चाहता हूँ. GST से पहले हम कभी टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी आती थी वैट की, और ये सर्विस टैक्स की टैक्स लायबिलिटी होती थी, तो मुझे नुकसान होता था. बट अब क्या है, क्योंकि वैट की लायबिलिटी भी GST में आती है, तो अब आप पेमेंट करके उसको क्रेडिट ले सकते हैं. बाय देखिए सर, अगर सेस की लायबिलिटी सेस में एडजस्ट होनी है, आपकी नहीं है, तो दैट इज योर कॉस्ट इन समरली मैनर. नो, आई नेवर सेड के एग्जाम सप्लायर हॉस्पिटल वाले को नंबर लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ RCM. बट अगर उस हॉस्पिटल वाले की अपनी कोई अदर इनकम है, रेंटल इनकम है, कुछ और इनकम है, जिसकी वजह से GST लगता है, तो उसको नंबर लेने की जरूरत नहीं है. अगेन आई एम रिपीटिंग, उन्होंने ये कहा 23 में कि 24 की जो कंडीशंस हैं उसके लिए आपको नंबर नहीं लेना. दिस सेक्शन विल सुपरसीड सेक्शन 24.
or 22(1). But in case you are otherwise liable, so don't take this kind of decision in a hurried manner. उनकी बैलेंस शीट मंगाइए, एग्जामिन करिए, and then you can answer that. और सर वैसे भी आरसीएम की अगर लायबिलिटी आ रही है पे तो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, here I differ with you. देखिए क्यों पे करनी पड़ेगी? आज मैं सप्लायर हूँ, यही तो प्रपोजल है। एक सेकंड, मैं सप्लायर हूँ, मेरा टर्नओवर लेस देन exempted लिमिट है, am I supposed to charge tax? No. Similarly here RCM में जब उन्होंने ये कह दिया कि this supplies under RCM, तो recipient देगा, और recipient को आप exempt कर दिया, registration नहीं है, तो you cannot pay the tax. So these the revenue is likely to be reduced. There is no doubt about that. But then the strict interpretation is like that. With this, I think I have answered the questions also. Now I hand over the mic to the organizers. Either it is Sumit ji or Asha ji, whosoever wants to take the lead. Yes, Ankit ji. आई थिंक सर का एज यूजुअल जैसे सर बिल्कुल टाइम से कंप्लीट करते हैं और सारा कवर करते हैं, तो सर ने वही मतलब हम तो देखते आ रहे हैं। अंकित, इसमें बस एक चीज बीच में आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, हमारे YouTube पर भी कंसिस्टेंटली मोर देन 60 पार्टिसिपेंट्स लाइव इसको व्यू कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली मैंने बीच में चेक भी किया था, एंड ऑल ओवर इंडिया से इसमें पार्टिसिपेशन है। मोर देन 15 स्टेट्स एंड यूटीज के मेंबर्स हैं जो यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इस वक्त हमारे सेशंस को व्यू कर रहे हैं। Now please. That is a great news for CASA also and for the speakers also. Yes, sir. That is why I interrupted Ankit to intimate this. बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सर को आपने कहा कि सर की प्रोफाइल को थोड़ा, मैं मानता हूं कि सर को कोई ना जानता हो, तो ऐसा तो नहीं है कि सर की बुक को बिना पढ़े और इनडायरेक्ट टैक्स बंदा कर ले, तो आई डोंट थिंक ऐसा है। प्रोटोकॉल लेना पड़ता, करना पड़ेगा। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली, जैसा सर एज यूजुअल विद इन द टाइम सर ने सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया। मैं पूरे टाइम सर का मैंने टॉपिक पूरा आराम से पढ़ा बैठ के, इनडायरेक्ट टैक्स सर के साथ साथ जैसे सर ने पढ़ाया, एंड आई थिंक सब कुछ कवर हो गया है। क्वेरीज भी बहुत कम ही आई हैं, एंड एक दो क्वेरीज ही थी खाली, और सर ने वो भी सॉर्ट आउट कर दी। सो आई थैंक यू अशोक बत्रा सर। इन वर्ड्स इट इज बेसिकली you always give your blessings to Team CASA and to every participant. So I thank you very much for giving your precious time to Team CASA and viewers and explaining the budget amendments. Thank you, Batra sir. I over to Sumit ji for Thank you, Ankit ji, and a special thanks to Batra sir for giving this opening session. जैसा हम आज डिस्कस कर रहे हैं बजट आज तक, तो कंप्लीट कवरेज है। गौरव जी here for the another session. So Batra sir, thank you so much for your with folded hand for your wonderful session as always. Gaurav ji, are you there? Sumit ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार। आशा जी आज की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा थीम था कि बजट आज तक, जहां पर हम अलग अलग सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। Gaurav ji is here to discuss about real estate sector's impact analysis and way forward. So Gaurav ji, once again, welcome to you in this second session of this today series. About Gaurav ji, he is by profession chartered accountant, company secretary, having more than 14 years of post-qualification experience in the field of real estate sector only. He is working, he is having practicing in from the Noida office, and is specialized in the field of major transformation in view of Real Estate Regulation Development Act (RERA), which has been introduced by the central government in 2016. So Gaurav ji, make it interactive. हमारी कोशिश रहेगी कि बजट से पहले, बजट के बाद क्या इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर में आया, क्या आने वाला है, और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सो वी हैव 50 मिनट्स अराउंड ओवरऑल आपकी डेलिब्रेशन। देयर आफ्टर वी विल टेक अप ऑल द क्वेरीज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट कि व्हाट इज द स्कोप इन दिस रियल एस्टेट सेक्टर एज ए इन्वेस्टर, एज ए बायर एंड एज ए प्रोफेशनल।
Over to you, Gaurav ji. आशा जी, Gaurav ji here. गौरव जी हाँ दिख रहे हैं यहीं पे। हाँ सुमित जी। जी Yes, yes. Over to हाँ। you, Gaurav ji. Yes. थैंक यू सुमित जी। आप सभी को नमस्कार। आशा जी, अंकित जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस बजट आज तक। जी, सो बेसिकली फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर। सो 1 second. Gaurav ji, try to cover topic in another half an hour. Thereafter, we will have 10 to 15 minutes for queries. Right. Right. सो फ्रेंड्स, स्लाइड्स आप लोगों के सामने है। इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट सेक्टर एंड वे फॉरवर्ड। सो बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में तो आप लोग परिचित ही है। अपने आप में सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी का या जीडीपी का 7 to 8% अपना रियल एस्टेट सेक्टर देता है। ठीक है, और अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद फ्रेंड्स ये सेक्टर आप ये मान के चलिए करीब करीब 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सेक्टर अपने आप में एम्प्लॉयमेंट देता है, अपने आप में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देता है। सो आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर का, साथ में कुछ पॉइंट्स हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के भी टच करेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी कवर किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है उससे रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। दिस वेबिनार इज डेडिकेटेड टू माय ग्रैंडफादर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अभी आपने जैसे सुना होगा 1 फरवरी को बजट सेशन में कि निर्मला सीतारमन जी ने एक बिग अनाउंसमेंट किया बजट में कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले का इन्वेस्टमेंट होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बजट अनाउंसमेंट है। ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट है, जो कि 33.4% ज्यादा है पिछले बजट अनाउंसमेंट से। और इसी तरीके से आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स, ये बात बहुत डिस्कशन में आती है कहीं ना कहीं कि 10 लाख करोड़ से इतना बड़ा जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आता है, प्लस रियल एस्टेट सेक्टर में ऑटोमेटिकली बूस्ट आएगा। ठीक है, हम लोग इसको ड्यूरिंग दी टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद आप इसमें फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी उन्होंने स्कीम ये भी दी है कि कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्री लोन देगी, इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए। आप ये मान के चलिए कि ये केवल 2% का हर साल का उनको पेमेंट करना है। तो आप ये सोचिए कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, अगर सपोज कीजिए स्टेट गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का लोन लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 50 साल में, तो अगर हम लोग इसमें इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लेते हैं तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करनी है, या ना के बराबर अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को पे करनी है उस लोन पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2.4 लाख करोड़ का रेलवेज का। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, लेकिन इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट ये फॉर श्योर है कि रियल एस्टेट सेक्टर पे आने वाला है। उसके अलावा उन्होंने 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया है, पोर्ट, कोल, सील, स्टील वगैरह को, जिससे कि कहीं ना कहीं पूरे उसमें बूस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर एक अपने आप में ऐसा सेक्टर है कि जिससे कि 200 से 250 अलाइड इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली जुड़ी होती है। ठीक है, सो स्टील, सीमेंट, रोडी, ब्रिक्स, सैंड, ये सारी ये नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि जुड़ी होती हैं। और अगर रियल एस्टेट सेक्टर अच्छे से काम करेगा तो ये कहीं ना कहीं एक धुरी का काम करता है जीडीपी में या इकोनॉमी में लार्ज स्केल पर। तो ये भी आप एक मान सकते हैं कि अगर
10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली वो है कि आपका रोड, ब्रिजेस, डैम, हाईवे, सुपर हाईवेज, एलिवेटेड रोड्स, इस सब के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी 10 लाख करोड़ का। तो कहीं ना कहीं स्टील की, सीमेंट की एक बहुत बड़ी डिमांड जनरेट होगी इससे, ठीक है। सो इसके अलावा एक बहुत बड़ा उन्होंने बूस्ट किया है पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन रूरल बोथ। बेसिकली फ्रेंड्स, यहां मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जो फंड एलोकेशन हुआ है वो 79,000 करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ है, और विच इज 66% हाई फ्रॉम द लास्ट ईयर। 66%, 66% ज्यादा है लास्ट ईयर से, ठीक है। सो बेसिकली आप ये चीज मान सकते हैं कि जो ये अपने आप में इतना बड़ा अलोकेशन है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो मेन एक टारगेट है, जो मेन एक एजेंडा है हाउसिंग फॉर ऑल, उसके लिए है टू कनेक्ट विद द लास्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। तो ये एक अपने आप में जो कंट्री के या जो हमारे सोसाइटी के जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बूस्ट है ये प्रधानमंत्री आवास योजना का। यहां मैं एक बात और स्पष्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, दिस इज लो कॉस्ट हाउसिंग। कुछ लोग इसको अफोर्डेबल हाउसिंग से भी कनेक्ट करते हैं। अफोर्डेबल हाउस, ये अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, दिस इज बेसिकली लो कॉस्ट हाउसिंग, जहां पे घर 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का रहा। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का मैंडेट है इनका। तो एक आप इसको बजट को कह सकते हैं कि एक बड़ा बैलेंस्ड बजट रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो मेन एम है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट्स है, ठीक है। और जैसे अभी हमने देखा 10 लाख करोड़, 79,000 करोड़, 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे। तो ये जितने भी बजट्स होते हैं या जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले होता है, तो इसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है फ्रेंड्स, बेसिकली 4 टाइम और 5 टाइम, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो डेफिनेटली इसका बहुत मल्टीप्लायर इंपैक्ट है। और एज ए प्रोफेशनल हम लोगों के लिए नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। कोशिश यही रहेगी कि आज हम लोग इस पॉइंट को भी टच बेस करें कि एज ए प्रोफेशनल, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है रियल एस्टेट सेक्टर में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं क्विकली कि गवर्नमेंट ने सिटीज का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए यूआईडीएफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है, जिससे कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके, ठीक है। तो उसको भी लेकर काफी कहीं ना कहीं पूरा फोकस्ड है, जिससे कि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, रोजगार मिले, उद्योग धंधे नए बने, ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सिविक फैसिलिटीज हो। तो वो सारा कहीं ना कहीं फोकस्ड है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को लेकर भी, ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है। उसके अलावा अभी आप लोगों ने अपने टैक्स एक्सपर्ट से ही सारी बात समझी है कि अभी या रिसेंटली पढ़ा भी होगा कि 54 और 54F सेक्शन में उन्होंने जो कैपिटल गेन की लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए पर कैपिंग कर दी है, ठीक है। कैपिटल गेन की, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा फ्रेंड्स, ठीक है, प्रॉपर्टी का, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो अब जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते थे उसमें अमाउंट 10 करोड़ से भी ज्यादा का कर दिया करते थे, तो वो अब कहीं ना कहीं 10 करोड़ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस बिल में कैप कर दिया है। तो इसको लेकर जैसे अभी सुमित जी का भी था कि इसका रोड मैप भी हमें रखना है, वे फॉरवर्ड भी रखना है, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो लग्जरी हाउसिंग है, ठीक है, लग्जरी हाउसिंग में अब बिल्डर को कुछ सोचना पड़ेगा कि लग्जरी हाउसिंग जो बिल्डर लॉन्च किया करते थे, या एक बार और उनको सोच के कहीं ना कहीं लग्जरी हाउसिंग
भी करनी पड़ेगी। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेकेंडरी मार्केट पे तो आना ही आना है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम लोग नहीं समझते इसका आने वाला है, क्योंकि लग्जरी हाउसिंग 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ बहुत लिमिटेड है। तो वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में हो गया कुछ इलाकों में, या गुड़गांव के कुछ एरियाज में, या बॉम्बे में, या बेंगलोर में, चूंकि 10 करोड़ की तो अपनी बहुत बड़ी एक लिमिट हो जाती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर को हिट करने वाला एस्पेक्ट है। सो उसके अलावा फ्रेंड्स, ये यूआईडीएफ की हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो, ये इनका मैंडेट है कि कहीं ना कहीं हमें अर्बन सस्टेनेबिलिटी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं लैंड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज होना चाहिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, की जितने भी हाईवेज डेवलप होंगे उसकी दोनों तरफ नई सिटीज बने, सैटेलाइट सिटीज बने, तो एक कहीं ना हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, हम टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए भी, ठीक है। एक उन्होंने अभी एक अच्छा डेवलपमेंट और दिया है कि जो बेसिकली डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, जिनको कि हम लोग विकास प्राधिकरण के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी इनकम इस बजट में एग्जेम्प्ट कर दी गई है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो यस, रीट्स एंड इनविट्स, इसको लेकर कहीं ना कहीं बजट में एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया है कि रीट और इनविट्स, अभी फिलहाल इसमें कोई भी टैक्सेशन नहीं था। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बहुत ही न्यू प्रोडक्ट है कंट्री में, रियल एस्टेट, कॉमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर। अभी फिलहाल जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, माइंड स्पेस, ब्रुकफील्ड और एम्बेसी पार्क, ये 3 हमारे रीट्स है जो कि अभी हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। 3 रीट्स हमारे लिस्टेड है। अपने आप में एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, कॉमर्शियल रियल एस्टेट में, लेकिन अब जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम होगी रीट्स में और इनवीट्स में, तो वो सारी की सारी अब कहीं ना कहीं टैक्सेबल होगी। तो एक ये बहुत बड़ा सेटबैक था, और ये तो आप लोग जैसे डिस्कस करते ही होंगे, या आप रियल एस्टेट से कि अगर आप जो न्यूज है उनको ट्रैक करते हैं, तो आफ्टर कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव, लोगों ने अभी ऑफिसेस में जाना ही शुरू किया है। पीछे जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट था उसमें काफी बिल्डिंग्स खाली भी हो गई थी, वेकेट हो गई थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था लोगों को, आईटी कंपनीज द्वारा वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था। तो अपने आप में रेजिडेंशियल सेक्टर में तो फ्रेंड्स नो डाउट लास्ट ईयर हमारा 2022 बहुत बेहतर गया है, बहुत अच्छा गया है, और बहुत अच्छा प्राइस एस्केलेशन हुआ है, बहुत अच्छी प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन कॉमर्शियल में अभी वो बात नहीं थी, और ऐसा लगता था कि रीट एक अपने आप में संजीवनी बूटी का काम करेगा, संजीवनी का काम करेगा कॉमर्शियल रियल एस्टेट में, लेकिन अब वो बात भी जाती रही। तो फ्रेंड्स, एक अपने आप में ये भी एक बड़ा सेटबैक रहा रियल एस्टेट सेक्टर कॉमर्शियल को लेकर। नो डाउट ये बजट ग्रीन की तरफ ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, होना भी चाहिए, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल को लेकर, फॉसिल फ्यूल में आपका डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे जितने भी फॉसिल फ्यूल है, इनको लेकर काफी दिक्कतें हैं। हमें फॉरेन इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे हमारी जो अमाउंट है वो बाहर भी जाती है। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस है ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन को लेकर अभी आपने देखा ही होगा, बात चल रही है काफी, ग्रीन फार्मिंग को लेकर, ग्रीन इक्विपमेंट को लेकर, तो इसकी भी पॉलिसीज बनने की चीजें हैं। तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉन्च करेगी। ग्रीन बिल्डिंग्स को लेकर अभी रिसेंटली भी काफी पॉलिसीज है, आईजीबीसी के ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मिलती हैं, जो लोग इस बात से अगर परिचित होंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करें, तो अभी जो जितना भी हमारा रोडवेज, रेलवेज, अपना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर वगैरह में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट, बीट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर भी बजट में एक रोड मैप दिया गया है कि फाइनेंस सेक्रेटरीट की तरफ से कि जी अब इसको भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में लेकर आए, तो इस तरह की भी चीजें कहीं ना कहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी थी रियल एस्टेट सेक्टर की कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है, लेकिन एक जैसे कि अभी
काफी टेलीविजन पर भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जहां पर भी जाने का मौका मिलता है। तो एंकर्स के साथ यही डिस्कशन चल रहा था बिफोर बजट कि जी एक बहुत बड़ी विश लिस्ट है कि आप जो आपका जो इंटरेस्ट की छूट मिलती है सेक्शन 24 में वो 2 लाख से 5 लाख कर दी जाए, ठीक है। आप 80C में जो छूट मिलती है आप वो बढ़ाइए, क्योंकि अगर मैं कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाई करता हूं तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करने में मुझे इंटरेस्ट की छूट मिलती है, ठीक है। मैं अपने बिजनेस में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो इंटरेस्ट की छूट ले पाता हूं। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि वो केवल 2 लाख रुपए थी। तो रियल एस्टेट सेक्टर का भी यही मैंडेट था कि हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन नो डाउट हम लोग अगर हम बात करें तो हम बायर्स के लिए मांग रहे हैं, ठीक है। जो घर के खरीदार हैं उन सब के लिए हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन अभी वो सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई है। तो और बहुत ही अभी अगर प्रोमिनेंटली बात करें तो सेक्शन 54F का हो गया, रीट का हो गया, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें इन्होंने की है, लेकिन अभी एक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे देखें जिससे कि रियल एस्टेट बहुत बड़े अच्छे से डेवलप होता है, तो वो एक अपने आप में इनका अच्छा इन्होंने किया है। अब हम लोग बात करें हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की, तो फ्रेंड्स हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना 79,000 करोड़ डिस्कस कर चुके हैं। अगर अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली कोई फ्लैट परचेज किया है, कोई घर परचेज किया है, तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जो कि मिलती है, उस स्कीम को एक अच्छी बड़ी गुड न्यूज है, उन्होंने 2027 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो एक हम लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। और अभी आज ही एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारी जो रेपो रेट है वो शक्तिकांत दासा जी RBI गवर्नर, तो उन्होंने 6.25 से 6.50 हो गई है। तो इस तरीके से 4 से ये 6.50 हो गई है, 2.50 यानी कि 2.5%, 2.50% ये बढ़ चुकी है अभी तक। ये सिक्स्थ कंसेक्यूटिव रो में 6th हाई के अपने आप में। तो कहीं ना कहीं आपकी EMIs भी बढ़ेंगी इससे। ये अभी बिल्कुल आज ही मॉर्निंग की न्यूज है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को लेकर। तो एक ये अपने आप में नई न्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इंप्रूव्ड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, ये भी नए एडिशनल 50 एयरपोर्ट बनेंगे। मिशन स्मार्ट सिटीज, ये तो हमेशा से इनका मैंडेट रहा है कि स्मार्ट सिटीज 100 स्मार्ट सिटीज इन्होंने पूरी कंट्री में आइडेंटिफाई की है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सो बेसिकली एक अपने आप में एक ही चीज रही। तो फ्रेंड्स ये जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम लोग ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करें तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये बजट एक, इसको अगर मैं नाम दूं तो ब्रिलियंटली बैलेंस्ड बजट, BBB। तो एक अपने आप में वो इस तरीके से है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी एज ए इंडिविजुअल वो पूरी नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी बातें चीजें हैं। उसके अलावा नो डाउट आपके टैक्स एक्सपर्ट्स ने इंडिविजुअल के टैक्सेशन वगैरह के बारे में तो बताया ही है। उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो रोड मैप है कि वो कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का रोड मैप है। चूंकि अब जो पहले होता था कि आप सेविंग्स किया करते थे या इन्वेस्टमेंट करते थे, तो अब वो कहीं ना कहीं अब नहीं हो पाएगा। तो अब वो देखने की चीज है कि उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम होगी इंडिविजुअल के हाथ में, तो वो भी उससे आप घर खरीद पाएंगे या इस तरह की भी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये एक अपने आप में बात है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो ये अगर हम लोग बात करें कि रियल एस्टेट सेक्टर की ऐसे उसमें, तो अगर मैं इस बजट को नंबर देना चाहूं तो बजट के नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10 में से 9 नंबर अगर मुझे देने के लिए कहा जाए तो 10 में से 9 नंबर जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है उसमें 10 में से 9 नंबर। लेकिन नो डाउट इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर उतनी चीजें नहीं रही, तो वहां पे हम लोग इनको 10 में से 6 या 6.5 नंबर ही दे पाएंगे, क्योंकि वो जो एक एक एक्सपेक्टेशंस थी नॉट फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को लेकर एक एक्सपेक्टेशंस थी कि साहब इंडिविजुअल को कहीं ना कुछ मिलेगा, तो वो सभी चीजें भी थी। तो इस तरीके से एक ये ब्रॉड पिक्चर आप लोगों के सामने है बजट को लेकर। सो अगर अब हाउस की कोई भी क्वेरीज है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो बेसिकली ओवर टू यू सुमित जी, क्योंकि चेंजेस रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये आप लोगों के सामने एक
कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर थी। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है तो आप इस अग्री विथ यू गौरव जी कि रियल एस्टेट को लेकर एज सच चेंजेस नहीं है, बट जैसा जितना पूरा डिटेल अभी आपने बताया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद इसमें चीजें हो सकती है। जैसे हमारे एक क्वेरी भी आई है सौरभ गोयल जी की, व्हाट आर द प्रैक्टिस एरियाज इन रियल एस्टेट फॉर सीए प्रोफेशनल्स, कि ना इन्होंने फंड तो अलॉट कर दिया है, बट सीए उसमें अपना कैसे काम निकाल सकते हैं, क्या काम निकाल सकते हैं उसके अंदर? इस बात को लेकर तो सुमित गर्ग जी से भी काफी बातें होती है फोन पे, नहीं ऑन एंड गौरव ऑफ जी, डिस्कशंस आपसे होते हैं। काफी बातें हुई हैं, बट आई वांट टू नो कि मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस सभी को बताएं, डिटेल में और इसे बताएं। पब्लिकली ये भी क्वेश्चन बताएं बहुत आप। इंपॉर्टेंट है। राधा, ये डेफिनेटली। क्वेश्चन ही नहीं, एक टॉपिक है जिसपे हम आपके व्यूज जानना चाहते हैं कि किस तरह से एक प्रैक्टिसिंग सीए इस एरिया में एंटर कर सकता है, लाइक यू जी जी एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ किस एरिया में निकाल सकता है सर, जी। बताइए सर प्लीज। बेसिकली सुमित जी और आशा जी, मेरा यही कहना है, जैसे कि अभी चूंकि बजट का था तो मैंने कहा कि फिर एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके सामने रख ही देता हूं। तो एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट है रेरा को लेकर, ठीक है। आप रियल एस्टेट सेक्टर की परफॉर्मेंस इससे देख सकते हैं कि 1 लाख प्रोजेक्ट्स हैव बीन रजिस्टर्ड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर, एक बहुत बड़ा हब है अपने आप में, कि आप ये मानिए कि 1 लाख प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आप सबसे बड़ा एरिया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज का आपका रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा से आता है, जहां पे मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, अगर आप 5 7 8 क्लाइंट भी, 5 7 प्रोजेक्ट भी आप अपने क्लाइंट बना लेते हैं आशा जी, तो इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर में जो टिकट साइज है वो सबसे ज्यादा है। आप ये मान के चलिए कोई भी जो प्रॉपर्टी है आज 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ से कम की नहीं है, ठीक है। और पिछले 2 साल में आफ्टर कोविड की सेकेंड वेव, जो प्रॉपर्टी 4,000 रुपए स्क्वायर फीट, 3,500 रुपए स्क्वायर फीट की बिकती थी, आज वो 5,500 और 6,000 रुपए स्क्वायर फीट की बिक रही है। तो आपको जो बिल्डर है, वो डेवलपर है, वो आपको फीस देने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। सबसे एक बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपकी रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा से आती है। उसके अलावा डेवलपमेंट अथॉरिटीज से आती है, जो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं अपने आप में, ठीक है। कि वहां पर भी आप उनके डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में फंडिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। जैसे आप बिल्डर्स के लिए फंड अरेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक कंसोर्शियम बना सकते हैं फंड अरेंज करने का। आप अदर प्रोफेशनल्स के साथ भी, बैंकर्स के साथ, एनबीएफसी के साथ, एक उसमें बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत ही बड़ी रेमुनरेटिव अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। मतलब आप ये मान के चलिए, कई बार तो लोग जो बताते भी है कि 1% और 2% तक का भी लोन अमाउंट पे इनको परसेंटेज प्रोफेशनल्स को मिलता है। तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एज ए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी में एज ए आईआरपी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। और ऑब्वियसली नो डाउट, जब एक पूरा सेक्टर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटीज, जीएसटी या अपना डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो वो एक अपने आप में भी एक बड़ा बिग एरिया है, जो कि अनटेप्ड एरिया है। मैं देखता हूं हमारे सीए प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स लोग करते हैं काफी, लेकिन सीए प्रोफेशनल्स उस एरिया को टच ही नहीं करते, पता नहीं डरते हैं या क्या है बात, कि जी रियल एस्टेट सेक्टर में तो स्कैम ज्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को आपसे निकालना होगा दिमाग से। हम लोग 100% रियल एस्टेट सेक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, रेरा और डेवलपमेंट अथॉरिटीज की। आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर की प्रैक्टिस कीजिए, और आप ये मान के चलिएगा कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि रियल एस्टेट ही आपको इतनी अच्छी रेमुनरेशन या आपको इतनी अच्छी फीस देगा। तो एक ये अपने आप में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रियल एस्टेट सेक्टर से आती है। जी गौरव जी, इससे से कनेक्टिंग है कि ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कोई रेरा में प्रैक्टिस करना चाहता है, जी तो जी वो अपनी स्टार्ट कहाँ से करे? सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए उसके बारे में नॉलेज लेना जरूरी है। जी तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि फ्रॉम वेयर दे कैन एक्वायर दिस नॉलेज, कि व्हाट एंड हाउ एंड he can do practice in this RERA, where he can study the concepts
एंड द रिक्वायरमेंट्स लाइक जीएसटी और इनकम टैक्स के तो बहुत प्लेटफॉर्म्स पे सेमिनार्स वेबिनार्स होती रहती हैं। तो आशा जी, जैसा आपने खुद ही बताया कि जीएसटी या इनकम टैक्स पे तो बहुत सेमिनार होते हैं, तो इसका मतलब वहां पे अब प्रोफेशनल्स भी बहुत ज्यादा है, ये है। तो वहां पे कंपटीशन भी है, लेकिन ये तो एक ऐसा मार्केट है कि जहां पे कंपटीशन बहुत लेस है। अगर आप अपनी अच्छी सर्विसेज देंगे तो स्काई इज द लिमिट। सो प्लस अगर नॉलेज मैनेजमेंट को लेकर बात है, तो कहीं ना कहीं वो देखिए, एक बार शुरू में स्टडी करनी पड़ेगी। और बहुत छोटा सा कानून है, मतलब आप ये मानिए कि 90-95 सेक्शंस है रेरा के, ठीक है, लेकिन एक काफी वास्ट अप्रोच है। आपको रेरा को स्टडी करना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी करना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस क्या क्या आते हैं वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये सब एक अप्रोच है अपने आप में। और आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, आप एनसीआर में ही काम कीजिए। तो एनसीआर में हरियाणा, दिल्ली और यूपी, ये 3 स्टेट हैं जो कि बड़ी प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आप यहीं पे चीजों को कवर कर सकते हैं। या चूंकि आज ये नेशनल इंटीग्रेशन है, आज हमारी वेबिनार बजट आज तक, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आप अपनी स्टेट को कवर करिए, चाहे कर्नाटका है, चाहे महाराष्ट्र में है, आप चाहे एमपी में है। तो जितनी भी स्टेट्स के मैं नाम ले रहा हूं, वहां पे 6,000, 5,000, 10,000, महाराष्ट्र में 25,000 प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक कहीं ना कहीं आपको शुरू में स्टडी करनी पड़ेगी, और कोई सेमिनार्स वगैरह होते हैं तो वो भी अटेंड करने पड़ेंगे। तो वो सभी अपने आप में चीजें हैं। तो एक बहुत बड़ा गेटवे ओपन होता है इन सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये सभी चीजें हैं। तो ओवर टू यू। यस, एक क्वेरी आई हुई है सर, हु कैन बाय फ्लैट्स अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना में बेसिकली फ्रेंड्स, इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लोअर इनकम ग्रुप में आने चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ आपकी लिमिट होती है, 3-3.5 लाख रुपए, कुछ 2.5-3 लाख रुपए की लिमिट है। तो आप अगर उस लिमिट को मतलब ये पर एनम की लिमिट है बेसिकली, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये डिप्राइव्ड उसके लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मिडिल क्लास के लिए लो इनकम ग्रुप एंड ईडब्ल्यूएस इज सेम EWS कैटेगरी और डिफरेंट? कह सकते हैं आप, आशा जी, कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप, आप ये कह सकते हैं। तो बेसिकली फिर एमआईजी और फिर एचआईजी, मीडियम इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप। तो इस तरीके से 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो बजाय प्रधानमंत्री आवास योजना में, बजाय डायरेक्ट घर खरीदने के, वो मतलब वो एलिजिबिलिटी के भी ऊपर डिपेंड करेगा। आप अफोर्डेबल हाउसिंग ले सकते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स और डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम चलाते हैं, जहां पे घर 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख में भी मिलता है, ठीक है। तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं अगर किसी को परचेज करना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट भी रहता है। अफोर्डेबल हाउसिंग का कैन यू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, लाइक अगर बिल्डर की साइड से हम बात करते हैं, नॉट फ्रॉम द हाउस बायर साइड, कि इज इट फ्रॉम द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये बिल्ड हो रहे हैं, या प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही कर रहे हैं, और डू दे नीड एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर दिस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, या रेरा ही है? मतलब थोड़ा सा अगर इसका इफ इट इज बेसिकली आशा जी, इसमें ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में, कि आप जैसे अगर हम लोग हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में 25 लाख रुपए से लेके 28 लाख रुपए तक गुड़गांव में छोटा फ्लैट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी ये गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। जैसे हरियाणा में एक स्कीम है, दीनदयाल जन आवास योजना, DDJAY। तो वहां पे कम कीमत में घर मिलता है। वहां पे गवर्नमेंट ने लैंड सब्सिडाइज, मतलब सस्ती रेट में अलॉट होती है, या फिर उन्होंने कैपिंग कर रखी है कि जी आप इतना प्रॉफिट ही रखेंगे, उससे ज्यादा आप अपने प्लॉट की और फ्लैट की कीमत नहीं रख सकते, अपने फ्लैट की कीमत नहीं रख सकते। आप फरीदाबाद में ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ यूपी में और दिल्ली में हम लोग अगर बात करें, तो EWS LIG, लोअर इनकम ग्रुप के भी निकलते हैं घर। वहां पर 10% मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो 10% EWS और 10% LIG रखना होता है। तो वो भी घर कुछ 25-30 लाख, 35 लाख तक के होते हैं, लेकिन उसमें नो डाउट स्क्वायर फीट कम होता है, 500-600 स्क्वायर फीट तक के वो घर होते हैं। तो दैट इज द अफोर्डेबल हाउसिंग।
तो वहां भी अगर कोई पर्सन है तो वो घर खरीद सकता है वहां पर। वहां पे भी बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब आपको एप्लीकेशन लगानी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी होता है। और This is कुछ from बिल्डर the house buyer point of view, na? हाउस बायर पॉइंट ऑफ व्यू। See, I'm asking from the builder's point of view. Like, if one of my client is a builder and he want to engage in this project of affordable housing, house building, so can he do on himself, or he need any approval from the government, or is it under a public-private partnership? Like, from that sense, I'm asking. जी, सो बेसिकली बिल्डर क्या, मैंने अभी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, Yes. मुझे लगा कि शायद घर खरीदने के शायद किसी की हाउस से क्वेरी थी। सो बेसिकली बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें मैम, तो बिल्डर में अपना जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दीनदयाल जन आवास योजना, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स इनकी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर स्टेट गवर्नमेंट की अलग से अपनी हाउसिंग पॉलिसी है, ठीक है। तो आप उस हाउसिंग पॉलिसी में अप्लाई करेंगे, वहां पे आपको लैंड का अलॉटमेंट होगा, आपके मैप्स अप्रूव्ड होंगे, मैप अप्रूव्ड होने के बाद आप उसका रेरा रजिस्ट्रेशन लेके और आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा। और बिल्डर के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में 10% ईडब्ल्यूएस 10% एलआईजी देना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो वहां पर भी आप इस तरीके से बिल्डर को आप वो उस अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी 20% बिल्डर को देना पड़ता है। तो ये भी एक मेथोडोलॉजी है। एक तो हो गया कि आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का ही पूरा प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा हो गया कि आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें 10% अफोर्डेबल हाउसिंग आपको रखना होता है। एक दूसरा मेथोडोलॉजी ये हो गया। Okay. इस तरीके से सिस्टम। Okay. Got it. This can also be an area for the CAs कि उनके क्लाइंट को आप न्यू वेंचर्स बता सकते हैं। राइट, डेफिनेटली यू कैन गौरव जी, स्टार्ट। एक सवाल और है। जी प्लीज। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेरा कि हम रेरा की में रजिस्ट्रेशन किस तरह चेक करना है, क्या सर्टिफिकेशन, क्या ऑडिट का भी कोई प्रोसीजर है, तो हाउ वी कैन डू द वर्क इन दिस रेरा? सो बेसिकली सुमित जी, अगर हम लोग रेरा की बात करें, रेरा के ब्रॉड स्कोप में सबसे पहले रेरा में बिल्डर का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग हो गई, डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग वेटिंग, ठीक है। आर्किटेक्ट इंजीनियर सीए के सर्टिफिकेट हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप अपना सीए सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक। और हर क्वार्टरली हमें चाहिए होता है सीए सर्टिफिकेट, और बिल्डर उसके लिए बड़ी अच्छी फीस भी देते हैं क्योंकि उनका फंड रुकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनसे अच्छी हैंडसम फीस ले सकते हैं। आप अपना एक कंसोर्शियम बना लीजिए आर्किटेक्ट इंजीनियर का, उसके बेसिस पे आप उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस, नो डाउट। वो ड्यू डिलीजेंस आप देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा रेरा की कंप्लायंसेस हो गई, ठीक है। पोर्टल पे रेरा की अब सब कुछ ऑनलाइन कंप्लायंसेस होती है। और आपका जो उस प्रमोटर कंपनी का बिल्डर का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो रेरा में सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी देता है, ठीक है। वो आपकी कारों की और नॉर्मल इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट से अलग रिपोर्ट होगी, ठीक है। REG 5 फॉर्मेट में वो रिपोर्ट होती है। तो वहां भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उसको लेकर। और जब प्रोजेक्ट हैंडओवर होता है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, वो हैंडओवर के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो वो सभी चीजें हैं रेरा की कंप्लायंसेस को लेकर, ठीक है। तो और ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, आप रेरा साइट से, मतलब अगर हमें स्टडी करनी है तो किसी भी रेरा पोर्टल से आप इसको देख सकते हैं। अब तो थ्रू आउट कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अब तो इवन वेस्ट बंगाल तक भी अब तो रेरा की वेबसाइट आ गई है, जो कि सबसे लेटेस्ट वेबसाइट है। तो थ्रू आउट द कंट्री तो वेबसाइट्स है। हम एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में करीब 5-5.5 हजार प्रोजेक्ट है। तो एक बहुत ह्यूज नंबर है एनसीआर में अपने। गौरव जी, इसमें आपकी स्लाइड में एक लास्ट पॉइंट है व्हिच यू हैव आल्सो टच्ड अपॉन। नहीं, वही लास्ट स्लाइड जो व्यू पे थी, like 1,06,000 complaints regarding. जी प्लीज। 1,06,430 complaints have been disposed of by the RERA authority across the country. तो ये जो कंप्लेन जाती हैं, ये कंप्लेन आई सपोज कि होम बायर्स की साइड से जाती होंगी अगेंस्ट द बिल्डर। जी।
तो बिल्डर को वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए आर सीएस अलाउड टू रिप्रेजेंट builders there, or only advocates can represent, or is there any other eligibility criteria? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा आशा जी, बहुत अच्छा रहा ये। मैं एकदम इन सारी बातों में बजट की खुमारी है। सुमित जी ने आज जॉब दी है कि जी आज आपको बजट पे बोलना है। बिल्कुल नहीं, मैंने गौरव जी मैंने क्लियर स्टार्टिंग में बोला था कि नॉट ओनली बजट, रियल एस्टेट से रिलेटेड, क्योंकि जनरली सेशंस प्लान नहीं होते हैं और आज ऐसा मौका है कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर। जी जी जी। तो हमारा है कि And पार्टिसिपेंट्स more than 50 participants are there on the YouTube हाँ, channel also. मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, तो हमारे पास अभी 10 मिनट हैं गौरव जी के लेने के लिए। तो कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क और बाय इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट करके कोई भी पूछ सकता है। ओवर टू यू। अच्छा, होता ही है सुमित जी कि बेसिकली हम चार्टेड अकाउंटेंट टैक्सेशन चलता रहता है, तो ये राइट, एक स्ट्रेस रिलीवर एक सेशन है जो अपने आप में अच्छी फीस की बातें हो रही है, अच्छी बातें Right. हो रही है। New new opportunities opportunity we can explore कर solve. रहे हैं इसमें हम। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है मैम, अपॉर्चुनिटीज के अलावा भी हम कहीं ना कहीं घर तो खरीदेंगे या अपनी शॉप खरीदेंगे, ऑफिस खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, तो हमें अपने राइट्स भी पता होने चाहिए रियल एस्टेट में। Absolutely. सो अभी आपने कहा कि थ्रू आउट द कंट्री करीब करीब आप ये मानिए 1,20,000 और 25,000 कंप्लेंट्स है, जिसमें से कुछ 1,06,000 और 8,000 कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड ऑफ हो चुकी है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट, मतलब अलॉटी बायर इन दी रेरा अथॉरिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए और एडवोकेट्स चारों प्रोफेशनल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली इन दी रेरा अथॉरिटी बट ऑल्सो इन दी रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है रेरा का। जो रेरा के अगेंस्ट में जो भी ऑर्डर के कोई आपको अपील फाइल करनी है, तो उसमें भी सीए रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर एक है, जो कि जिसमें बहुत मशक्कत भी नहीं लगती। आपको बायर्स का जवाब वगैरह बना के फाइल करना है, फिर उनके जो भी रिप्लाईज फाइल करने हैं और अथॉरिटी में रिप्रेजेंट करना है। और एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 100% ई कोर्ट है। ठीक है, आपको ऑन द क्लिक ऑफ बटन आप अपनी उसका रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि रेरा अथॉरिटी में चक्कर लगाने हैं, धक्के खाने हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी एक ये भी अपॉर्चुनिटीज है। Right. Another question we have from our participants. Please suggest any referencer or author on RERA. किसकी किताब पढ़ सकते हैं? जी देखिए, मैं तो ये प्रिफर करूंगा कि आप कोई भी रेरा का वेयर एक्ट लीजिए, आप वेयर एक्ट से स्टडी करिए, क्योंकि बहुत ही नया लॉ है, अभी इवॉल्विंग लॉ है। तो आप वेयर एक्ट से स्टडी करिए, आपको बहुत कुछ मसाला मिलेगा वहां पे, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। ऐसी कोई बहुत अच्छी अभी ऑथेंटिक बुक नहीं है मार्केट में, है कुछ, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू आप टैक्समैन का वेयर एक्ट ले लें। ठीक है, और बेहतर ये है, चूंकि इवॉल्विंग लॉ है, 4-5 साल हुए हैं, न्यू लॉ है, तो आप रियल एस्टेट अथॉरिटीज के पोर्टल खोलिए। जैसे यूपी रेरा हो गया, हरियाणा रेरा हो गया, दिल्ली रेरा हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, बेंगलोर हो गया। तो उनकी पोर्टल से स्टडी करिए, तो वहां आपको बहुत कुछ मसाला या बहुत कुछ इनपुट्स या मटेरियल आपको मिलेगा, तो वो एक आप कर सकते हैं। One last question from my side. जी अभी जो although you have touched, नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स का है, वो ले लेते हैं हम। If any old project of 2015 and not registered under RERA, can complaint be filed with the RERA? Yes, the complaint can be filed with the RERA, or as a allotee you can file your complaint, and even though project is not registered in RERA. Even though the project is not registered with the RERA authority, even you can file the complaint, and in the same submission you can write that this is the not registered project and the penalty is very much high, 10% of the project costs and 3 years of imprisonment. ये क्रिमिनल ऑफेंस है अपने आप में, तो 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ह्यूज पेनल्टीज है अंडर रेरा में। और बिलीव मी, ये पेनल्टीज एक्चुअल में लग रही हैं, आप सुनते ही रहते होंगे ये सारी चीजें रियल एस्टेट को लेकर कि रियल एस्टेट में क्या क्या हो रहा है। अखबार में भी आता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है, टीवी पर भी आता ही है। ये है, तो बहुत ह्यूज पेनल्टीज है अपने आप में। जैसे सेबी के कानून में पेनल्टी है, उसी तरीके से रेरा में भी बहुत ह्यूज पेनल्टीज है।
Yes. Anything else? Question? Just, one last, your opinion, basically, not a query, but your opinion. Like अभी what we have seen in this budget, कि ज़्यादा investment को लेकर के जोर नहीं है government का. Like they are not very much interested कि whether as a taxpayer should invest or not. Like they are reducing all the exemptions and deductions by way of new scheme and all. What's your take on this? Like earlier, taxpayers used to get deduction of interest payment, principal repayment, and all. So what do you think? Will it adversely impact the real estate sector or not? बेसिकली आशा जी और सुमित जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि यस डेफिनेटली इट विल रिवर एडवर्स टू द रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, चाहे वो LIC में करें, चाहे हम लोग बैंक्स में जो हमारी सेविंग्स रहती थी, वही पैसा घूम के एक, जैसे अगर आपको कोई 50 लाख का फ्लैट लेना है तो 10 लाख आप अपने लगाते थे, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट होता था, और जो 40 लाख आपको मिल रहा है वो जो आप बैंक में जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट, वो घूमकर बैंक उसी को, बेसिकली बैंक में कॉन्सेप्ट होता है कासा, करंट एंड सेविंग अकाउंट, उसी को हम लोगों को लोन पे देता था. ठीक है, कासा आपने कहा, करंट सुमित जी का नाम. सो बेसिकली सो वो पैसा ही घूमकर कहीं ना कहीं वापस आता है. तो ये एक बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर. अभी बीच में इस बात को लेके बात भी चल रही थी, टैक्स एक्सपर्ट्स और ज्यादा बता सकते हैं इस बात को लेके, कि यूरोपियन स्टाइल में जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है उस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. यूरोप हो गया, चाहे USA हो गया, तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को लेकर. तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में दिक्कतें हैं इस चीज को लेके, लेकिन गवर्नमेंट का मानना दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट, जब आपके हाथ में पैसा होगा तो आप फ्रीली इन्वेस्ट कर पाएंगे. हम आपको चॉइस नहीं दे रहे कि आप LIC में डालिए, आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए. एक तरीके से फ्री छोड़ दिया फंड्स उनके हाथ में. तो एक ये है, और बाकी देखिए आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या किस तरफ ये देश जाता है. ये है. सर एक क्वेरी आई है मनोज अग्रवाल जी की, कैन वी रेज कंप्लेन फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट आल्सो? Yes, we can raise the complaint for the commercial project also, but if we are taking the assured return, अगर हम लोग assured return या assured rental return किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अलॉटी नहीं माना जाता, बायर नहीं माना जाता. ठीक है, सो हो सकता है रेरा अथॉरिटी आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन ना करे. ऐसा कई बार जजमेंट में भी हुआ है, रेरा अथॉरिटीज ने इस तरह के जजमेंट ऑर्डर दिए हैं. तो एक चीज आप ये ध्यान में रखिएगा, बट अल्टीमेटली कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. मैं सुमित जी से और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रेरा पर कभी भी, रेरा और डेवलपमेंट अथॉरिटीज पे सेशन सेपरेटली जब आप लोग कंफर्टेबल हो तो ऐसी फील आ रही है कि इस पे सेपरेट सेशन होना चाहिए. बिल्कुल करेंगे गौरव जी. कमर्शियल प्रोजेक्ट में मोस्टली जो हम एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं उसमें वो उनकी टैगलाइन ही यही होती है, गेट एश्योर्ड रिटर्न ऑफ 12% लीज रेंट एंड ऑल. तो मतलब अगेंस्ट ही है वो एक तरह से, फिर अलॉटी नहीं मानेंगे. आई वुड सजेस्ट कि पर्सनली भी वो नहीं ऑप्ट करना चाहिए. ये एक अपने आप में वो दिक्कत है, क्योंकि कानून के हिसाब से एज पर वेल सेटल्ड लॉ ऑफ लैंड हम कोई भी बिल्डर एश्योर्ड रिटर्न नहीं दे सकता. ठीक है, तो इसको तो खैर फिर तभी टच बेस करेंगे जब डिटेल में तभी. सुमित जी आपके कोई और क्वेश्चंस, कोई क्वेरी? I think all query resolved. Few queries relating to income tax is pending. That we will take in another session of another session only. So Gaurav ji, I would like to thank for your wonderful session. Manoj ji, we should request आ गई है मनोज जी की भी. Definitely we will plan a full session. And now we are completing second session, that is relating to impact of on real estate sector and way forward by Gaurav Agarwal ji. Very well covered professional opportunities and other aspect, how we can invest, how we can professional again in this area. So special thanks to you Gaurav ji. And this just a minute, I would like to आशा एक just a minute.
स्क्रीन आ रही है सर? जस्ट आप शायद ओपन कर रहे हो, अभी फोल्डर दिख रहा है. यस. Yes. So this certificate of appreciation to you, Gaurav ji, from our Thank you, side, sir. and we'll send it स्क्रीन along with ओपन हो the रही है memento to आई थिंक. your office. अभी ओपन हो रही है? हाँ, अभी हुई नहीं है, बट क्लिक करो. अभी हो गई ओपन? नहीं. Just a minute. And special thank नहीं हुई. to Gaurav ji for always sparing our valuable time. जब भी बात करी गौरव जी ने कभी ये नहीं कहा कि इस टाइम अवेलेबल नहीं है, ये टाइम नहीं है. So मेरे लिए प्रिविलेज है आप लोग याद करते. प्रोफेशंस के लिए हमेशा गौरव जी तैयार रहे हैं. तो करबद्ध गौरव जी, this certificate to you and from our side, and we'll send it along with the memento to your office. So thank you so much. Thank you very much for your wonderful deliberation. थैंक यू गौरव जी. थैंक यू आशा जी. थैंक यू. थैंक यू. And for the another अंशु जी, जो प्रेजेंटेशन आएगी हमारे पास, दैट विल बी शेयर टू द हाँ, पार्टिसिपेंट्स, एंड उसमें कांटेक्ट हाँ, नंबर भी है उनका. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाँ शेयर कर दूंगा, एंड along with the contact details, so that you can ask. It was there in his presentation. So you will So get it the is time to start our third session. We have with us our speaker of the third session, CA Vivek. विवेक नेवातिया जी. हाँ, विवेक निवाते जी. विवेक जी, are you there? हाँ जी, मैं हूँ. हाँ जी, Yes, सुमित sir. जी, Yes, मैं sir. हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Sir, good afternoon. Good Good afternoon, afternoon. Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. So welcome to you in this third session, and moderator of this third session, Ankit Mittal ji. Ankit ji. Ankit ji, over to you for the start of the session. And Sachin Sinha ji is here. I I think he is invited him also. joining right now. अच्छा, अभी join नहीं किया. Okay. Okay. Yes, he is joining. So Ankit ji, please start the third session. Yes, thank you, Sumit. Very good afternoon to all of you. And as Sumit has mentioned that we are going to start our third session, and the subject matter is amendment in income head and deductions. So two words for the Vivek Newatia sir. Vivek Newatia sir has a experience of almost 20 years and is presently our partner as Jay Kishan. He has also completed his diploma in economics and BSc in management from the London School of Economics and Bachelor of Commerce honors from St. Xavier College, Kolkatta. He is a qualified CISA and TISA member. He has also completed successfully many certificate course of ICI. And these are valuation, internal taxation, IFRS, and forensic accounting and fraud. He is currently serving as a special invitee in expert advisory committee of ICI. He has served as a special invitee member of the accounting standard board as well. So without wasting much time, I request sir, please enlighten us with your vast experience. Over to you, sir. Thank you, Ankit ji. Thank you, Sumit ji, Sachin ji, Asha ji, the organizing committee of CASA. A wonderful initiative by the association to organize these programs for the benefit of the chartered accountants and the professionals. I think it's a wonderful initiative wherein you take each topic and discuss in detail. And I would be very much, I'm actually obliged to Sachin to invite me to this forum and introduce me to this forum. I was earlier not aware about this. I think it's a wonderful initiative. जो आप कर रहे हो, अच्छा लग रहा है. We are privileged to hear you, sir, from all the way to Kolkata. It's my pleasure as well, Asha ji. It's my pleasure as well. Yes. I hope first we will try to cover the topic, and thereafter in last 10 minutes we will try to take up the questions from the participant. Sure. So I'll try to wrap up by 3:50. In case there are any questions in between, I'm happy to take those questions as well. Okay, sure. So in case if आपके पास कोई questions बीच में भी हो, Ankit ji, you can just intervene and ask those questions. I'm happy to take those questions as the session is progressing. Right, sir. So coming to the Finance Bill 2023 analysis, so what I am supposed to cover is mostly the direct tax, domestic tax provisions which are there, the 5 heads of income. I'm not going to cover the provisions relating to international tax.
or provisions which are relating to assessment, reassessment, which I think would be covered by Kapil ji in the last session. So I'm specifically limiting myself to the computational related provisions in the Income Tax Act, the amendments which have been proposed by the Finance Bill 2023. Coming to Finance Bill 2023, I think this is the full budget of this session of the Modi government, wherein the next year would be an interim budget because of the elections coming in. This 2023 was therefore a message to be passed on by the NDA government to bring about stability and bring about some incentives for the middle class the taxation regime. With that in mind, I think the tweaking in the personal taxation was brought out to show that we actually care about the middle class, and therefore there should be reduction in the tax rates which are applicable to the individuals opting for the new tax regime. Also, it was a wonderful initiative by the Honorable Finance Minister to speak on the floor of the Parliament to say that surcharge for the high rich individuals would be reduced from 37% to 25%, saying that we would not like to burden the rich more. Saying that was a big courage when it comes to bringing out that proposal. And I think it's a very welcome step for the surcharge to be reduced for the high tax individuals. So this personal taxation regime, the new tax regime which has been provided in section 115 BAC will be treated as the default tax regime from the assessment year 24-25. So with effect from 1st April 2023, this new tax regime would be the default tax regime for the purposes of individuals taxation. Taxpayers would still have the option to opt for the old tax regime. However, the taxpayers who have business income can opt for this new tax regime, are eligible to opt back to the old regime only once, except in a case where they cease to have business income. So in case if I have a business income, so the default tax regime would be the new tax regime. I can opt back to the new tax regime only once, and therefore, so till the time I have business income, I can go back to the new tax regime only once. Otherwise, this would be an irrevocable option that will be exercised for the individuals concerned. Other taxpayers who just have salary income can exercise the option on a year-on-year basis. The default option would be the new tax regime. I have an option to go back to the old tax regime on a year-on-year basis if I do not have any business income. Rebate under section 87A for individuals opting for the new tax regime has increased for income threshold from INR 5 lakhs to 7 lakhs. So if I have an income of 6-7 lakhs under the new tax regime, that is without availing of any of the exemptions which are available under section house rent allowance, etc., I would not be required to pay tax under the new tax regime. Also, a wonderful amendment proposed which has been put up is with respect to leave encashment. The limit of exemption has been increased from 3 lakhs to 25 lakhs under the new tax regime. So what we look at, considering the proposals which have been announced by the Honorable Finance Minister, is that there is an approach, there is a tendency to ask the assessees to shift to the new tax regime. What was looked at based on the introduction of the new tax regime a couple of years back, that most of the assessees, individuals, were not opting for the new tax regime. नया टैक्स रिजाइम में नहीं जाने के कारण क्या हो रहा था कि the amendments which were proposed वो effective नहीं हो रहा था, because we were seeing that if अगर हम लोग old tax regime में जा रहे थे और 80C claim कर रहे थे और HRA वगैरह claim कर रहे थे, तो we were required to pay only a lower tax compared to the new tax regime. So अब इस बार क्या किया इन्होंने कि जो नया टैक्स रिजाइम है उसको इस तरीके से ले आया कि आपका जो टैक्स पेएबल है in respect of new tax regime and in respect of old tax regime is almost break even, is almost the same till the income level of around 15 lakhs or 20 lakhs. Beyond that, I think it would make sense for the assessees to opt for the new tax regime, and therefore would be a better option, and especially for assessees which have an income of more than 5 crores. The surcharge has now reduced from 37 to 25%, which is again a wonderful initiative by the Honorable Finance Minister, and therefore the tax rates for high rich individuals, for high income individuals would reduce significantly if I have an income of more than 5 crores.
So when we look at the slabs under the new tax regime, the slabs have been rationalized. Instead of 6 slabs being there earlier, there are now 5 slabs. And also the income thresholds for each of the slabs has significantly increased. Looking at and comparing both the old regime and new regime, what we look at is, if we just compare 2 or 3 scenarios, what we look at is, we look at the scenarios. Assuming I have an income of 7 lakhs under old regime, let us look at scenario A, wherein we have an income of 7 lakhs under the old regime. So if the income under the old regime is 7 lakhs, I am entitled to a standard deduction of 50,000, HRA of 1 lakh, assume, deduction under chapter 6A of 2 lakhs. I have a total income of 3 lakh 50, on which I am not required to pay tax because my total income is less than 5 lakh. Assuming in the new regime, my income is 7 lakh, I get a standard deduction of 50,000 on salary. The total income is 6.5 lakh. And since the total income is below the threshold of 7 lakhs under the new regime, I would be entitled to rebate under section 87, and therefore the tax would be nil. And therefore any regime would be preferable under scenario. Coming to scenario B, when I have a total income of 25 lakhs, let us assume we take a standard deduction. Standard deduction would be available under old regime and new regime as well of 50,000. We get HRA deduction of 2.5 lakhs, 10% of the income, 2.5 lakhs, and the deduction under chapter 6A of 2 lakh. So the total deduction which is available under the old regime would be 4.5 lakhs, and therefore the total income after considering the standard deduction and HRA and 6A would be a total income of 20 lakhs. Compared to that, in the new regime, the total income would be 24.5 lakhs because I would not be allowed to claim an exemption on account of HRA or deductions under chapter 6. When we look at this scenario, the total tax payable under the old regime is 4 lakh 54, which is lesser than the new regime of 4 lakh 52. So as an assessee, I would probably opt for the old tax regime if the HRA and deduction under chapter 6A would be available to the extent of 4.5 lakhs. If I'm not able to claim these exemptions or deductions, I would probably prefer to opt for the new regime, and therefore that new regime would be a better option in that scenario. Coming to scenario C, where the income is 7 crores under the for the assessee concern, in which case the standard deduction HRA chapter 6 is considered at 22 lakhs 50,000. If we look at this old regime, the total taxable income is coming to 6.77 crores compared to a new regime income of 6.99 crores. In this case, because of the lower surcharge of 25%, there is a reduction of 3% tax rate on the income above 5 CR. So the 2.7 or 3% approximately reduction in the tax rate on income over 5 crores has resulted in a saving of approximately 19 lakhs for assessees under scenario C. So therefore, assessees having income of more than 5 CR would probably opt for new tax regime only because of the significant savings in the surcharge. The surcharge of 43% was a big burden on high income individuals and high net worth individuals, and therefore this new regime would be beneficial for all the assessees concerned. So this surcharge of 25% would only be available if I'm opting for the new tax regime. So if I have to forego the tax benefit which is available on HRA or deduction or chapter 6A, I would have to forego those exemptions and deductions to avail of the benefit of the lower surcharge of 25%. Coming to other amendments with respect to personal taxation. One significant amendment is with respect to life insurance policies. That if we look at the amendment, this is probably the reason why most of the insurance stocks had a significant reduction on the day of the announcement, because what is now proposed is income from life insurance policies which are investment linked, which give you a payback after a particular period. If income from life insurance policies issued on or after 1st April 2023, on which the aggregate of the premium, so if I can have multiple policies, the aggregate of premium of which is more than 5 lakhs during a previous year, is proposed to be taxed under the head income from other sources. So if I'm receiving life maturity proceeds from a life insurance policy during my lifetime
those maturity proceeds would now become taxable if the total premium paid in excess of is in respect of those policies is in excess of 5 lakhs, either in respect of one policy or more than one policy, the aggregate premium of which is more than 5 lakhs. So if the total premium paid in respect of those policies is in excess of 5 lakhs, the life insurance policy has been issued on or after 1st April 2023, and the income is received during my lifetime. In that case, the maturity proceeds would be taxable in the hands of the individual concerned. Of course, the deductions of the premium which has not been allowed as a deduction would be available. The premium would be treated as a cost of acquisition for the particular SSC concern, and therefore the deduction of that would be available to arrive at the gain arising on maturity of the LIC policy concern, or the life insurance policy concern. These amendments were brought out in respect of ULIP and Keyman insurance a couple of years back. This has the net has now been widened with respect to insurance policies for which are not ULIP or Keyman insurance. So those policies would also now come under the tax net and would be taxable if received during the lifetime. If I'm receiving the income on death of the policy holder, I would continue to remain exempt and would not be taxed. So if the intention of the policy holder is to ensure the life of the SSC concern, if the intention is to ensure the life, the same is not taxable. However, if the intention is to make an investment, the income tax proposal says that the maturity proceeds would not be taxable. Another section 80 CCH, which has been specifically introduced for the benefit of individuals enrolled in Agnipath scheme. So this is an incentive for individuals to enroll for the Agnipath scheme, and a scheme similar to what is provided for Provident Fund is for the Agniveers as well. So deductions shall be available for the entire amount deposited by such individual in the said fund, and contributions made by the central government shall also be allowed as a deduction. If I'm an individual opting for the new tax regime, only the contribution will be allowed as a deduction. The deduction will not be available of the amount contributed by the individual to the said. So this Agnipath scheme, so this 80 CCH is a new section which has been introduced for individuals joining the defense forces under the Agniveer scheme. Coming to, so these were the amendments proposed with respect to personal taxation. Coming to amendments which have been brought out in the case of profits and gains from business profession. A significant amendment which has been brought out is with respect to clarity, bringing about clarification on benefits and perquisites in cash. This amendment, I think, will have a significant impact on how the benefits and perquisites are now valued, considering the section 194R, which was inserted by the statute book a year back. Now, what it specifies is, if you look at the existing section 28(4), what it brings to tax is the value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from the business or profession. So 28(4) specifically brings within the chargeability net, it's a charging section for profits and gains from business profession. It specifically brings within its charging net the value of benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business profession. Now the challenge here was, so when the courts have earlier ruled that under section 28(4), benefits or perquisites in cash would not be covered. So the fundamental prerequisite was that the perquisite or the benefit had to be in kind for it to be brought within the ambit of 28(4). If the value of benefit or perquisite was in cash, the same was not covered within the scope of section 28. Now the amendment proposed in section 28(4), what it does, it specifically states here that cases where the benefits of perquisites are provided in cash or in kind, or partly in cash and partly in kind, are now covered within the purview of section. This is a significant amendment when we look at the benefits which are being provided now, or the perquisites which are being provided, considering section 194R is in place, which provides taxability
which provides deduction of tax on such perquisites or benefits provided to a particular recipient concerned. So this is a significant amendment, and I think this will have a long-term implication of how the benefits of perquisites are now provided to the to various persons in the course of business. Coming to another amendment which is being proposed under section 35D, there is a change in the condition to claim deduction under section 35D, which is in respect of preliminary expenses. So as per the existing requirement of section 35D of the income tax, what it specifies is that preliminary expenses such as preparation of feasibility report, project report, etc. The amortization would be amortized over a period of 5 years for the purpose of deduction under section 35D. So if I'm incurring certain preliminary expenses for the purpose of expansion of my industrial undertaking or expansion of my or setting up of the company, the costs incurred in preparation of feasibility report, project report, etc., would be allowed as a deduction over a period of 5 years and would be amortized for the purpose of deduction under section 35. Now, the condition which was imposed here is that this feasibility report or project report or market survey was required to be conducted either by the assessee himself or should be conducted by a concern approved by the board. Now, the concern approved by the board was a tough condition which was imposed on the assessee concern, and therefore to rationalize the provision, it is therefore proposed that 35D, the condition of activity to be carried out by a concern approved by the board is removed. So the condition of the activity to be carried out by a concern approved by the board is now removed. The assessee will now have to submit a self-declaration to the income tax authority to be designated for the purpose within the specified time and in the prescribed format to avail the deduction under section 35D. Now, these details of expenses are now required to be submitted to the assessing officer, and the condition that the activity is to be carried out by a concern which is approved by the board has been done away with. Another amendment which is most talked about, I think, is with respect to section 43B in respect of payments to micro, small, and medium enterprises. Now, what has been proposed here is this section 43B of the Income Tax Act, which has been there for several years now, which was the scope of which is gradually being widened to include a lot of payments, which include a lot of expenses which will be allowed on payment basis only. So earlier it started off with customs duty, wherein the accrual would be allowed only when the payment is made before the due date of filing of return. So the scope of 43B is in respect of any tax duties as of fee, in respect of interest on term loan which is payable to banks or a financial institution. There is this payments to employees for bonus, etc. These payments are allowed. These expenses would be allowed only on payment basis. Either if the payment has been made before the due date of filing of the return, in which case I can claim it in the relevant assessment year, or if the payment is made subsequent to the due date of filing of return, in which case I would claim it in the year in which the payment is actually made. So the deduction of the expenses which are specified under section 43B would only be allowed when the particular expense is paid. Now, so the Honorable Finance Minister in the speech specified that to promote MSME sector, specifically micro and small enterprises, the payments to micro and small enterprises would now be covered within the ambit of section 43B. So what it now provides, if the payment is made within the time limit prescribed under MSMED Act, then the expenditure shall be allowed as a deduction in the year in which expenses are accounted. However, if the payment is made beyond the time limit, then the expenditure will be allowed as a deduction in the year in which the amount is actually paid. So, and it also inserts a proviso that if the amount is paid before the due date of that the deduction on actual basis, if the amount is paid before the due date of furnishing return, will not apply to such cases. So even if I made the payment to the MSME concerned before the due date of filing return, but I've made the payment delayed, I would not be allowed a deduction of
such payments on accrual basis. So this is a very imposing condition, and it brings about a lot of challenge to the industries, to the companies concerned, because what is now required is this condition of 43B is just not applicable to large entities. This condition of payments to micro and small enterprise is also applicable to a company which is itself a micro or a small enterprise. So this condition is applicable across all classes of SSEs, and assume a scenario where the expenses or the payables of a particular entity is 70 or 80% of the total turnover, in which case, if any of the payments are not falling due or paid beyond the due date because of any circumstance, the said disallowance would increase the tax outflow of the SSE concerned by a significant amount, in which case it could actually increase by, the tax amount could actually let us take a scenario where the total turnover is 20 crores, total expenses is 18 crores, which is paid to micro and small enterprise. The total income, in which case, will be 2 crores on which tax will be payable. Assume a scenario where this 18 crores of payables, out of which 50% is not paid within the due date, the particular SSE concerned would have to pay tax on this 9 crores as well. So this is significant burden which has been cast on any SSE concern, and it would be better if the condition is, if the 43B condition is just restricted to companies which are not micro, small and medium, only to large enterprises. If this condition is there, that would be a better proposition. Take for example, just to give you a understanding of how this section operates. Take for example, date of invoice is 31st March 2020. The due date of payment as per MSMED Act for those entities would be, due date of payment would be 14th May 2024. So what the MSMED Act specifies is that the payment is required to be made within 45 days. Even if contractually I may agree to a due date of 60 days as per the agreement, MSMED Act specifies that the due date can only be considered as 45 days. So contractually also, it's not possible for me to have a due date of more than 45 days from the acceptance of the goods. So due date as per for the payment as per MSMED Act will be 14th May 2024. And the actual date of payment, let us assume, is 8th May 2024. So since the payment here is made within the prescribed time limit, the applicability of, and I would be allowed as this deduction in the financial year 23-24 itself on accrual basis, since the payment was made within the due date. Take another scenario wherein the date where the date of payment was 25th May 2024. In this case, the payment was not made within the prescribed time limit, and therefore 43B arises. Although the payment has been made before the due date of filing return, I will not be allowed a deduction of this accrual, and I would only be allowed a deduction in the financial year 24-25 on payment basis. So 43B proposal, which is brought out, specifically states that the proviso allowing deduction on accrual basis, if amount is paid before the due date of furnishing, will not. So this creates a lot of burden on all the SSEs concerned, because the payments are made for the case of purchases of raw materials or purchases of services, and in which case, if the SSE is, if the payee is an MSME or a micro or small enterprise, in which case I would have to look into the applicability of 43B in each payment, whether the payment is being made within the due date. Another problem that will arise here is the availability of database of which entities are covered within the purview of micro. I think that exercise would also be required to be undertaken by all SSEs. A question which arises here is whether it would cover only payees which are registered as micro and small enterprise under the MSMED Act, or would it cover SSEs irrespective of whether they are registered or not, provided they meet the definition of micro or small enterprise. In this case, I think there's a Supreme Court judgment which clarifies that only
SSCs which are registered as MSME or as a micro and small enterprise under Section 15 of MSME Act would be eligible, would be entitled to the benefits available under the MSME. So I think a clarification to that effect should also be there, and the government should make available the database of the registered MSMEs at one place for the companies to identify whether the payees are micro or small enterprise. So that would help them to identify and arrive at the taxable income properly. Because even today, when we look at the company financials, we rely on management representations to arrive at the amounts which are due to MSME. There's a specific return under the Companies Act also, which requires filing of dues to MSMEs, which is required to file half-yearly on a half-yearly basis. So these details, compiling of these details is quite a strenuous task for the SSC, for the companies concerned. Coming to presumptive taxation, again, there has been some relaxations which have been brought out under presumptive taxation regime. So what the proposal is to increase the threshold limits for presumptive taxation. So the presumptive taxation limits, which is limits which are increased for is from financial year 23-24. What it provides is Section 44 AD. For eligible business, the threshold limit is now proposed to be increased from 2 crores to 3 crores if cash receipts during the previous year is less than or equal to 5% of the total turnover of gross receipts. So if I have cash receipts of less than 2 crores, I can still opt for 44 AD for an eligible business. However, if my cash receipts is more than 5%, if my cash receipts is more than 5%, my threshold that would be applicable would be 2 CR. If my cash receipts is less than 5% of the total receipts, the threshold limit would be 3 crores. So this is how we read the proposal. The threshold limit of 10 crores still remains if the cash receipt and cash payments are less than 5% of the total receipts and total payments. So there are 3 threshold limits now. One is 2 CR if the cash receipts is less than 5%. 3 CR if the cash is 2 CR if the cash receipts is more than 5%, the threshold is 2 CR. If the cash receipts is less than 5%, the threshold would be 3 CR. If my cash receipts and cash payments both are less than 5% of the total receipts and total payments respectively, then the threshold would be 10 CR. So in that case, I would not be required to opt for, would not be 44 AB shall not be applicable in such scenarios. 44 ADA also, for professionals, the limit has been increased. The threshold limit for 44 ADA under Section 44 ADA for professionals has now been increased from 50 lakhs to 75 lakhs if cash received during the previous year is less than 5% of the total gross receipts. So again, here also, if my cash receipts is more than 5% of the total receipts, the threshold that would be applicable would be 50 lakhs. If the cash receipts is less than 5%, the threshold would be 75 lakhs, and I would be required to pay a 50% presumptive tax on the gross receipts which I'm earning. Meaning of cash has been expanded to include checks drawn on a bank or a bank draft, which is not account free for the purpose of. So if I'm within the threshold limits, the tax audit would not be applicable in case of meeting the thresholds, and I would be eligible to opt for the presumptive taxation, assuming I meet the above thresholds. So these were the proposed amendments in respect of the profits and gains from business profession. Coming to the proposals with respect to capital gains, I think the most significant amendment is with respect to limiting the benefit available under Section 54 and 54F. This would be applicable from financial year 23-24 onwards. 1 second. So with respect to the limitations on the benefit claimed under Section 54 and 54F, the deduction which is now available under Section 54 and 54F respectively are with respect to whether
whether respect to if I'm having a capital gain in respect of transfer of a residential house and such capital gain is reinvested in a residential house, exemption under section 54 is available in respect of the long-term capital gain. In respect of 54F, if there's a long-term capital gain arising on transfer of a long-term capital asset other than a residential house, and the net consideration is reinvested in a residential house, a proportional deduction is available based on the proportion of net consideration invested. So this 54 and 54F, there are other conditions which are required to be satisfied. I'm not getting into those conditions which are there under section 54 and 54F. Presently, there is no limit to the amount of deduction that I can claim under section 54 and 54F. 54, the condition under 54 is with respect to amount of capital gain invested. With respect to 54F is amount of net consideration invested. Now, what has been proposed in the Finance Bill 2023 is that the maximum deduction that would be available is 10 CR. So it has specified, it is proposed that where the cost of the residential house is more than 10 CR, I would deem the cost of the residential house as only 10 CR. So in effect, what the proposal does is it limits the deduction that is available to the assessee concerned to 10 crores. Take, for example, if I'm having a capital gain of 12 crores on transfer of a residential house, and if I reinvested 13 crores of that capital gain which has arisen from transfer of the residential house, the maximum deduction in this case would be available from the financial year 23-24 would be 10 CR. Tax on long-term capital gain under section 112, we would have to pay a tax on 2 CR under long-term capital gain. So therefore, the earlier we would have not been required to pay any tax under section 54 because the amount of reinvestment was more than the amount of capital gain that was earned by the assessee concerned. Similarly, let us look at 54F, where the net consideration received is 12 CR. Let us assume capital gain on transfer was 6 crores. And I have reinvested an amount of 13 crores in a new property, in a residential house. Assuming other conditions are satisfied, the maximum deduction that would now be available under section 54F from the financial year 23-24 onwards is 5 CR because the proportional amount would now not be allowed. So the amount reinvested would be deemed to be 10 CR, and therefore the deduction would be calculated as that would be available would be 6 capital gain multiplied by the deemed cost of the house property concerned, which is 10 crores upon the net consideration received of 12 CR. So that would be the proportional deduction that would be available under section 54F, and all long-term capital gain under section 112 would be arrived at 1 CR in this case. Whereas in the earlier scenario, in the present scenario, that is till financial year 22-23, I would not have been required to pay any tax either under 54 or 54F. Now, 3 or 4 points here which are very, very relevant. One point which is there is this would of course increase the tendency to acquire house property on a joint home basis. So the deductions would still be available on respect of each and every individual. And therefore, if a husband and wife jointly are acquiring a property, residential property, in this case, you would be eligible to claim 10 crores in each of the assessee concerned. The capital gain should also arise in respect of each individual concerned, however. But there would be increase in practice of acquiring house property in joint names probably as a result of maximum deduction being capped at 10 CR. Another important point that should be kept in mind is 54 and 54F are mutually exclusive. If I'm claiming deduction or exemption under section 54, I am still allowed to claim deduction under section F as well. So 54 operates independently, 54F operates independently. So there's a possibility to claim 20 crores if there are 2 assets which are being sold. One is transfer of a residential house under section 54, and in 54F, transfer of a long-term capital asset other than a residential house. So there's a possibility to claim 2 deductions under section 54 and 54F separately in case there is capital gain arising on 2 different assets in the same year.
So these are points which are relevant for us to understand. Another point which I thought is relevant is if we look at the proposal, there some amendments would probably be brought out when the finance bill is enacted. There's a proposed in the section 54 and 54F both. There is a condition that if I'm selling the house property, which has been in which I've reinvested, is sold within a period of 3 years, then the cost of the acquisition of that house property shall be deemed to be nil. If I'm selling it within the 3 years of acquisition of the house property, which is being reinvested in the section 54. Now, what it specifies here is section 54 says is if the capital gain that I've claimed as exemption under section 54 is less than the cost of acquisition of the property concerned, in which I have reinvested under section 54, the cost of acquisition will be deemed to be nil. Now, the fact that since the deemed reinvestment has been capped at 10 CR, the relevant section has to be amended to bring about clarity, because amount paid in excess of 10 CR should be treated as the cost of acquisition in case of sale within 3 years of the property concerned. So this amendment needs to be brought out, and I think the post-budget suggestions will be sent across by all of us, and this amendment will be brought out when the finance bill is enacted. I think this amendment has been brought out. Another point here which is very relevant is if the investment is capped at 10 CR, if there's a long-term capital gain arising, there's a possibility that I may be applicable for the higher surcharge of 25%, because otherwise that capital gain was exempted. So as a result of this section 54 and 54F capping the investment in residential house at 10 CR, there's a possibility that my income goes beyond the threshold of 2 CR or 5 crore as the case may be, and therefore I may be subjected to a surcharge of 25% or 37% as the case may be, depending on my income levels and whether I'm opting for the old or new tax. So this would also cast a significant burden because for the high rich individuals, and therefore surcharge may possibly increase because of the capping. Coming to another amendment which has been proposed here is with respect to taxation of capital gains in case of market-linked debentures. I think this is more of a clarification wherein these market-linked debentures were being taxed at 10% plus applicable surcharge without any indexation benefit. However, since these securities were in the nature of derivatives, and derivatives which were taxed at normal applicable rates of 30%, the proposal in the finance bill is that these market-linked debentures would be deemed always to be short-term capital gains and therefore be taxed at the applicable rate of the maximum margin, which is the tax rate applicable to the SSC concerned. So if you look at the recent past, there has been a lot of issuance of market-linked debentures, and the reason why it has gained that traction is because the tax rate which was applicable to MLDs were only 10% plus applicable surcharge. Now the benefit has been done away with, and now these gain on sale of these market-linked debentures would now be taxed as deemed short-term capital gain, irrespective of the period of holding. Coming to another amendment which is proposed here is just a clarificatory amendment wherein some SSCs were taking a view in respect of 45(5)(a) of the Income Tax Act with respect to capital gains arising on transfer of a capital asset being land or building or both under a JDA. So this section was introduced way back 5 to 6 years back, wherein it was specified that if there's a capital gain arising under a joint development agreement to an individual or an HUF, the capital gains shall be chargeable to income tax in the previous year in which certificate of completion for the whole or part of the project is issued by the competent authority. So this was section 45(5)(a) that was introduced. What was specified in before Finance Bill 23 was stamp duty value plus the consideration received in cash would be considered for the purpose of arriving at the full value of consideration under 45(5)(a). Now, the consideration received in cash was
was interpreted very technically, and it was interpreted as only if the consideration is received in cash, it would be considered as part of the full value of consideration. It is now clarified to say that consideration is whether it's received in cash, check, draft, or any other mode would be considered as part of the consideration and therefore would be subjected to tax for the purpose of section 45. This is merely a clarificatory amendment which has been brought. This deduction, again is a clarificatory amendment subsequent to certain ITAT judgments wherein they've allowed a double deduction of interest on borrowed capital for acquiring, renewing, or reconstructing a property. So what it specifies here is if I am claiming interest under section 24 or chapter 6A, if I'm claiming that interest as a deduction either under chapter 6A or section 24 under income from house property or under section 80C, in that case, I would not be allowed to treat that interest payment as cost of improvement. Only the interest which has not been considered as part of section 24 or chapter 6A would be allowed as a deduction for the purpose of computing capital gains and would be considered as part of cost of improvement. So to ensure that double deduction is not allowed for interest on borrowed capital, this particular amendment is proposed to plug that loophole. Couple of other amendments in capital gains is with respect to cost of acquisition of certain assets for computing capital gains. It's now clarified that any intangible asset or any other right of similar nature would now be treated as having a cost of acquisition of nil, and therefore the computation mechanism will not fail in that scenario. So the scope of section 55 for the purpose of arriving at the cost of acquisition or cost of improvement of specified assets, it is specified that intangible asset or any other asset for that matter will be deemed to be nil for the purpose of arriving at the capital gain. So this again may have significant repercussions as to what is the meaning of other right, because the scope has now been widened significantly with the nature of the wording now being employed in section 55. Other right could probably also include factory licenses, rights which were not specifically covered within the purview of section 55. Conversion of gold to electronic gold receipts. So the scheme of conversion of physical gold to electronic gold receipts which is being introduced by SEBI is also proposed to be is amended to say that this conversion will not be treated as a transfer, and the conversion of physical gold to electronic gold or vice versa would not attract any capital gains, and my date of acquisition and cost of acquisition would be treated as my first date, or the cost would be the date on which the relevant EGR or physical gold is acquired. So to promote the practice of having electronic gold receipts instead of physical gold, this amendment has been introduced to ensure that more and more assessees come forward and convert their physical gold into electronic. TDS on winning, certain amendments which have been brought out in TDS provisions is with respect to one amendment is with respect to online gaming and winning income. So a new section is proposed to be introduced with respect to a flat rate of 30% on net winnings from online games without any minimum threshold. So all winnings from online games would now attract a TDS of 30%. And the provisions are proposed to be effective from 1st July 2023. The manner of computation will be prescribed in due course. Also, the TDS provisions are now being clarified to state that if the aggregate amount of winnings are more than 10,000 in a financial year, tax TDS would be applicable. So there were scenarios where it was observed by the Income Tax Department that the winnings were distributed or winnings were structured in such a manner that each winning was less than 10,000 and therefore TDS was not applicable. With this amendment, if a particular person is having a winning of more than 10,000 a financial year, TDS would be applicable, and necessary details would now required to be made by the payer concerned, by the person who is making this crossword lottery puzzles winnings available. They would have to maintain the database such that
are able to check what is the aggregate revenue in a financial year for a assessing concern. Other proposals with respect to TDS, there has been significant impetus being given to cooperative societies in the current finance bill. What are the reasons? There are significant incentives which are being given. So one of the incentives is threshold limit for deduction of tax under section 194N, as is proposed to be increased from 1 CR to 3 CR for withdrawal of cash by a cooperative society. Earlier, the TDS was exempted on payment of interest to a resident on listed securities. That exemption has now been done away with, and therefore, under section 193, TDS of 10% shall be applicable on such payment of interest on listed debentures. This again will help the income tax department to calculate have a 360-degree view of the total income earned by the assessee, and probably come to a scenario where the return is prepared by the income tax department itself, pre-filled returns that would help in calculating the tax liability of the individual very easily. The requirement of deducting tax at maximum marginal rate on taxable component of amount withdrawn from the accumulated balance of PF has been eliminated, and the rate of TDS of 20% in case of non-PAN assessees has been made applicable under section 206AA of the Act. 194R we have discussed that benefit of perquisite, whether in cash or in kind, would get triggered under section 194R in line with section 28(4), which is proposed to be amended as part of Finance Bill 2023. Tax TDS on distributions made by mutual funds to non-residents again will be lower of 20% or the rate as per the applicable DTE. So there was representations which were being made by non-residents, wherein these distributions, the rate of TDS which will be applicable to these distributions, and therefore it is provided that the TDS applicable would be lower of 20% or the rate as per the applicable DTE. With respect to startups, two incentives which have been given is the proposal to extend the period of incorporation of eligible startups to first day of April 2024, and permitting the eligible startups applicability of 79 not to be there if in respect of losses incurred up till 10 years. So the extension, so the relaxation which was available up to 7 years has now been extended up to 10 years for the purposes of section 79 for the startups. With respect to cooperative societies, basically for new manufacturing cooperative societies, a concessional tax regime of 15% has now been made available, similar to the manufacturing companies which is there. So again, an incentive for cooperative societies which are there. Certain other amendments to primary cooperatives, I think this is not very relevant in the context of our assessees, but again, this is these certain incentives for cooperatives. With respect to charitable trusts, I think significant rationalization, significant stringencies have been brought out, specifically with respect to section 115 TD or tax on accreted income being taxable in respect of the trust if I do not apply for provisional registration or approval. So if I have a registered trust and if I do not renew it, my income would be taxable under section 115 TD, and therefore this is a significant burden on the trust. Also, it says that if the exemption under section 12AA or the 1023C would not be available if the return is not filed within the due date. The concept of updated return would not be available to the trust concerned. Also, to limit the double deduction with respect to application, it is now provided that any application out of corpus or loans borrowings before 1/4/2021 will not be allowed as an application. So this again, assessees were claiming a double deduction on the application of the corpus or loans or on repayment of loans and borrowings which were taken before 1/4/21, and therefore this is a limiting factor which has been introduced to curb the double deduction. Also, to the effect that donations made by a trust to another trust, only 85% of the same would be treated as an application. It is encouraged that the trust itself contributes to charitable purpose. If a trust is contributing to another trust, only 85% of that amount shall be treated as the application.
The last point was with respect to strategic disinvestment. With respect, this is more for the purpose of allowing carry forward losses with respect to IDBI Bank. And therefore 72A is now proposed to be amended, that even if the 51% stake is held by state government, central government, or a public sector company, which results in a reduction of shareholding of such class of SSEs, either singly or together, below 51%, that will be treated as a strategic disinvestment. This is primarily to ensure IDBI Bank is accommodated, because LIC is holding primarily most of the stake in IDBI Bank, and together with LIC, the total aggregate stake of the central, state, and public sector is aggregating to around 85 to 90%. To assist with that strategic disinvestment, this amendment is now proposed to be made. So I think these were the proposals which were introduced by the finance bill. I think now I'm able to take questions which are there. Any questions, I think. Right. So thank you, sir. It was really wonderful to listen to you, sir. Although I'm not a student of income tax, but I grab all the things you mentioned. So it was also, there is a question asked by Mr. Ashish Grover. If person has a business income in 1 year due to derivative and next year no business income, then can the person change his regime every year? So in case if I have, again, there's less of clarity in this respect. However, if in a particular year, if I do not have business income, it is possible for me to change my regime. If I have a business income, it may be difficult. But if in a particular year, if I do not have a business income, it is possible for me to change my business regime, change the taxation regime under the old or new, whatever is more advantageous. Vivek ji, does this mean कि जैसे first year में I have a salary income and business income from the derivatives and all, so Right. I chose old scheme and I fill respective forms and all that compliance has been done. Now in the second year I have only salary income. Right. So I chose the new scheme. Right. Okay, and अब new next scheme year के क्या लिए मैंने होगा कोई उसके compliance नहीं किया. अब third year में can I go back to old scheme? So देखिए, एक बार तो शिफ्ट अलाउड ही है, एक बार तो शिफ्टिंग अलाउड ही है. वो तो कर लिया हमने फर्स्ट ईयर में कर लिया. मतलब नहीं, आई कैन गो बैक टू द न्यू रिजाइम वंस. ठीक है. हाँ, तो सेकंड ईयर में मैं फर्स्ट में ओल्ड में थी, सेकंड में मैं न्यू में आ गई. अब उसमें सिर्फ सैलरी इनकम था, बिजनेस इनकम था ही नहीं. हाँ. थर्ड ईयर में बिजनेस इनकम अगेन आ गया, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग तो ये कभी भी कर लेते हैं बैठ करके फॉर डेरिवेटिव. इस केस में क्लैरिटी नहीं है कि बिजनेस मतलब शिफ्ट एक बार हो गया, एक साल बिजनेस था, नेक्स्ट ईयर बिजनेस नहीं था, तो उस समय तो भाई आई कैन शिफ्ट टू दी ओल्ड और न्यू रिजाइम एज द केस में भी. बट वापस थर्ड ईयर वापस बिजनेस आ गया, तो उस केस में कैसे इस सेक्शन को इंटरप्रेट किया जाएगा, दैट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द सेक्शन. सो अगेन आई थिंक एक लीनियंट व्यू किया जा सकता है, बट वेरी डिफिकल्ट अनलेस कोर्ट्स इंटरप्रेट इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. देखिए, ये लोग टैक्स रेट तो हर साल ही ट्वीट कर रहे हैं. जब तक देखेंगे कि ओल्ड रिजाइम लोग शिफ्ट हो गए, ओल्ड रिजाइम को हटा ही देंगे ये लोग. सर ओल्ड रिजाइम को तो खत्म ही करना है उन्हें. हाँ, उनको खत्म करना है. अल्टीमेटली एक बार में खत्म करे वंस एंड फॉर ऑल. बट ये सेविंग्स को डिस्करेज कर रहा है एक्चुअली. राइट. हाँ, सेविंग्स को डिस्करेज. दैट इज वेरी मच नेगेटिव फॉर द इंडियन सोसाइटी मेंबर्स. वेरी ट्रू सुमित. Because more than 50% तो forced saving was there. टैक्स रिबेट चाहिए तो इसलिए सेविंग कर रहे हैं. हाँ, और एचआरए वगैरह भी मिलता है. देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो पीपल व्हेन द एसएससी स्टार्ट टू मिसयूज द प्रोविजंस ना, अब एचआरए वगैरह में तो रेंट रिसीट्स वगैरह कैसे ऑब्टेन होता था पता ही था अपने को. प्रॉब्लम वो हो जाता है. यस. हाँ, अब अपने लोग हो सकता है एटीसी कोई नया फॉर्म में रीइंट्रोड्यूस हो जाए. यू नेवर नो आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स. Quite a possibility, but actually the deductions which were being claimed were under any scheme or under any arrangement. That was a problem. Mainly insurance premium का एक relevant question है कि I was paying premium 4 lakh rupee before 23-24 and 23-24 में मैंने 2 lakh का premium pay किया. It will be more than 5 lakh or it will be counted? So it is only in respect of policies taken on or after 23.
हाँ, right. अगर आप That is- मार्च 23 के लिए पहले आप पॉलिसी ले लेते हो तो ठीक है, उसके लिए हाँ, चाहे आप 10 लाख की प्रीमियम ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। that is clear. That is Before 30th March कितना भी अमाउंट का ले सकते हो, उसके बाद 5 लाख का, हाँ। and that should be in aggregate of the policies. जो भी राइट, हमने 2 या 3 अगर आप 10 पॉलिसीज, पॉलिसीज भी मिला करके आप 5 लाख हो गया आपका एक्सीड, देन यू आर नॉट अवेलेबल, जो भी 1/4/2023 के बाद हम लेते हैं, राइट। राइट। अंकित जी, और कोई क्वेरी? हाँ सर, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। जी प्लीज। इट मींस नॉन रेजिडेंशियल, It means if non-residential assets sold for 20 CR and reinvested in house property for 30 CR, we can claim reduction of 10 CR in 54. No. नहीं, 54 is for specific classes of assets, capital assets. 54F is specific classes of capital assets. So 54 is for when you are selling a residential asset and reinvesting in a residential house property. 54F is when you are selling a capital asset other than a residential property. So the distinction needs to be understood. What I wanted to bring out was if I have 2 capital gains in a particular year. For example, if I'm selling a residential house property and reinvesting in a residential house, and if I have another capital gain which is arising on selling of an asset other than a residential house property, I would possibly be able to claim 10 CR under each of these sections. That is what I wanted to make out. It's not a case where for the same sale of capital asset, I am able to claim under section 54 and 54F both. That is not permitted under the law. The next question is, if interest on home loan was 4 lakh and claimed only 2 lakh as deduction, then balance 2 lakh can be claimed for cost of acquisition. Provided it satisfies the definition of cost of improvement or cost of acquisition. If it satisfies the definition of cost of acquisition or cost of improvement, कि भाई आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिए तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो खर्चा किए उसके ऊपर, सो बेसिकली दोस कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सैटिस्फाइड कि ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में माना जाएगा, इफ दोस कंडीशंस आर सैटिस्फाइड यू कैन ऑफ कोर्स क्लेम दैट। सर एक्विजिशन के लिए अगर जस्ट लाइक अगर ईयरली इंटरेस्ट जो है 2 लाख को एक्सीड कर रहा है, 4 लाख है लेट्स सपोज, इन दैट केस आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर इट टू, मतलब अगर आप एक्विजिशन कर चुके हैं और एंजॉय कर रहे हो प्रॉपर्टी को, in that case it may be difficult for you to claim it as a cost of improvement. That is what I'm trying to say. अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप हाउस प्रॉपर्टी का लोन ले रहे हो, it should meet the definition of cost of improvement. That is it. अंडरस्टूड सर। एक 44 ADA से रिलेटेड है क्वेश्चन, जस्ट लाइक कि अगर बीइंग एन लॉयर अगर 40 लाख के आसपास अगर किसी की रेवेन्यू है तो ही इज क्लेमिंग 44 ADA and next year it increases to 60 lakh rupees. Currently if I am taking the 50 lakh rupees limit in 44 ADA, तो अब जो 44 ADA है वो हमने ऑप्ट आउट नहीं किया, बट वो तो 50 क्रॉस करने की वजह से मैंने अपना टैक्स ऑडिट करवा लिया। Right. Coming, my revenue is coming down 40 again. Right. So now I'm not earlier in the last financial year I did not opt out. I was compelled to. So you can avail 44 ADA. 44 ADA में कर सकते हैं ना? हाँ, क्लेम कर सकते हैं। अब वो 75 हो गया लिमिट, अब 75 हो गया। अब presumptive taxation is a very dicey scenario. मतलब I do not know, but probably the revenue or the income tax department may probably look at a scenario where if you're earning 70 lakhs and if you're investing 50 lakhs in, let's say, mutual funds or shares or fixed deposits, whether the presumptive income would be considered as 20 lakhs or would it be considered as 50% of 70 lakhs? Although law बोलता है कि 50% is the minimum, but अगर आपका financial से दिखेगा कि भी आपने 70 लाख कमाया, 50 इन्वेस्ट कर दिया, तो भी 50 तो आपका इनकम हुआ ही ना. So presumptive is the minimum. So that assessment also is now very relevant. I do not know, there have been very few judgments on this aspect, whether this presumptive income would be the minimum income or would be the deemed income. Right. And as per the language of the section, it is the minimum income actually. So probably there could be potential litigation in respect of this. सर सेक्शन 24 भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 24 है, तो उसमें भी कंसेप्ट लगता है कि वो दैट इज
मतलब वो तो 30% इवन इफ अगर मेरा कोई खर्चा नहीं है तब भी हाँ हमसे वो 30%। 30% अलाउड है, वो तो ठीक है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन। प्रिजम्पटिव इज मिनिमम इनकम दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। राइट। Assessee can suo motu disclose a higher income. सुमित जी, प्रीवियस सेशन में क्वेरी आई थी which we have deferred to the for this you session, can- तो उसको भी you can- एक बार हाँ Asha, you can recall, you can wait a minute. This query was at 2:48 p.m. Hmm. Can one save capital gain under section 54 and 54F of March 2023 and April 2023 by buying a property of the consolidated amount in May 23? हाँ मतलब the requirement is March 2023 में capital gain अगर arise हो रहा है, so either 1 year मतलब जो condition है 1 year before or 2 years, within 2 years, that you can claim the capital gain exemption. अब So उसमें March 23 में the limit is not there of NCR. yes, The capital gain if it is arising prior to 31st March 2023, you can avail unlimited deduction or exemptions under section 54 or 54A. If the capital gains is triggered subsequent to 31st March, the limit of 10 CR would get triggered. yes. So he's saying कि consolidate amount in May 23 by property buy हुई है May 23. It means कि 10 crore limit will be there. नहीं रहेगा ना मैम, आपका 31st Property मार्च तो के सर कैपिटल गेन कब हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कैपिटल गेन आपका 31st मार्च के पहले हो रहा है, then the limit would not be applicable. Capital gain if it is beyond 31st March, then the limit would be applicable. okay. तो And exemption आप इनके कौन से क्वेश्चन साल में में क्लेम कर रहे अप्रैल और मार्च एंड अप्रैल दोनों मंथ इन्होंने लिखे हैं, कंसोलिडेट किया है हो? इन्होंने। अप्रैल का कैपिटल गेन है तब आपका लिमिट एप्लीकेबल होगा। ओके, the concept under income tax is the point of taxation. Point कब है? The point of taxation is the year. तो assessment year का कौन सा law applicable होगा? तो assessment year okay, 23-24 का law applicable होगा because the point of taxation is 31st March, let us assume. As soon as the point of taxation is 1st April, the limit of 10 CR would get triggered. ओके। इनके क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है, लाइक उनके 2 कैपिटल गेन है, एक मार्च में हो रहा है एंड एक अप्रैल में हो रहा है। 2 कैपिटल गेन हो रहे हैं, तो इन दोनों कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करने के लिए वो सिंगल कंसोलिडेट प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। नहीं, That will be वो नहीं this चाहिए। was this first question answer and second we have already answered. right. Can I ask one question, Sangeeta? Yes. Yes madam, please. सर, अगर हम दो हाउसेस बेचते हैं, एक रेजिडेंशियल दूसरा रेजिडेंशियल, और तब हम एक बड़ा रेजिडेंशियल खरीदते हैं कंसोलिडेटेड अमाउंट का, तब तो हमें मिल जाएगा ना 54 में? हाँ 54 में मिल जाएगा, बट आई थिंक 54 में कंडीशंस देखने होंगे दूसरे कि 54 में कंडीशंस क्या क्या है, क्योंकि आपको एक हाउस प्रॉपर्टी में ही मिलेगा डिडक्शन या क्या क्या क्राइटेरिया, वो एक बार चेक करना होगा। हाँ नहीं, मैं 2 बेच रही हूँ, खरीद एक ही रही हूँ। नहीं, एक बार 54 के कंडीशंस को चेक करने होंगे ना। आई थिंक मिल जाएगा संगीता जी, चेक करना पड़ेगा, स्टिल मिल जाएगा। हाँ, अगर मतलब कैपिटल गेन्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिल जाएगा, बट द कंडीशन इज द मतलब जो कंडीशंस है कि भी कितने हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास होना चाहिए, वो कंडीशंस को देखने होंगे, वो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, राइट। ओके नहीं, और इसमें जो किसी ने, जो आशीष जी ने शायद एक क्वेश्चन पूछा था या पहले, वो ये कह रहे थे कि मैं 54 वाला जो प्रॉपर्टी है वो मार्च में बेच रहा हूँ, और 54F में जो मुझे कैपिटल 54F की जो लेना चाहते हैं वो से अप्रैल 2023 में लेना चाहते हैं, तब वो अगर एक घर खरीद रहे हैं तो क्या उन्हें दोनों सेक्शंस की डिडक्शंस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। चेक नहीं मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पास 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंडीशन ये है जो 54F में जो टैक्स होता है 54 में, वो बोलता है क्वा द कैपिटल गेन। So if you have one capital gain, against this you can buy one property. If you have 2 capital gain, then you can buy 2 properties subject to the limitation which is given in the section. So वो limitation दिया हुआ है, उसमें नहीं कर पाएंगे। Even for 54 only, जो मेरा पहला क्वेश्चन था। 54 में क्वा द प्रॉपर्टी है, सिमिलरली
54F में भी क्वा द एसेट है, आप एक एसेट को सेल कर रहे हैं तो एक एसेट खरीद रहे हैं। अगर आपने एक कंपनी के सारे शेयर बेच दिए, आपका शेयर सिक्योरिटीज है और प्रॉपर्टी भी है, आपने शेयर सिक्योरिटी बेचा 54F क्लेम करने के लिए और उसमें और एक प्रॉपर्टी बेच दी और 54 भी क्लेम कर लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखिए 54 में जो लिखा हुआ है ना, सब इज व्हाट सचिन जी इज सेइंग, आई थिंक इट्स राइट। इट्स says that where in the case of an assessee the capital gain arises from transfer of a long term capital asset being buildings or land and pertaining there and being a residential house, the income of which is chargeable under the head income from house property. So it says that single has to be there maintained. I do not know if there is jurisprudence available. We have to check the jurisprudence. Honestly, उस perspective में evaluate नहीं किया था, but the jurisprudence के basis पे अगर single asset के against में ही मेरे को benefit मिल सकता है। सो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर इस सेशन का, तुषार गेरा जी का। एंड वेलकम टू सचिन सिन्हा जी एंड स्मिता पाटनी जी। My rental income is 6 lakh and salary income is 7 lakh. Can we get 30% of 6 lakh as a repair and maintenance deduction? And 2 lakh as a housing loan interest against rental income and still can opt for new scheme, I think. Yes, उसमें तो कोई issues ही नहीं है। इसमें तो I think there should not be a problem. Okay. So with this, we would like to close our third session. Well in time, 5 minutes later. Special thanks to Vivek ji, first time speaking on this Team Casa platform on the budget Aaj Tak program. And I request Amit Sharma ji to take up the fourth session. Before concluding third session, I would like to present a certificate of appreciation to Thank you. Vivek ji. Thank And you so much. thanks for your wonderful deliberation, discussion. Thank you. Thank you for inviting me, Sumit ji, and thank you, Sachin, for inviting. All the best, Amit ji, now Smita ji, for Thank your you. session. Thank you, Vivek ji. thank you. Amit ji, you can And a start. very wonderful session. Yes, Thank very you. wonderful Thank you, session. Smita. Amit ji, you can moderate fourth session on international Yeah. taxation. Am I audible to everyone? Yes, perfect. Yeah. So, hi everyone. Thank you very much for taking your time out. A very good afternoon to everyone. I am happy to be part of this marathon budget session. I will be passing on the baton to learned speaker Ms. Smita Patni ji, who shall be enlightening us with the changes proposed by budget in relation to the international taxation. Friends, while a prima facie view is that there is a limited changes in the international tax and transfer pricing, however, fine reading and interpretation by the learned speaker would be helpful in understanding what are the granular changes which has been brought in by this budget in relation to international tax and transfer pricing. India being a G20, India being a presiding G20 this year, this has been a lot of talk for the in the international tax arena in relation to international taxation. There are a lot of development going on in relation to Pillar 2, particularly Pillar 2, wherein global minimum taxation is under discussion. So there was a lot of talk prior to the budget that there may be changes brought in by the law, which in relation to align with the GMT rules in Indian income tax also. However, such changes has been not brought into proposed by, and as of now, it is clear that there is certainty in terms of international tax and transfer pricing provisions. Certain rationalization has been done. So without wasting much of time, I would like to pass on this baton to the learned speaker, Ms. Smita Patni ji. So about Smita Patni ji, she is a practicing chartered accountant, also holding a law degree and is based in Delhi and has a post-qualification experience of around 23 years. She regularly advises domestic and international clients from various sectors in tax matter and is well versed in almost all facets of the accounting profession, with her core area of expertise being international tax and transfer pricing laws. She specializes in tax planning and advisory for non-residents, wherein she advises clients on how to navigate through Indian tax laws coupled with FEMA laws. She is a regular speaker, acts as moderator and group leader in various seminars and webinars, and has many articles to her credit, including ICI recent publication on technical guide on FAS and royalty.
She is also a special invitee in the Committee of International Tax of ICA and also a proactive member of executive member of IFA, India's Northern chapter. So I would like to thank again learned speaker to grace this event, and would like to hear from her about the words of wisdoms. Thank you very much. Just a minute. Before inviting Smita Patni ji, I would like to brief once again. This is the fourth session in a row and wonderfully attended by Zoom participant as well as the YouTube participant. And we have with us Sachin Sinha ji as an expert of income tax. So before starting of this fourth session, I request Sachin ji to give overview, to say a few words. Thank you so much, Sumit bhai, for giving me this opportunity and being part of this marathon discussion on the budget. I am feeling very privileged, and the session which is just finished by my dear friend Vivek, and the second session which is being taken by Smita ma'am. These both, I think, would be a great session because I understand only income tax and international tax. So I'll not discuss about the other parts, but I'm very much sure that that would be a great session, definitely. And what I can see that almost 70, 75 or 80 participants are continuously there. It gives a very good number, and their patience is tremendous to understand about the intricacies. We have more than 50 numbers watching live at YouTube channel also. So great. So that is to be added then more than 100. So, and as far as concerned, if I can say in one line about the international tax budget, government is now not interested about the foreign imports. Earlier, it has given the red carpet to the investors who is outside India, but now they are saying we don't want that. If you're coming, we will do the valuation as we are doing with the Indian person, and if anything goes wrong, then we will tax you. First of all, number two, they are also not interested for the business trust. So there are so many other things also. If I'm sure Smita ma'am will cover all these aspects. So thank you so much. Thank you, Sumit ji. So thank you, Sachin bhai. And now I request Smita ji to take up the session first, around 45 minutes. And thereafter, if any query, we will take up. Over to you. Thank you, Sumit. Am I audible? Yes, perfect. And my screen can be seen? Yes. You can make it full screen. Yeah, I'll make it full screen. So a very good evening to all of you. At the outset, I profusely thank all the organizers of CASA team, including Sumit Garji, Amit Sharma ji, Asha ji, and our own CA Sachin Sinha ji. Right. Especially for providing me an opportunity to share and present my views on the proposed amendments relating to international taxation, brought out in this budget of Amrit Kal as envisaged by our FM with our learned fellow professionals through this eminent platform. It's always indeed an honor and a privilege. The stage is already being set for this, as there is an ongoing series webcast as laying down with Vivek Newatia ji staring through the direct tax proposals and Dr. Ashok Batra ji navigating through the indirect tax proposals. On an international taxation front, there are no hidden surprises. The budget is not populist, but is certainly expensive. There is an emphasis on the working of nuts and bolts comprising the tax administration system. Albeit, the budget is silent on taxation of digital economy, as well as India's roadmap for implementing the Pillar 2 solutions for global rules of the OECD and the G20. But of course, GIFT City IFSC continues to get more relevance and incentives, and it's a welcome measure, giving India's appetite for global financial transactions. Though there is no tweak in the capital gain regime, but Section 56 has again been twisted in revenue's favor. Overall, FM has proposed a slew of measures to boost financial inclusion with a stellar effort that encapsulates an inclusive growth agenda with an eye on future. Let's now go through the detailed budget. Yeah. So first of all, this is the first amendment which has been done in Section 9. So by deeming virtue of Section 9, a non-resident, when he used to receive any sum of money by a resident without consideration and in excess of 50,000 rupees, that income was deemed to accrue and arise in India, and the non-resident was supposed to pay taxes on that. Now, what they have done is that till now only NR was included in that,
Now they have also included RNOR, that is resident and not ordinary resident, which is defined under subsection 6, subsection 6, and including a deemed resident also, which is defined in section 6(1)(a), which has been recently introduced in Finance Act 2020. Relative was already excluded from this definition. RNOR only in this particular section, although 224 subclause 17A includes sum of money and also includes immovable property. But here we are only, this provision is only restricted to the sum of money or gift and not property. Now, relating to this RNOR, so RNOR subsections, as you all know that section 6, subsection 6, RNOR only if he satisfies one of the basic conditions and neither of the additional conditions, he is an RNOR. Now, as far as deemed RNOR is concerned, this was newly introduced. There were two criteria in this. One was that if RNOR is a citizen of India, his total income exceeds 15 lakhs by virtue of profession or business setup in India, and he stays in India for more than 120 days, but less than 182 days, and he visits in India. That means he's not coming for a permanent residing, then he would be considered as RNOR. Second criteria was that RNOR is a citizen of India. He again exceeds the total income of 15 lakh. His total income exceeds 15 lakhs in India, but his total income exceeds 15 lakh in India by the profession or business setup in India. And the third condition was that he is not liable to tax anywhere in the world by virtue of his domicile. So by virtue of his domicile, he would be considered as RNOR in India. So these are the deemed residents, additional in section 6, laid down in section 6, subsection 1. Coming to the second provision. So these are the presumptive measures. 44BB is related to business of exploration of mineral oil. 44BBB is related to the business of civil construction in certain turnkey power projects. So these are the presumptive taxation scheme whereby 44BB and 44BBB were taxable straight at the gross consideration of 10%, flat 10%. And there was no need to maintain books of accounts. In case you are maintaining books of accounts, then you will be regularly taxable at the taxable slab rates, not the slab rates, are the foreign companies, so 40% straight. So now what generally these companies used to do, that in case there were profits in the books, in case there were profits, they used to straight away opt for the presumptive tax scheme, that is at the rate of 10%. And if there were losses, then they used to get the books audited, and they used to carry forward those losses in the year when again there were profits. So to curb this or to plug out this loophole, what department did was that those losses which used to incur at the time of audit and were set up in the next year when there were profits and they were taxing at the 10%, at the rate of 10%, they stopped that. They said that this setup of losses would not be carried forward in the next year. In case you are applying for presumptive tax scheme, the less brought forward losses would only be set up in case again the next year you are maintaining books of accounts and you are doing audit under section 44AB. This section is applicable in 1st April 2024. Section 56(2)(7)B, as already spoken by Sachinji. So this is basically an angel, as we are saying, this tax provision is relating to a startup. So what used to happen was that any startup used to get investment. To get his investment, there were two types of assessees. One is the angel investor domestic and one is the non-resident investor. So till now, what used to happen was the existing provision was that any angel investor, if he used to put in money or the issue of shares were done to him in addition to the share premium, and that was valued at the valued under Rule 11 UA. So Rule 11 UA basically used to determine the value beyond which the shares could not be issued, and if the shares were issued beyond this, then the startup was taxed on that amount. Now this was only applicable for the resident angel investors and not the non-resident. Now what they have done is, in the amendment, they have proposed that being a resident has been removed, and now so bringing into non-resident foreign investors also under its ambit. Now, basically, although the overall impact might not be very high because IFSC registered, DPIT registered, AIF registered with SEBI will continue to be exempt from this provision. So if you are a DPIT registered investor,
you will not be, you will continue with the same exemption. That means you don't have to value your, you don't have to go with your rule valuation under Rule 11 UA. But the other problem which might arise is that FEMA prescribes a different valuation method, which is international, which is called as internationally accepted method, wherein you can opt for a DCF method or some other method. So the DCF valuation as per internationally accepted method under FEMA might be different from Rule 11 UA as done in the domestic. So the value which is restricted now will only be to the FMV value as calculated in Rule 11 UA. So this might be a problem for the non-resident foreign investors who used to generally bring higher amounts as compared to the who could otherwise bring higher value, higher investments in India. So let us take an example of Byju's. So Byju's, had it been an Indian valuation, the valuation would have been limited to Rule 11 UA, that is the FMV value. But Byju's could bring more value because the value was determined as per FEMA Act. So basically, this is to bring out the venture capitalists inside and the non-resident investors in India, bringing them in the ambit of Section 5627B. Now, this is basically LRS, overseas investment. I think I will just Okay, so I was trying to escape this, but I think I'm unable to do it. No. So anyways, so bringing this particular, this LRS. So what this is basically proposed amendments relating to overseas remittance. So what used to happen that TCS is basically TCS is a reporting mechanism and it is always levied on the expenditure side. The TCS is always deducted on the expenditure side. TDS is always deducted on the income side. So generally, Income Tax Department used to use this TCS provision for the reporting mechanism so that we know how much expenditure is incurred by any assessee and whether there is no escape of any taxation because whether that person is filing return or not. Now, so this LRS, so now what they are doing is that overseas remittance used to be done by LRS scheme. So initially they introduced this scheme in whenever there was an LRS, TCS was deducted and they proposed this started in the year 1st October 2020, initial. That was the first year when TCS was deducted on LRS or the overseas remittance. Now what they have done is now that they have increased the limit in 2 cases. Rather, I would say that they have increased the limit in all the cases other than the 2 exceptions, that is the health and education, where there is no change in the limit. For the other, that means overseas tour package and any other case that is other than the education and the health, the limit is 5%. Limit has been increased to 20% without any threshold from 5%. So now, for example, in case say you go to Thomas Cook and Thomas Cook says that 1 lakh rupees would be your expenditure for an overseas tour. So in that case, you will now have to pay you will have to shed out 1,25,000 to cover up that 1 lakh because 20% would be straight away deducted. That is different that 20% would always come back to you through your TCS credit, I mean at the time of filing return. But for the time being, that immediate cash flows are blocked. Now, other important pointer is that on a macro level, we would say that for the forex reserves, automatically forex reserve will be given more. So from the government standard point of view, the forex reserves will reduce. From a common man, he will have to incur more forex reserves because he has to pay more because most of that 20% will automatically be deducted and he will only be able to remit the remaining 80% outside. So now for the other thing is that there is no clarity for NRO, transfer from NRO to NRE account in case of LRS. Generally, there is no TCS from NRO to NRE, but government has to come out on that. Now, other thing is that in case of online payments, say debit cards. So debit cards automatically, it will automatically deduct it. But in case of credit card, there is a possibility that TCS is not applicable because TCS has to be deducted by the buyer. So in this case, credit card will be swapped out. The payment will go to the bank and then bank will remit to the overseas, the tour package, the tour operator.
So there is a possibility that credit card, in cases of credit card, you might be out of the ambit of TCS, especially to an overseas tour package. But again, department has to bring out clarification on the same. The other thing which I wanted to bring out, that overseas tour package, for example, only the domestic tour operators, it is applicable only on the domestic tour operators. So in case you want to go to Mauritius, say, so any foreign tour operator, you take a tour package from that, he is not liable to deduct that 5% or 20% as of now, withholding tax on your TCS, withholding tax on your TCS. So he would not be liable. So you can go and opt to a foreign tour package without any threshold limit. Now, the other thing which will come out of this, that all those who are working in India, all the tour operators which are there in India, they might also think of in the longer run to operate, to go world. That means to open a subsidiary outside India, and then, you know, by opening a subsidiary outside India, they might give you the packages from there. So in that case, you save that. Now, one very important thing is that the maximum limit is, say, $2.5 lakh through which you can do an LRS. So as of now, there is through which you can do an LRS. So that means that comes to about, say, 2 crore. So automatically out of that 2 CR, 20% is deducted. So practically you are left with 40 lakh rupees is a TCS amount, which will only be credited to you at the time of filing return. So your 40 lakhs is totally blocked. In case you have not filed return, in case you have not paid taxes, the same will be adjusted from your at the time of filing returns, and there is a possibility that you may be left with that. You may not be left with that 40 lakh rupees at all. So these are the provisions for overseas LRS remittance. Now, this is one of the rationalization measures which Vivek ji had also discussed regarding the mutual fund. So there are 2 mutual funds which are described in 1023 subclause D. One is the mutual fund which is registered under SEBI, and the other is the mutual fund which are issued by the PSUs. So what used to happen that whenever there was any payment on the interest on the mutual fund, under section 196, we were liable to tax. The tax was deducted at the flat rate of 20%. So now what they have done is that they have also brought treaty provisions under it, where they say that lower of the 20% or the treaty, whichever is applicable, subject to, of course, furnishing of TRC or Form 10F, would be applicable. Now, this was done because in the last year, in 21, they had introduced 196D for FII. So for FII, this provision was already there. So to align with the FII provision, they have brought out this provision this year. Now, next is 206AB. These are the non-filers. So basically, 2 types of people, 2 types of criteria has to be fulfilled by the specified person. That is, he has not filed the return, or the timing of filing the return has expired, and the aggregate of TDS has exceeded 50,000 rupees. So these 2 categories, and they have not filed the return. So they fall under the ambit of specified person. Now, what used to happen was, of course, from this category, NR not having a P is outside the category of specified person. Other than those, they were supposed to file the returns if they fulfill these 2 conditions. Now, what they have done is that they have, out of this non-filer list, they have excluded one more category, those people who were not required to file return at all. So basically, when we go to section 115A subclause 5, department has it has introduced recently only in last, I think, 2020, where they used to say that if you have earned income from royalty, FTAs, capital gain, or interest, and if the TDS is deducted at the domestic rate and you are not taking a treaty plea, then you need not file any return. So these type of foreign companies now will not have to file return, because otherwise they would have had to file return because they were not excluded from this. Now, I'm sure that the department will come out through a clarificatory note also on this, that those who are not supposed to file return under 115A subclause 5 will also come out of the ambit of 206AB CCA. Now, business trust. So business trust, as we know that business trusts cover 2 sections. A business trust covers REIT and InvIT, which are defined under 2 clause subsection 13 capital A. So there are basically two amendments which have come into this. Now, what used to happen that
whenever business trust used to provide, that means REIT and InvIT used to provide any interest income that is referred in section 1023 FC, interest income, and dividend income referred under section 1023 FC, and the rental income, that is REITs, referred under 23 FCA, and section 1023 FE, which is for InvIT. So TDS was whenever business trust used to pass on the provide the rent, interest, and TDS, rent, interest, and dividend to the unit holders, then they were supposed to deduct tax on it. So that was there was no applicability of lower tax. They were not given that benefit. Now what they have done is that they have brought this under the ambit of section 197(1), where you can also avail lower TDS on these lower TDS certificates on these also. So you can apply to the department and avail lower TDS or nil certificate from the department, and you don't have to deduct TDS on the income received by the unit holder under 115 UA, which is again governed by income of 1023 FC and FCA, which I have already explained. Now the other one, the second amendment which has been done. So now business trust, although it's a very complex structure, but I will try to explain it in a simpler form. So business trust has 3 levels. So business trust, that means REIT and InvITs. So there is a foreign investor or a foreign unit holder who invests, who gives his money to this business trust, which is a REIT or InvIT. This business trust further opens or sets up a SPV, that is a subsidiary, that's a special purpose vehicle, where it holds, say, more than 51% of the shareholding. This SPV then invests all those funds which come from the foreign investor through the route of business trust in different places where it from at equity or debt. So from there it earns interest, dividend, and rentals also at times, in case this SPV is investing in a property or something. So now what used to happen, that's this business. So whenever SPV used to pass on this amount, that means the interest, dividend, it used to pay applicable taxes, and then it used to pass on to the business trust. But business trust was a pass-through entity. So whatever business trust used to receive from this SPV, that is interest, rental income, or dividend, it used to automatically give it to the unit holders, unit holders as it is. So unit holders were supposed to pay taxes on those. So basically there were 4 categories: interest, dividend, rental income, and repayment of debt. So out of the 3 categories, whenever business trust used to give it to the renter, to its unit holder, business trust was a pass-through entity, and the same was taxable in the hands of unit trust also, unit holders also. Business trust, of course, was exempt under 1023 FC and FCA, as already explained. So now the 4th category, that is the repayment of debt, which business trust, that is the REIT and InvIT, used to do it to the unit holders. That was neither taxable in the hands of business trust and neither taxable in the hands of unit holders. That means the ultimate overseas foreign investors. So now what they have done is that they have proposed to change this, and they say that whatever repayment you are going to do, the initial investment which used to come from this foreign investor, which was invested in business trust, whenever you are going to repay it, it would be treated as taxable under income from other sources. So any repayment which is going to go from business trust to a unit holder will be taxable under section 56 IFOS. Now, to my understanding, this doesn't seem the correct approach. This should be considered as a capital gain, because repayment of debt is always a capital gain. So in case you are repaying a debt, so basically the unit holders used to give, say, 100 units. I mean, the whole amount which used to come from the different foreign investors, business trust used to divide it into certain units. So these certain units when were repaid, so they were supposed to reduce those number of units, and accordingly a capital gain would be derived. So for instance, they have invested say $1 lakh, and $50,000 have been repaid. So accordingly, the number of units would be reduced, and a capital gain indexation, capital gain can be calculated. Now what they are saying is that this cost of acquisition will be directly reduced from income from other sources. That means whenever you are doing a repayment, the total amount which has been invested in proportion to that
That will be reduced under IFOS also. That means income from other sources also. But no long-term indexation benefit will not be given, because automatically it is considered as a characterization is different. It is considered as income from other sources rather than income from capital gain. So the basics of this only goes for a toss. So this is the reason that I think that department needs to think about it again, and characterization of this may be an issue for the long-term investors, and it will definitely dampen the overall boost of the foreign investor society, and they would not like to invest through REIT or InvIT also, which was one of the most, one of the best investments in India. Now, the other point is also that even if it is considered as income from other sources, then most of the treaty give the right of taxation to the source country. So then also the rate should have been MMR rather than the 40% plus taxes, which might be an IFOS rate. So then taxability should have been an MMR, but Income Tax Department has yet to clarify on these issues. So this is IFSC, International Financial Services Service Center. So now basically there are 4 changes which have been done, 4 amendments which have been done. So IFSC is the most IFSC GIFT City, which is located in Gujarat, is the most sorted which is the most sorted place, or which is the most sorted fund locator in India, because almost everything is exempt under IFSC. So now what they have done is that there was a sunset clause where the transfer of its asset from the original fund that is located outside India, or from a wholly owned subsidiary, wholly owned SPV located outside India, had to come to India. The sunset clause for that was 31st March 2023. They have extended it for 2 more years, that is up to 31st March 2025. There will be no capital gain. It would be tax neutral, and all the funds, they can relocate themselves to an IFSC Gujarat GIFT City for next 2 years also without any capital gain on it. That is the first amendment which they have done. So that's a welcome change. Secondly, now what they have done is that IFSC generally, whenever you had to incorporate a company or a fund in an IFSC, basically 2 registrations were, registrations were required from 2 places. One is SEZ and other is IFSCA authority. So now what they have done is that they have opened a single window. They plan to open a single window where all the registrations and approval from IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, RDI, everything would be done from here only. You don't have to go to SEZ at all. So that is again a welcome move, because for foreign investors, it is very important that if there is a single window and everything can be operated from that one single window itself. The third change which they did was that whenever a foreign investor, that's a unit holder, used to invest in that investment banking unit of IFSC through ODIs, that is offshore derivative instruments. So ODIs were initially known as P notes, that is participatory notes at the time when SEBI used to issue them. So those notes now for IFSC, they are called as ODI, that is offshore derivative instruments. So it was basically IFSC used to tax it in the hands of unit holders, the interest, dividend, and the rental income. So now what they have done is that basically they were taxed twice. One is at the hand of IFSC and other in the hands of ODI. So now what they have given is that they have given an exemption to the unit holders, that is the foreign unit holders, those who are actually investing through ODI route, that means through ODI in IFSC banking unit, that they will not be taxable in their hands if the same is taxable in the hands of business trusts in India itself. So basically 1040 used to exempt IFSC, that is a business trust, they used to exempt IFSC located in India. Now they are also exempting the NR who are actually investing. So there is a dual exempt subject to that IB has already paid tax on that investment in India. That means IFSC, that the business trust, that is the REIT or InvIT, has already paid taxes on that
I mean, the SPV has already paid taxes under that. So IFSC would also be exempt. That means business trust would also be exempt, and that unit holder would also be exempt, subject to that there is already one taxation done at a lower level in India. Now, another important thing which they have come out is that initially this was also in the new regime also, that is 150 BAC. This was exempted. This was provided as a deduction to the IFSC, the funds located in under IFSC, up to 31st March 2023, up to on or after April 2021. But this time limit has been limited up now, is limited up to 31st March 2024, and new regime is also there in this. Basically, it was already there on the old regime. Now, new regime is also there from April 1, 2021 till April 2000. If all the investment which have been done up to 31st March 2021, you can also opt for a deduction under a new regime in REIT and InvITs also. Besides that, they have also done that these participatory notes, that is an ODI, which are invested under IFSC, they will now be recognized as a valid contracts. So, long time back, SEBI had banned these participatory notes in the year 2017, but now I feel that participatory notes have again come into play. So this is proposed amendments relating to the transfer pricing. So basically 3 amendments have been done in transfer pricing. So one is that whenever AO or CIT appeal used to ask the assessee to furnish the TP study report, the time limit which was given was 30 days from the date of notice. Now what they have done is that they have reduced this 30 days to 10 days only, that within the 10 days from the date of receipt of notice, the assessee is supposed to furnish that TP study report. Though, even today, if an application is filed by an assessee to an AO, then he can get an extension of time for another 30 days. So initially it was 30 plus 30, now it is 10 plus 30 days. So basically, we should be very mindful of preparing our TP study reports immediately once we do the before filing of our Form 3CE. The other is 92BA, that is specific domestic transactions. So there were 6 limbs in it: 80 ATIA, 80 is relating to deduction of income, 80 IAs for SEZ units, Chapter 6 is again 10 days SEZs, and 115 BABs new manufacturing companies, where a concession rate of 15% was given, and any other transaction as may be prescribed. Now they have added one more new limb in this, that is clause 5B, which is for the cooperative society, that if there is any transaction between a cooperative society and its related party, and there is a close connection, and if the threshold exceeds 20 CR, then the same would be falling under, same would be covered under 92BA, that is Form 3CEB has to be filed in this case. This is done to align, because this year only they have introduced a new cooperative, they have given a new concessional rate to cooperative society under section 115BA. So just to align with a new manufacturing company which was giving a concessional rate of 15% under 115BAB, they have brought this also under the ambit of specific domestic transaction, subject to the threshold of 20 crore. I mean, if the threshold exceeds 20 CR. Now the last pointer of 94B. So 94B, as we are all aware, is the limitation of interest, paid to an overseas entity, that means an overseas lender, overseas AE lender by an Indian entity. So this limitation of interest basically was introduced as a thin capitalization measure under BEPS Action Plan 4. This used to say, now what they have done is that whenever we used to pay, whenever an Indian entity used to pay its foreign entity, foreign lender, which is a related party, or a PE of a foreign company, whenever a PE of a foreign company was paid, so they could not, the interest was limited to 30% of the EBITDA. The threshold starts from beyond 1 CR. If the interest is more than 1 CR, and if you are paying to your foreign lender, which is an AE, you cannot remit more than 30% of the EBITDA of the domestic company. Now there were 2 carves out of that. One was that business
the person who is engaged, the assessee who is engaged in the banking of business, and the other is the insurance sector. The third additional carve out, which now they have bought out, is NBFC, which is defined under the RBI Act and which is also explained under Section 36(1), subclause 7A. So this was the industry has been representing for NBFC for a longer time, and finally this has come into picture. So I think this is all from my end, well within the time. So any questions? Hello? Thank you, Smita ji. Questions हैं आए हुए? Yeah, please tell me. What I can see is कि mainly LRA scheme TCS को लेकर के कई सारे questions हैं. I know that can be the only. Total 15 minutes available. Yeah, I know, because there are 10 whatever, all the international taxation I have covered. There is nothing left. Yes. Although I know there is one more provision. कोई कह रहा था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में चेंजेस नहीं है, मैंने कहा इतने सारे तो चेंज I have there's one more I would tell you one more amendment, which is actually not an amendment in this budget proposal, but what they have done is that there was a clause 194 LC and LD where there was 5% tax rebate available to all the infrastructure investments. So a lower TDS was available there. Now that is only available up to 31st March 2023. So they have not extended it this year. I mean, that is only applicable up to July 1, 30th June 2023. So from July 1, 2023, they will also come under the normal taxation scheme 194 LC and 194 LD. But subject to that, department comes out with some clarification on that. Of course, in those sections, there was specified that in case those agreements have been done prior to 30th June, then, again, those units have been bought prior to 30th June, then you can again forgo that. So that is for 194 LC and LD, but that has not come in this budget, but they have not extended it in this budget, that 5% concession to 194 LC and LD. Okay. Now tell me. Starting with Sangeeta Gargji question, are we eligible to do valuation of such shares being CA? Are we eligible to do, can I see the question? I think that valuation part, जहाँ पे non-resident 56 to clause 17 का कौन सा amendment आपने discuss किया था? Where you were discussing about 11 UA rule कि income tax में valuation is on DCF method. This or is fair value method. So maybe she is asking ki whether CAs are eligible. No, CAs are not eligible. The notification had come long back. I think that was the year 2018, May 2018, a notification had come whereby CAs were not allowed to do any valuation under 5627. Only merchant bankers are allowed. But in PAMA, we are still allowed to do. Chartered accountants with the eligibility of, I think, 10 years or more are still allowed to do FEMA valuations. Maybe she is asking for FEMA only. FEMA valuations, we are still allowed to do. Okay. Not an issue. If the standing of the CA, I think there are some prescribed conditions, the CA should be more than 10 years of practice or something. The next question is from Richa Goel. Currently, we have to pay 5% TCS for outward remittance money transferred to abroad. If the amount is more than 7 lakh in one financial year, I see that new budget has made changes to this. The changes, what is the question? We have to pay 20% TCS for any amount of remittance. I also see that from 1st July, since the current financial year has not ended. Okay. Pay 20% TCS for any amount of outward remittance. I also see that this will come into effect from 1st of July. Yeah. Since the current financial year has not ended yet and next financial year starts next month, can I make 2 individual transactions, 7+7, in the month of March and May and expect no TCS to be deducted? Yeah, absolutely fine. Up to 30th June, you can do anything. Even you can book your foreign travels now only with a tour operator up to 30th June for next 2 years. Should not be a problem. But from 1st July 2023 going forward, TCS of 20% without any threshold will come into play. Except for education, 0.5% in case of education loan, and other education will fall under 5% and plus loan. Medical will also fall under 5%. Which one? Medical. Yeah, medical will fall under 5%. Other than on which education loan is there, that is 80E, that will be 0.5%.
Other than that, any other education will fall under 5%. There was one more, there's one thing which I would like to add is that this, whenever we make an LRS, so we have to write the purpose of LRS for what we are doing the remittance. But I think the department should come out with some clarification, because, you know, whatever we write, nobody knows what actually we are going to use for. So that clarification is not there. Whatever, as of now, whatever you write it in the paper, that means whatever you write it and give it to the banker, bank will assume that you are transferring that amount for that respective purpose only. Until unless, you know, something comes out from the department. Amit ji, can you take further queries? Yeah, sure. So another query is from Ashish Groverji. He is saying that in overseas tour package, tour operator or bank through which payment made liable to collect TCS, payment done to overseas tour operator by resident through Indian tour operator, whether then also TCS be applicable. Yes, I already mentioned that in case of Indian tour operator who is residing, who is a resident of India, tax resident of India, he has to deduct TCS at the rate of 20% without any threshold limit. Now, for example, you go to Dubai and you ask a Dubai tour operator to make your tour, to plan your tour package. In that case, the Dubai operator might not deduct TCS because he is not a resident of India. So there you may go out without the threshold. Right. And second question from the Ashish is also there, that he's saying that if tour operator not charging for tour package but disclosing the details of expenditure separately in its invoice and charging his fees separately in invoice, then also do the need to collect TCS on whole amount. Yes. So now what they have come is that, for instance, you book your own flight tickets directly from the air authorities or, you know, any airlines. Then in case no TCS. But if you go to the overseas, if you go to a tour package, say for example SOTC or Thomas Cook or anyone, then on the total consolidated amount, irrespective of the fact whether the expenditure is X and the hotel bookings is Y or the flight tickets are Z, it's a comprehensive package. So on the comprehensive package, 20% flat without any threshold. Okay, so one question is there from Ankit Mittalji, but he is saying that any possibility to get exemption of income tax by establishing service export business at some specific place in India. So I exactly didn't understand what he. Can you repeat the question? So he is saying any possibility to get exemption of income tax by establishing service export business at some specific place in India. IFSC So gift city. But that is only for non-residents. Non-resident, and that too for the limited set of businesses, right? To my understanding. No, for IFSC gift city, if you invest through business trust, that is REIT or InvIT or whatever funds they have incorporated. So IFSC is a tax haven for India. And lots of jurisdiction from you know, Mauritius and Luxembourg or Singapore, they are transferring their funds to this. They are transferring their assets and funds to this IFSC gift city because they have got a lot of new proposals and they are making it at par with the world. So IFSC gift city is a new tax haven for any non-resident investor. And how exactly it works means if there is a manufacturing company having plant in out and they are having registered office in gift city, and whether they can run that plant outside gift city and get and avail the exemptions and benefits and all. No. So the foreign trust, so basically what they do is that whatever investments have to directly pour and have to come in the IFSC gift city only. You cannot create a plant outside IFSC gift city, that is the dedicated jurisdiction, whatever it is. It has to be registered in IFSC gift city only. Then only you can have the benefit of it. All the investments. So essentially service sector and all can avail the benefits. And I'm sure for manufacturing also it is there. Okay. It's a very but the plant should also be there in the gift city itself. Yeah, it's a very complex structure, and as I told you, you know, there are 3 layers. One is, you know, that IFSC business trust, and then there's a unit holder which is sitting outside India, that is a foreign investor, and then there is a 3rd layer of SPV also, or in this case IFSC, there would be directly 2 layers only, IFSC and the foreign investor who is going to come and do the investments in India. Yeah. So but REITs and InvITs would be the major player for that. Yeah, so another question is relating to the REIT itself. So Sangeeta wants to know, under REIT as well, resident also receive debt without TDS.
we reduce it from cost as of now. So I don't know what, I think this question require rephrasing. Was Smita ji, did you get the question? No, So I could she is not. writing under REIT as well resident also receives debt without TDS. We reduce it from cost. I think that is just a statement of her. I think there is no question in that. Yes. Okay. Because it was when ma'am was discussing about that rate and. Okay. So Ashish ji again is asking that tour operator not having turnover of more than 1 crore, so not liable for TDS. TDS provision, but because TCS applicable, do he need to take 10 number? Yes, for TCS, there is no threshold, there is no tax audit limit because TCS is basically on the expenditure side. It has got nothing to do with the income. So TCS, the buyer has to deposit. He has to deduct from the person whom he is receiving, and he has to deposit in his through his PAN number. But I'm sure TAN number must be required for this. Okay. Kunalji is asking that if we are traveling abroad without taking tour operator services, so I think he wants to ask. No Yes. TCS. Only if you are taking a tour package, but if you are remitting in some of your bank accounts for any other purpose, if you are remitting outside India, then TCS will be deducted. Yes, because generally in these cases, what we do, we used to take help of Western Union and all, and buy the foreign currencies. Generally. So foreign currencies, there is no TCS. Yes. If you buy say a debit card, and now what happens is that you take a card which has the amount value converted into forex, basically a forex card which is called. So as of now, to my mind, forex card will not have any TCS provision. Okay, so Vivek Jain ji wants to ask on which cases 0.5% TCS is still applicable. So I think so there is 0.5 or 5 he's saying. 0.5% he's writing. So 0.5%, as I already told you, only for the purpose of education, where there was a loan and the same was claimed under section 80E. Education loan. For that, if you are transferring any amount and for which you are claiming 80E, that is only on only that amount TCS of 0.5% is deductible. For other education, that means if you are making payment for any other education and transferring it outside India, then the rate of 5% will come into play. Yeah. So Asha ji, I think questions are done from our side. So Sangeeta ji has clarified. Yes, that was the understanding. One last question is there. Is there any change on rate receipt related to debt? Related to debt. Related to debt? Yes, this is the question. Can you repeat the question? Is there any change on? Yes, Amit, please. Is there any change on rate receipt related to debt? So basically, I already explained that for REIT, there have been two provisions, that is 115 UA, where this business trust means REIT and InvIT. That is 2 subsection 13A includes REIT and InvIT, which is other name of business trust. So basically, business trust is a total name. Business trust has lots of funds. Out of that, REIT and InvIT are 2 funds. So I have already explained here that 197 they were not giving any TDS deduction. TDS was liable to deduct under section 115 UA. Now they have so that was at a flat rate, whatever rate was applicable for interest or dividend. Now what has come is that 197 has come into play. That means you can take benefit of a lower TDS under 197 also for REIT, InvIT, notified sovereign funds or pension funds, which are there under 1023 FC or 1023 FCA or 1023 FE. So business trust, if you go to the definition of 213 subclause 2 subclause 13A, you will understand that it is business trust includes REIT and InvITs. She want to ask her query in person. So I guess Sangeeta ji, in case you can wait for the end of session, then we can in the just end. Amit, She can just a speak to minute. me one-on-one. She can last session में मैं ले लेता हूँ संगीता जी की query. Sangeeta ji, you can ask right now. Thank you very much, Sumit ji. Actually, my question was related to the second claim, Samita ji, wherein we are saying that if the debt distribution is there, then also you have to pay the tax as income from other sources.
Right Yeah. now, when we are getting payments from REIT, this DLF का जो है, one of my client is getting. So in that we are not offering that to tax. We just keep it now. Here, what I am getting is that it is gonna be income from other sources. And you said it is for non-residents. So I'm a bit confused because we are resident. No. So as I already explained you that business trust, REIT and InvIT are set in India. There is a unit holder which is sitting outside India. So there are 3 layers. So that SPV gives to REIT InvIT transfer it to the non-resident investor. So now what I'm saying is that there were 4 categories, that is rent, interest, dividend, and repayment of debt. Now what they are saying is that this repayment of debt initially was taxable, not taxable in both the hands, that is even in the hands of business trust as it was a pass-through entity, and also in the hands of the foreign investor who was sitting outside, who actually invested in that business trust through REIT or InvIT, and this business trust further invested in SPV. So your client must be this SPV who is deducting tax and paying to the business trust. So there it is still taxable. This repayment of debt, when it goes from business trust to the outside, it was non-taxable in both the cases. Now what they are saying is that going forward, this will be taxable subject to that you are doing a redemption of investment. That is, the number of units are equally deducted. What they used to do is that the units were never deducted and they were doing repayment of debt. So that was the problem. Now you have to reduce the number of units equivalent, then it will be considered as redemption. Otherwise, it will be considered as repayment of that debt, which will be taxable under IFRS. Okay, thank you. Thank you. Yeah. So the last question is from Tushar Geraji. He is asking if we are paying to a small travel agent and he is paying to a large travel agent who is booking tour, then who will deduct TCS? Pay TCS, I guess it should be. So the first person who is collecting from the buyer, the first tour operator. Yes. I have one question. One last question. And going forward, for the second tour operator, if say he is sitting outside India, then EL provisions may come into play. EL. Yes. That is equalization levy. Right. Ashok, close करें. Already I can see it's past 5. So with this, thank you so much, Smita ji, for your wonderful deliberation in this 5th session. Fourth session. So we should also thank you. Thanks. First time इतनी ज़्यादा study हो गई है already. In fact, I was studying for these all international taxation provisions from last 3 days, because even I was not aware that there were so many, provisions. मैम वो बाहर तो यही बात चल रही है ना कि कुछ आया नहीं है इंटरनेशनल में. नहीं सर, बहुत कुछ आया है. अब सबको पता लग गया बहुत कुछ आया है. हाँ, अब पता चलेगा ना फ्यूचर में कि भाई क्या-क्या स्टडी किया और क्या रह गया ऑलरेडी. बेसिकली वो है कुछ प्रैक्टिकली थोड़ा लेसर सेट ऑफ क्लाइंट्स में यूज होते हैं ये वाले सेक्शन. एक ये है टीसीएस. यस, एंड अगेन टीसीएस व्हेन वी टॉक अबाउट टीसीएस दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर. तो कुछ आई थिंक टीसीएस स्टार्टअप में जो हुआ है, दिस इज स्टार्टअप में जो डिसाइड हो जाता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. We'll plan in future again. So today we are completing this 4th session, and thanks to Smita Patni ji and a token certificate of appreciation from Team Casa for your wonderful deliberation as always. Sir, spelling is still wrong. Okay. As always, spelling is wrong. जैसा कि आप भी फॉलो करते हैं कि always ready to serve professional and Casa. So thank you so much, madam. And we'll modify the spelling. Thank you, sir. And now we also thanking to Sachin Sinha ji for his cameo role. Yes, Sachin ji is here. I think he will join again. So I'm not thanking him. He is behind the curtain. He's a test batsman. Sometimes he plays T20 innings. Right. So it is because of Sachin ji only we are all here, sir. Yes, right. Exactly. Thank you, Smita ji, and thank you, Amit ji, for taking up this 4th session. Again, I am welcoming all for this 5th session and one of the important session. Dheeraj ji is here to moderate the session. Dynamic speaker, my elder brother, CA Ajay Singhal ji is here. Ajay ji, are you there?
Ajay Singhal ji, I just don't think yes. I think he joining. He joined. कुछ प्रॉब्लम हो गई लगता है. Ajay ji. Yes, Ajay ji is here. So welcome to you, Ajay ji. सर आवाज आ रही है आपको मेरी? आई थिंक वीडियो सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट दोबारा मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा क्या? हाँ, वीडियो नहीं आ रहा आपका सर. And our today's in this capital market projections discussion, we have moderator DS Agarwal ji, panelist Kanika Sharma ji, Asha Sharma ji, Rajesh Ritolia ji. Rajesh ji, are you there? And anyone want to join in the discussion can part. Definitely, it's a marathon series of webinar where we are discussing different topic in different hours, and who have joined and participated in this entire day, really hats off to each one of you for sparing your valuable time and learning in this series. This session is very much important as capital market projections. साथ में अजय जी ने अजय जी, are you there? I will restart now. Yes. अभी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वैसे भी कैपिटल मार्केट ही बना हुआ है. बिल्कुल अमित जी, यही बात हो रही थी अजय जी के साथ कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आज की डेट का कैपिटल मार्केट है, जहां पर कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें और क्यों इन्वेस्ट करें, ये सारे क्वेश्चन. I am hoping in the last many of the question would be whether what is happening to Adani, whether we should liquidate the shares and all to continue with to see how the things are happening or unfolding. So many questions are there like this कि हम किस एरिया में क्या करना है, and definitely it is hope and अजय सर आ जाए, उसके बाद सबकी कंफ्यूजन एक बार अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड. यही मैं कह रहा था कनका कि अजय जी डेफिनेटली विल क्लियर ऑल द डाउट्स इन दिस कैपिटल मार्केट एज ए प्रोफेशनल कि हम किस लेवल पर हमें क्या करना चाहिए और कहाँ तक दूर रहना चाहिए. जस्ट ए मिनट, अजय जी का फोन. यस अजय जी है रीस्टार्टिंग द सिस्टम, एंड इन द मीन टाइम कोई और सजेशन, हमारे पास एक और सेशन है इसके बाद, कैपिटल मार्केट के बाद जुडिशियल एनालिसिस बाय एडवोकेट सीए कपिल गोयल जी. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी with regard to judicial assessment, reassessment, you can post in the chat box. We will take up. उससे पहले कैपिटल मार्केट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, you can post it. Next general query we people can post. We can take up in the end or of the offline also it can be taken. Both the session is going to be a wonderful discussion in next 2 hours. संजीव महाजन जी यूट्यूब पर पूछ रहे हैं कि can we discuss hidden work research? Definitely. I told you that these are going. opinion जरूर लूंगा इस टॉपिक पर. Apart from this, अभिजीत आनंद जी ने special thanks to deliberation as Vivek Newatia ji, and again wonderful presentation by Smita ji, Gaurav ji. Dheeraj ji is also here. Dheeraj ji is also expert in the capital market, so he will moderate today's session. Dheeraj ji, are you there? Yeah. Yes. Hello yes. everyone. Good evening to all of Hello you. Dheeraj. Hi, Kanika. Hi.
So Ajay ji has also joined, already joined. Thank you, Ashok sir, for your feedback. Excellent seminar, and I hope everyone has enjoyed and is still enjoying the session. 2 सेशन हमारे पास और हैं, जैसा कि अभी बताया। अजय जी कनेक्ट हो गया आपका? वीडियो उसकी कुछ सेटिंग डिस्टर्ब हुई है। मिरर माय वीडियो हो गया, माय वीडियो। ओके, वीडियो के थ्रू नहीं हो पा रहा आपका। अजय जी आप फोन से एक बार ट्राई कर लो अगर पॉसिबल हो तो। एक कुछ रेशियो डिस्टर्ब हुआ है, शेयर स्क्रीन ऑडियो। अदरवाइज विदाउट वीडियो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को सुनने में इंटरेस्ट ज्यादा है। I will take 1 minute more. Yes, Ajay ji, okay. Thank you Tarun ji for your feedback. Thank you Kavi ji, thank you Shyam ji. Many feedbacks are coming. कहीं ना कहीं जब प्लान किया था आशा जी से, सचिन जी से जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, वी थॉट कि कैसे प्लान करेंगे और कितना डिस्कशन हो पाएगा या नहीं। हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पॉइंट था कि टॉपिक को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। अमित जी का व्यू है कि जब तक अजय जी ज्वाइन कर रहे हैं, धीरज जी आपकी ओपिनियन अबाउट अदानी ग्रुप वर्सेस हिडन वर्क, सो शेयर योर ओपिनियन। नहीं तो हम पर्टिकुलर स्टॉक वाइज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे क्या? मेरा एक ये भी नहीं, जनरल एक ओपिनियन, क्योंकि धीरे जी स्टॉक वाइज नहीं कर रहे अभी तो, वैसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हाँ ओपिनियन पूछी जा रही है कि रिपोर्ट के बाद और जिस तरीके से अब 2 दिन में वापस मार्केट दिख रही है तो उसके ऊपर रिपोर्ट पूछी जा रही है अभी तो। देखो अडानी ग्रुप पे आज भी अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा तो एसबीआई ने नहीं सॉरी आरबीआई ने और सेबी ने यही बोला है कि बैंक्स का जो रिस्क इसके अंदर है ओवरऑल 1% से भी नेग्लिजिबल रिस्क इन्वॉल्व है बैंक्स का, अडानी पूरी अडानी ग्रुप के अंदर 1% से भी कम का उनके अंदर उन्होंने फंडिंग दी हुई है एक तरीके से। तो वो तो यही बोल रहे कि भी रिस्क है ही नहीं। और अगर पीछे की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पहले भी ये पास्ट में इवेंट्स हुए हैं सेम इसी टाइप के कि यूएस के किसी रिसर्च कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं या किसी और फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनीज पे एलिगेशन लगा के ताकि उस टाइम पे एफआईज एंटर कर सके। तो ऐसा ही कुछ मुझे इस बार भी लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मे बी ये डिफरेंट भी हो सकता है किसी और के साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि अडानी ग्रुप में कहीं कोई प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में ये यहाँ से मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ने वाला है आने वाले 2-3 साल में। मैं इसी पॉइंट पर तरुण क्वात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ओपिनियन लेना चाहूंगा। ही इज आल्सो वर्किंग इन दिस कैपिटल मार्केट। तरुण जी प्लीज। यस सर। सर अडानी ग्रुप में इश्यू तो थोड़े हैं, ऐसी बात है, मेरा पर्सनल व्यू है, पर कोई ना कोई एग्जिट, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने एग्जिट नहीं लिया है। सबसे प्लस पॉइंट यही है इसमें। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एग्जिट करता तो एग्जिट थोड़ा लगता, डाइसी पोजीशन होती, पर अभी तक किसी ने एग्जिट नहीं ली, सब होल्ड। सिर्फ इन्वेस्टर ने सर शॉर्ट सेलिंग की है जो कि पैनिक की वजह से, और जितने एफआईआईज ने जिन्होंने करा है, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग सर, जिन्होंने किया है वो बाहर हैं इस वक्त, बाहर मतलब बेसिकली शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं है यूएस में उनके साथ। जिन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पर, वो खुद भी बाहर है, वहां नहीं कर सकते शॉर्ट सेलिंग वहां पर। बिल्कुल कोई ना कोई तो एंटर करा ही होगा सर, ब्लॉक डील भी हुई है उस स्टार्टिंग में उसकी। जी
Anyone else want to share on this? One, two queries are there. Just a minute. How much correct was Hindenburg? सौरभ जी, ये क्वेश्चन तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग कितना करेक्ट था, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है और व्हाट इज द वे अहेड. Apart from this, any other concern, any other question? Sangeeta ji, make investment right now. At your own risk, Sangeeta ji, we can make investment in capital market. अजय सर का ना इस टाइम पे बिल्कुल वैसे वेट हो रही है जैसे वो किसी मूवी में सुपरस्टार की वेट होती है ना कि हाँ अब एंट्री होगी, अब एंट्री होगी, अब एंट्री होगी. तो इस टाइम पे अजय सर की बिल्कुल वैसे वेट लग रही है और शायद अजय सर ने एंट्री ले ली. जस्ट मिनट में मोबाइल पर स्टार्ट कर लेता हूँ. Kunalji, we definitely you are correct. As a professional, we should analyze, we should consider all the plus minus before investing and analyzing the capital market. हम किसी रिपोर्ट के बेसिस पर जब तक हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज या इंडियन गवर्नमेंट इस चीज का सिग्नल ना दें कि कुछ गड़बड़ है, we should not rely, we should not consider correct views of the outside overseas agencies. और कहीं ना कहीं ये फैक्ट हमारे सामने आया है. Sir, one suggestion, sir. Yes, Tarun ji, please. स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिकली सभी करते हैं यहाँ पर कैपिटल मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है. फिर इट एडवाइजेबल टू मेक द शॉर्ट लिस्ट, मतलब बहुत कम रखना चाहिए स्टॉक लिस्ट में. जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना आप वॉच नहीं कर सकते उसको. इट विल बी ऑलवेज बेटर टू मेक इट लिस्ट दिस शॉर्ट वन. मे बी सर आप कोई भी अच्छा शेयर ले लें, कोई भी अच्छा ले लें, मतलब किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी, मतलब उसे पीक पे उठा लें, पर इट शुड बी, मतलब अच्छा रहेगा कि आप इसमें शॉर्ट लिस्ट रखेंगे उसको वॉच भी कर सकते हैं, उसको. करेक्ट एडवाइस तरुण जी. अजय जी, प्लीज अनम्यूट. Yes, yes, sir. Welcome, Ajay ji. Thank you. We all are waiting for your precious advice on this capital market. We are having 40 minutes from here. Hello, sir. Hello, sir. And as a panelist, we have with us Dheeraj Kanika ji, Asha Sharma ji, and Rajesh Sitolia ji. So I straight away request Dheeraj ji to share, Dheeraj ji to brief about Ajay Singhal ji. नमस्कार अजय, आपका स्वागत है कासा के इस इवेंट के अंदर. अजय जी को तो सभी लोग भी जानते ही हैं. ये प्रोफेशन को सर्व करते हुए इन्हें 30 साल हो चुके हैं ऑलरेडी. और हमारे NIRC की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ये काफी टाइम से, पिछले 2 टर्म में ये NIRC के अंदर रहे हैं, एक्स सेक्रेटरी और एक्स मेंबर भी. फाउंडर हैं स्टॉक्स के. इसके अलावा सर के पास वेरियस डिग्रीज भी हैं, FCA, ACS, CMA, LLB, MBA और वेरियस मैनी. तो मैं वेलकम करता हूं अजय जी का.
अब ओवर टू अजय जी. Thank you, Dheeraj ji. And first of all, I would like to say thanks to my younger brother Sumit and the entire team, Kanika, DS Agarwal ji. I think still you are putting next to my society, na? Not far. Yes. And Sumit has also come to our society, so we are very Pleasure to close. you. So, and Tarun ji, आपके आसपास है सर. तो सभी को अब यहाँ पर आईपी एक्सटेंशन में इनवाइट कर लेते हैं, यहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं. गुड प्लेस टू लिव. So I think already we have lost 15 minutes, but I will tell you this topic is as such it can be finished in 5 minutes or 10 minutes, or it cannot be finished in 10 hours even. So I can speak in length, but today considering this something relating to the budget, I think everybody should be interested here in the stock market. Am I right, Sumit ji? Yes, correct. Yes, sir. अभी जो बात चल रही थी अडानी के इशू पर, उस पर मैं बाद में आऊंगा. मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को, बिकॉज वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं ये फील हुआ कि इस बजट में पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट के लेके कोई प्रोविजन आए हैं? सर आप मैं बताइए. ये चाहता हूं कि ये जो हमारा आज का जो डिस्कशन है ना, ये इंटरेक्टिव रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा. और ये मेरा जो आजकल जो टॉपिक चलता है, तो मैं तो 1-to-1 अगर इंटरेक्शन फिजिकली हो ना, तो कैपिटल मार्केट को समझने के लिए बहुत चीजें चाहिए होती है. Exactly. एंड यूट्यूब पर भी पार्टिसिपेंट है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में आप डालते जाएं, मैं यहाँ डिस्कस करता रहूंगा सर के साथ. हाँ जी. तो दैट विल बेटर कि हम सब लोग मिलकर के उसको डिस्कस कर सकते हैं उसके लिए. तो अभी हम देखा जाए, जैसे कि बजट से पहले हर जब भी कोई बजट की प्रिपरेशन होती है, तो कहीं ना कहीं एक डिमांड आती है मार्केट से, या कहीं ना कहीं एक रूमर्स क्रिएट हो जाती हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ने वाला है या खत्म होने वाला है. ऐसे वो पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता था, ये कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है या जाने वाला है. तो फाइनली गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया. और टैक्स किस हिसाब से लगाया है? जो जैसे जैसे हम हमारा अपनी इनकम में ऐड करेंगे, उस इनकम को और स्लैब्स के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा. या तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, या 5%, 10% और डिफरेंट कैटेगरीज में आएगा. और इस बार तो आपने देखा बजट में हमने सारा इनकम टैक्स भी कवर किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कवर किए हैं. तो इस बार तो इन्वेस्टर के लिए और क्या सभी के लिए टैक्स की लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है. तो आई थिंक 15 लाख तक तो हमें काफी कम टैक्स देना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली सब ये क्या है? अगर मैं बजट के हिसाब से जाकर देखूं, तो देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन आई कुड सी व्हिच डायरेक्टली स्पीक टू द बजट ओनली, सॉरी टू द कैपिटल मार्केट. बट क्या हमें पता है कि विदाउट कैपिटल मार्केट, विदाउट अफेक्टिंग द कैपिटल मार्केट, देयर कुड नॉट बी एनी इकोनॉमी. अगर एक किसी कंट्री की इकोनॉमी सस्टेन करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो ऑब्वियसली दैट इफेक्ट विल कम इन द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री. आज हम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के हिसाब से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऑलरेडी हमने वर्ल्ड में अपनी 5th पोजीशन बना ली है. तो ये क्यों संभव हो पाया? कहीं ना कहीं ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, और यहाँ पे फास्टर पेस कर रही है. आज 7% की जो ग्रोथ है वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, जो कि हिंदुस्तान की 7% की ग्रोथ होने वाली है. मैं एक since there is no provision in the budget as about the capital market, but I will say there was nothing less than everything belongs to the capital market in the budget. एक मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ना चाहता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर का, फाइनेंस सीतारमन जी का. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. What does it mean? अगर इसी पैराग्राफ को हम एनालाइज करें, तो क्या है कि आज एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया. इंडिया में कि जब अब G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास आई है, ऐसे बहुत सारे आप भी देखा है कि अभी लास्ट 24 फरवरी 2022 में जब यूक्रेन और रशिया का वार हुआ, तो एवरीबॉडी वाज होपलेस कि क्या होगा, हमारे क्रूड का क्या होगा. बट इंडिया फाइंड अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दैट आल्सो. सो आज हम देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड के जो वर्ल्ड का इंपोर्ट जो वर्ल्ड में कर रहे हैं, खासतौर से ये जो क्रूड इंपोर्ट्स कर रहे हैं, उसमें इंडिया इज बाइंग एट द चीपेस्ट रेट. बट इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी नहीं छोड़ी उसके लिए. तो जब ये मैं पढ़ रहा था ये
With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are strengthening an ambitious people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. तो पूरा का पूरा ये सेंटेंस जो है, पूरा ये पैरा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पावर के लिए बात करता है. Then next is the budget adopt the following 7 priorities. So what are the 7 priorities? They complement each other and act as a Saptarishi guiding through the Amrit call. Then number 1 is inclusive development. क्या जब वो डेवलपमेंट होगा तो क्या वो डेवलपमेंट किसी व्यक्ति विशेष का हो रहा है कि किसी कंट्री का हो रहा है? कंट्री का हो रहा है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी विल ग्रो. When the entire economy will grow, so the effect will come on the corporate structure and the economy. Economy पर आएगा तो obviously share market पर सबका effect आना ही आना है. Second part में जाता हूँ, reaching the last mile. What does it mean? कि यहाँ पर जो कहते हैं दूर दराज में भी कोई रहता है, जो वंचित लोग भी हैं, उनको भी कैपिटल मार्केट बात कर रहा हूँ, उनको भी इकोनॉमिक पावर का पार्ट होना चाहिए. उनको भी जो फैसिलिटीज हैं, जो सपोर्ट है वो मिलना चाहिए. उनकी इनकम बढ़नी चाहिए. अगर किसी की जिनकी इनकम बहुत कम है, उनकी इनकम बढ़ती है तो अल्टीमेटली खर्चे बढ़ेंगे ना, और खर्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप करेगी. देन तीसरा पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली आज हमारी जो मेन प्रायोरिटीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को लेकर के है. आज हम देख रहे हैं कि हर इस गवर्नमेंट में लास्ट के 10 ईयर्स में कितने हमारे हाईवेज बन रहे हैं, कितने हमारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं. अभी हम बात करते थे पहले अपनी मेट्रो ट्रेन की, अब मेट्रो ट्रेन से वी आर मूविंग टुवर्ड्स रीजनल ट्रांसपोर्ट्स, आरआरटीएस के बाद हम बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इसकी ग्रोथ जो है वो कैपिटल मार्केट में दिखाई देने वाली है. देन फोर्थ पॉइंट है अनलीशिंग द पोटेंशियल. भारत ने अपनी आज तक पोटेंशियल समझी ही नहीं थी. अभी हम देखें कि खासतौर से जब हमारा यूएस और रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ है, उसके बाद द पीपल एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया. क्यों? वी हैव द पोटेंशियल बट वी कैन नॉट यूज इट. देन ग्रीन ग्रोथ. ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो हम कहते हैं क्लीन एनर्जी की बात करते हैं और करते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ होनी चाहिए. ग्रोथ तो होनी चाहिए बट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए. देन कम्स टू यूथ पावर. यूथ पावर अगेन आज हमारे कहते हैं आज जस्ट listening, hearing that we have reached to 140 billion population, 140 crores population, 1.4 billion. So ये जो हमारे जो youth power है, इसमें से most of the population is young power. तो young power है, that's why the Indians are now इंडियंस का सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी आजकल इंडियंस को दिया, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, कहीं भी हो, इंडियंस वर्कफोर्स इज ऑलवेज प्रिफर्ड. देन कम्स द फाइनेंशियल सेक्टर. विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर वी ऑल अंडरस्टैंड नोबडी कैन ग्रो. हर इंसान को अपने अपने फाइनेंस को संभालना होता है और दिस इज द ओनली सेक्टर विच इज गोइंग टू परफॉर्म ऑल द टाइम्स. बिना फाइनेंस के कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो लक्ष्मी से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो बिना फाइनेंस के तो कोई चीज हो नहीं सकती. तो ये जो 7 प्रिंसिपल जो दिए हैं, तो सुमित जी ये तो जस्ट एक कहते हैं ना ब्रीफिंग पॉइंट था जस्ट रेफर करने के लिए. यस सर. कि कैपिटल मार्केट में क्या है. आज हम देखते हैं जबकि पहले एयरपोर्ट्स होते थे, कितने लोग जाते थे एयरपोर्ट, कितने लोग हवाई यात्रा करते थे, और आज ये पोजीशन है कि आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो हम 2 मिनट से आपको टैक्सी खड़ी नहीं करने देता है. एयरपोर्ट पे आप चेक इन काउंटर पे जाओगे तो आपको 1-1 घंटा लगता है. तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमी में डेवलप हो रही है. और इकोनॉमी में डेवलप होने के बाद, और जैसे अभी इकोनॉमी में डेवलप होगी तो क्या होगा, उसका ग्रोथ कर जाएगा. एवरीथिंग इज बीइंग नाउ मैन्युफैक्चर्ड अंडर द कॉर्पोरेट. तो कॉर्पोरेट जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी ग्रोथ बढ़ रही है. द काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर सीइंग क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, तो ट्रिमेंडस ग्रोथ इज कमिंग. चाहे वो आप देख लो हाउसिंग सेक्टर की डिमांड देख लो. हाउसिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने देखा तो सब लोग ये कहते हैं सबसे ज्यादा रेट जो टूटेंगे रियल एस्टेट के टूटेंगे. क्या हुआ उसके बाद, आज सबसे ज्यादा जो डिमांड है ना वो रियल एस्टेट की है. और 2020 से लेकर के आज तक अगर आप ऑल इंडिया का एवरेज निकालोगे ना तो 50 से 60, 70, 80% तक प्रॉपर्टी के रेट राइज हुए हैं. जो इंसान पहले 2 कमरे वाले घर में रहता था उसको 3 कमरे चाहिए, जो 3 वाले में रहता था उसको 4 कमरे चाहिए, और 4 वाले को
5-6 चाहिए। आज क्या है, हर कोई वर्किंग है, और अब ये सिस्टम ये आने वाला है कि हर किसी को अपने बेडरूम के साथ साथ 1 या 2 रूम ऐसे होने चाहिए जहां वो बैठ के काम कर ले। अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों जॉब में है, तो मिनिमम 1 रूम तो ऐसा होगा जहां पे वो, तो 1 रूम तो आपको एक्स्ट्रा हर घर में चाहिए। तो दिस इज ऑल टर्निंग इनटू द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। तो आज जो बजट की जब हम बात करते हैं कि जो 25 इयर्स के प्लान की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया, एंड उस काल को अमृत काल कहा गया है। अमृत काल मतलब आजादी के 75 वर्ष तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले 25 वर्ष जो आजादी के होंगे वो भारत के लिए होने चाहिए, तो उसको हमने अमृत काल का हमने नाम दिया। एंड अगर ये 25 साल हमने संभाल लिए तो इंडिया को, भारत को कहते हैं वर्ल्ड पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। राइट नाउ आई एम कमिंग टू अडानी सेगमेंट। अभी कैपिटल मार्केट वापस आऊंगा तो बीच में मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहिए। अडानी सेगमेंट, आई थिंक डीएस धीरज जी ने बात कही इसके बारे में, और एक तरुण जी तरुण बत्रा जी ने भी अपनी ओपिनियन दी। हाँ, तो मैं तो देखो ऐसा है सुमित भाई, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहाँ पर होता है, मैं तो कहते हैं आप यू नो मी, मैं आई थिंक हो सकता है कुछ इस प्लेटफॉर्म की मर्यादाएं हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर रहना है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, हर एक को अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। ऐसा क्या था कि हिंदुस्तान में पिछले 2 साल से केवल और केवल एक ही ग्रुप के शेयर चल रहे हैं, और अगर इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे तो अब क्यों वो धराशायी हो गए? मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वो वैल्यूएशन लिख के दिया था कि जितने भी प्राइस अभी 52 वीक हाई बनाया, 52 वीक हाई का मतलब होता है 1 ईयर हाई, मैंने कि इसका जो वैल्यूएशन है दैट शुड बी अराउंड 0.2x to 0.3x ऑफ द रिसेंट हाई। और आप देखो तो बहुत सारे स्टॉक्स उस रेंज में आए और उस रेंज से वापस गए, और बहुत लोगों ने खरीदे भी हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। मेरा मतलब कहने का ये नहीं सारे शेयर्स खराब है। ऐसा क्या होता है, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शेयर्स के प्राइस इतने बिग, अच्छा ये जो भी हिंडन वर्क ने जो भी कहते हैं ना ब्रेकआउट दिया, खुलासा किया, जो भी दिया, क्या ये हमें नहीं पता था कैसा क्या चीज है? एक अभी आपको याद है आज से 1.5 साल पहले भी एक वो आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया की वो एडिटर है दलाल करके, सुचिता लेडी, नहीं सम लेडी नो, ओके, उसने भी इस बात को कही थी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो बात कर रहा है यहाँ पर उस बात को सुना नहीं गया, और आज ये बात का ये टाइमिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन उस रिपोर्ट में मैं ये मानता हूं कुछ भी नया नहीं था। हिंडन वर्क की रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं था जो हम लोगों को पता ना। हम अपने बैलेंस शीट पढ़ते हैं, अगर हमारे घर में 100 रुपए हैं तो क्या हम अपने आप को बोलेंगे कि हम 5 करोड़ के हो गए तो उससे हम सस्टेन कर पाएंगे? क्या नहीं कर सकते ना। तो बात यह है कि आपकी जो इकोनॉमी है, एक कंपनी इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, शेयर मार्केट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बर्थ ऑफ ए कंपनी। तो वो बर्थ को क्या दिखा रहे हैं? आज इनकी नई नई कंपनी जो बनकर आएंगी, चाहे वो ट्रांसमिशन हो चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, सर आज से जब वो सुचिता दलाल, हाँ, उसकी जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद मैंने एक शेयर रिकमेंड किया था इनका, अडानी पावर का किया था, रफली 92 रुपीज के आसपास, और उसके बाद रिकमेंड करके मैं भूल गया मैंने, क्योंकि मैं अडानी ग्रुप पे किसी शेयर को ना तो खरीदता हूं ना मैं रिकमेंड करता हूं, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द वैल्यूएशन। तो वो 90 रुपीज मेरी रेंज में आ गया था, मेरे को उसमें अट्रैक्टिव लगा वैल्यूएशन, तो मैंने रिकमेंड करके छोड़ दिया। अभी जब ये अडानी सागा जब दोबारा स्टार्ट हुआ, then I saw the price of that stock 52 week high is 430 rupees, from 86 rupees or 90 rupees to 435x in a period of around one year, from that low to that high.
तो इस पीरियड में अच्छी बात है, चल सकता है, किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक चल सकता है जो 5 रुपए को स्टॉक, अगर किसी ने पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट से फास्ट कोई चीज नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं, जैसे हमारे और भी एक मेंबर्स बोलते हैं, किसी को लखपति बनना है शेयर मार्केट में तो बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप पहले से करोड़पति, तो वो पोजीशन भी हमारे यहाँ है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या है, हमने क्या रखना है उस पर हमारा डिपेंड करेगा। हम अगर शेयर मार्केट को, किसी शेयर मार्केट को हमने 2% कमाना है तो बहुत इजी है पैसा 2% कमाना। अगर हम सोच रहे हैं कि ओवरनाइट इसमें हम करोड़पति हो जाए तो लखपति बनना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जब मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा था तो जो 90 रुपए का शेयर था वो 430 रुपए शेयर हो गया। तो मेरे को कोई ये बता दे, इस ग्रुप के अलावा भी दिस ग्रुप होल्ड्स ओनली 4 or 5% ऑफ द इंडियाज टोटल पावर कैपेसिटी। ये इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी क्या ये कि सारे के सारे जो शेयर्स थे, बाकी सारी कंपनी के शेयर तो धरातल में चल रहे हैं और ये 5x हो रही है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन है, बहुत हैवी वैल्यूएशन है। और मैं तो एज ए आई विल एडवाइज टू ऑल माय फ्रेंड्स जो रिटेल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप इतने हाई वैल्यूएशन के पीछे कभी मत भागिए, कभी मत भागिए। अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले ये देखो कि कौन सा शेयर मरा हुआ पड़ा, उसके पोटेंशियल्स क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल्स। अगर आप फंडामेंटल पे जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको शॉर्ट टर्म में तो नुकसान दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान कभी नहीं देगा। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए फंडामेंट। अभी जब मैं बात करता हूँ, जब इनके ये शेयर्स जब ये 24 जनवरी के बाद जब ये शेयर उठना स्टार्ट किया तो मैंने एक एनालिसिस की, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वैल्यूएशन डाला था। उसके बाद मैंने लिखा भी था कि आई एम बाइंग दिस शेयर। तो थोड़ा थोड़ा मैंने बाइंग स्टार्ट की बिकॉज दैट वाज कमिंग इन रेट। आज अगर देखा जाए तो उस दिन जो लो बनाया था, मैं अडानी इंटरप्राइजेस की बात करूं तो 3 दिन पहले इसका लो बना था, आई थिंक फ्राइडे की बात है शायद, वो लो बना था 1017 रुपीज, 1017 रुपए 45 पैसे। आज वहां से वो 2200 रुपए हो। तो आपको शेयर कब, अच्छा उस दिन कि कोई भी बाई नहीं करना चाहता, कोई भी बाई नहीं करना चाहता उस दिन की पता नहीं क्या होगा। और सुमित भाई, मैं थर्सडे को एक शादी के फंक्शन में था मैं, तो वहां पर सिर्फ सारा एक टॉपिक एक ही था, अडानी ग्रुप में क्या करना। बस अडानी ग्रुप में क्या क्या है, क्या लगता है अडानी ग्रुप में, तो मैंने ये बाई करो उसको। कहते आपको नहीं लगता और नीचे आएगा? मैंने बिल्कुल नीचे आएगा। कल ये एक बार, कल मतलब कल मीन्स फ्राइडे को, फ्राइडे और मैक्सिमम मंडे को इससे सबने बॉटम हो जाना है। और बॉटम होकर के ये जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ना कहीं ये बायस रिपोर्ट है। आप दो चीज अगर आप कोरिलेट करेंगे, अभी रिसेंटली एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री करके डॉक्यूमेंट आया है उसको लेकर के, और हिंडनबर्ग, इसमें कोई नया नहीं है दोनों में। ये दोनों की दोनों रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं। इसकी जो टाइमिंग है ना, अगर आप टाइमिंग को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये उस टाइमिंग को, ये क्यों नहीं हो, आज की डेट में एवरी कंट्री, इवन अमेरिका को देख लो, आप यूरोप को देख लो, एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका, इंडिया। तो कुछ लोगों को जेलसी भी होगी किस लोगों को। और अभी हमारे हिंदुस्तान में तो अभी जनरल इलेक्शन आने वाले हैं अगले 1 साल में, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि कोई इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है। और इस टाइप की रिपोर्ट से भी कुछ हिंदुस्तान का कुछ कहते हैं ना, कुछ खराबी होनी हिंदुस्तान में, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं कमिंग टू दैट अडानी सागा, अभी जब वैल्यूएशन की हमने बात की तो आज भी अगर देखा जाए तो कुछ शेयर जो है आज भी डाउन सर्किट में फ्रीज थे। 2 शेयर हैं इनके, अडानी ग्रीन्स के और अडानी टोटल इकोनॉमी। मेरे को ये बता दे भाई, ट्रांसमिशन ग्रीन में ऐसा क्या इनके पास वैल्यूएशन था कि वो शेयर 4200 रुपए का शेयर हो गया, 1 रुपए वाला शेयर। तो फिर भी पब्लिक खरीद रही है, तो पब्लिक को अपना ये देखते, चल नहीं रही है। हाँ जी, खड़े हो जाओ बस, चलो। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। खड़े हो, 1.5 घंटा हो गया बच्चे सोते हुए, तो सब खड़े हो ये जाओ। कैसे म्यूट होगा? बच्चे खड़े हो जाओ। यस अजय सर, प्लीज अनम्यूट एंड स्टार्ट। हो गया, ओके।
तो ऐसा अच्छी क्वालिटी स्टॉक, जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली 3 कंपनी टेक ओवर की थी, एक तो एसीसी थी, अंबुजा सीमेंट था और अडानी इंटरप्राइजेस है। अडानी इंटरप्राइज में भी काफी बिजनेस है, काफी एसेट है, सो इट वाज वेरी गुड शेयर, नो डाउट, बट 4190 वैल्यूएशन वाज वेरी हाई। सो मेरे को लगा ये कि 1600-1700 रुपए की से स्टार्टिंग करनी चाहिए थी, एंड वी बॉट अराउंड 1100 रुपीज। आज मैंने सारे जाकर के बेच दिए 2200 रुपए तक जाकर के। आई फिनिश सोल्ड इट एंड नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दिस ग्रोथ। बट जब मार्केट कहते हैं ना, अगर पैसा शेयर मार्केट में कमाना है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक जब व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, उस समय आप बाई करो, अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। इरिस्पेक्टिव, और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोगों के पास एनालिसिस की पावर है कि हम क्या बाई कर रहे हैं और क्या बाई नहीं कर रहे हैं। एक जो मैं इंसान से देना चाहूंगा, जब वो किसी से बात करते कि शेयर मार्केट में कितना रिटर्न आप करवा दोगे या कितना रिटर्न आना चाहिए, तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन, खासतौर से जो 1,50,000 या 2 लाख रुपए लगा के करना चाह रहा है, वो कहता है कि हमें 10% महीने का मिल जाए, 5% महीने का मिल जाए। तो ऐसा तो कोई रिटर्न नहीं है कि धीरज जी आपकी नॉलेज में कोई ऐसा रिटर्न है जो 5% महीने का दे सकता है कोई? सुमित जी? यस सर, ऐसी सर ऐसी ऐसा कोई कोई रिटर्न नहीं है। बट तो वो गलत ही बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल मार्केट रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं वो धीरज जी। मार्केट अगर तो बट गलत नहीं बोल रहे, आप एक्सपेक्टेशन ऐसी कल है। का अगर फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, सर वो जो वही आप है जो बोल रहे हैं ऊपर ही करोड़पति से जाएगा ना। लखपति बने हैं। हाँ ये बात, अब कनिका ने सही हाँ, बात बोली, करोड़पति लखपति बने वही है। तो मैं एक बात बताता हूँ, जितने ज्यादा कैपिटल वाला बंदा है, लेट्स से समबडी वांट्स टू पुट 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए मार्केट में लगाना चाहता है, तो वो कहता है यार हमें तो बैंक की जो इनकम है ना बैंक से, उससे 2% 3% ज्यादा देते। सपोज बैंक का एफडी 7% दे रहा है, तो हमें 10% दे देना, 12% दे दो तो बहुत ही अच्छी डबल बात डिजिट रिटर्न इज इनफ है, डबल डिजिट इनफ, वेरी इनफ। तो कहता है और उसका एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में? अब एफआईआई है, बड़ा एम सिंह जितना बड़ा इंसान होगा, एफआईआई है, एफआईआई क्या एक्सपेक्ट लेके आते हैं कि हमें जो वहां पर डॉलर न्यूट्रल, जो भी डॉलर का जो अपना प्राइस फ्लक्चुएशंस वगैरह को न्यूट्रल करने के बाद उन्हें उनकी कंट्री में अगर 1% रिटर्न है, हमें 4% रिटर्न मिल जाए, बहुत हमारे लिए, राइट। और हमारे यहाँ का एक्सपेक्टेशन है, जो जो लार्ज इन्वेस्टर है, कि हमें एफडी में 5% मिल रहा है, मार्केट से हम 8-9% निकाल रहे, तो हमारे लिए बहुत अच्छी रिटर्न है। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिनको बोलता है सर मैं 2% से 5% तक रिटर्न निकाली जा सकती है, मैं ये इंडिकेशन देता हूँ 2% से 5% निकाली जा सकती है। कहते सर बस मैंने इससे ज्यादा तो फिर अच्छा ये बता दो कि आप कितना कमा रहे हो अभी मेरे पास आने से पहले, कि आप कितना कमा रहे हो, तो वो साइलेंट होते हैं। आप तो नहीं कमा पा रहे, लेकिन मेरे एक्सपेक्ट में 5% 10% कमा के दे दूंगा। और फिर सुमित भाई मेरा जवाब होता है कि अगर मैं 5% तुम्हारे लिए कमाऊंगा मैं, तो 9% पे मैं इंटरेस्ट लेकर अपने लिए क्यों नहीं लगा दूंगा? मैं व्हाई आई विल वर्क फॉर यू। ठीक बात है। तो मार्केट में मैं तो कह रहा हूं एक्सपेक्टेशन वो रखो, राइट, कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन मीट आउट हो सके। अभी मैंने, अगर आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था। मैंने कुछ शेयर अभी रिसेंटली परचेज किया, अडानी ग्रुप पे किए, जब बहुत क्रैश हो गया। मैंने एक वैल्यूएशन था 20% से 30% ऑफ द पीक अमाउंट, उस रेंज में आएगा आई विल बाई इट। मैंने बाई किए और आज लोएस्ट से डबल हो गए। मैंने कुछ शेयर, मैंने शेयर बेच के मैं बाहर निकल गया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बस यही है। अब वो वापस 4,000 जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने कमाई लिया। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं तो पिछले एक हफ्ते में 20% कमा लिया, तो अब ये बता दो इससे बड़ी रिटर्न कौन दे सकता है? जितनी कैपिटल लगाई मैंने उस स्क्रिप्ट में, तो बाकी तो कहते जियो और जीने दो, कि शेयर मार्केट का कंसेप्ट है जियो और जीने दो। इसका कोई मतलब बताएगा इसका कोई? मैं चाहता हूं कि वो इंटरेक्टिव सेशन रहे, कि याद रखें लोगों, सुमित भाई कंपेयर हो जाए कि 2 घंटे का 3 घंटे का एक्सक्लूसिव सेशन करना कैपिटल मार्केट पर, और फिजिकल कर रहा है सुमित भाई, ऑफ स्क्रीन ऑफ करके मजा नहीं आएगा।
सुमित जी यही होंगे वैसे तो। सुमित जी का जी, और जितने तो मतलब बस आप ये मार्केट में मतलब बने रहो, रेगुलर इन्वेस्टर। आपने प्रॉफिट कमा लिया तो दूसरों को मौका भी दो ना प्रॉफिट कमाने का सर, उसको इसका होल्ड मत मतलब करो। क्या? हाँ, यस यू आर राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने प्रॉफिट कमा लिया सर, दूसरों को मौका भी मिलना चाहिए ना सर। दूसरे को मौका तो जब मिलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल लोएस्ट पे खरीदूं और हाईएस्ट पे बेचूं। सर। ये थोड़ी आप अपना वो प्रेडिक्शन मान के पॉसिबल हो नहीं पाता इन मार्केट, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम बॉटम पे खरीद पाए और टॉप पर बेच पाए। तो अजय सर का मेन पॉइंट आज जो है वो मेन पॉइंट अजय सर का यही है कि हमें अपना एंट्री पॉइंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें शेयर में एंट्री कब करनी है। नो 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 कनिका, एंट्री तो करनी करनी, वो तो बहुत अच्छी बात है। एनीबडी कैन बाई शेयर्स, एनीबडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम इज व्हेन यू वांट टू सेल इट। मैं एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट की बात कर रही हूँ कि yes. एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है। एग्जिट करनी है। कनिका ने बिल्कुल सही बात करी है कि अगर हमें एंट्री पॉइंट पता है कि अभी जैसे क्या, अच्छा एंट्री पॉइंट में भी आप देख लो, कोई नोबडी इज परफेक्ट। एंट्री पॉइंट क्या, किसी भी, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो, नोबडी इज परफेक्ट। वी ऑल ट्राई टू बी द बेस्ट वन, बट ये नहीं है कि बस सारा पैसा मेरे को मिल जाए। आई एम द वन जो कि लोएस्ट पे खरीदे और हाईएस्ट पे जाकर बेच दे। अगर मैं कहता हूं अगर मैंने हाईएस्ट पे बेच दिया तो इसके मतलब डे वन से जो मेरी थिंकिंग है कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, बाकी पब्लिक जाए भाड़ा। यही मतलब हुआ ना। अगर मैं हाईएस्ट पे बेचूंगा और somebody is buying at highest, तो उसने क्या लॉस देने के लिए थोड़ी क्यों खरीद रहे हैं? तो एवरीबॉडी हैज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। तो आप ये देखिए कि आपने अपना रिटर्न निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। व्हाट इज योर डिजायर फ्रॉम द मार्केट? मतलब बेसिकली जब हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो हम ये कैलकुलेशन लगा के एंटर करें कि अगर मैंने एक हफ्ते में 3% निकाल लिया तो मुझे निकल जाना है, अब चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। एक हफ्ते में 3% अगर आपके सारे खर्चे आकर निकल जाएंगे निकाल जी, तो फिर तो कहते हैं आप जल्दी से अपनी, कहते हैं ना, गाड़ी जो है ना मर्सिडीज की तैयारी कर लेना। सर मैं आपने कहा ना कि आप एक रिटर्न डिसाइड कर लो, मैं वो रिटर्न की बात कर रही हूँ। हाँ, डिसाइड कर लो, बट वो उस रिटर्न में क्या होता है कि जब कोनिका ने लिया कोई शेयर, तब तक लिया सब 100 रुपए का, 110 रुपए का टारगेट मिला, वो जाकर कनिका ने परचेज कर लिया। इन द मीन टाइम धीरज जी आए, अरे ये शेयर तो 125 रुपए हो जाएगा, ये वो 125 ही पहुंच गया। फिर सुमित जी कहते नहीं ये 200 होने वाला है, तो और 200 होने के बाद 200 हो तो नहीं हुआ, 115 रुपए आ गया। तो ज्यादा लालच नहीं करना। तो 115 रुपए जब वापस आता है तो कनिका पता क्या कहेगी कि मैं तो 125 से नीचे नहीं बेचूंगी अब, और 125 का ना रेट आएगा ना वो शेयर बिकेंगे। ऐसे ही होता ना। हाँ सर होता तो ऐसे ही है, लेकिन वही कह रही हूँ ना कि अब वही है कि मेन ये मार्केट ज्यादा लालच ना करने वाली भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज बताता हूँ कि कभी मत सोचो कि मैं एक लॉट में, सिंगल लॉट में बाई करूंगा और सिंगल लॉट में मैं शेयर्स को सेल करूंगा, एवरेज करके। ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं तो उसको पार्ट में लगाओ, 10-10 हजार करके लगाओ, 15-15 हजार करके लगाओ। एक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 1721 में पहली बार बाइंग किया, मैंने नीचे आ गया, अगले फ्रीज में मैंने और ले लिया, फिर मैंने 2 फ्रीज का मैंने वेट किया, फिर अगली फ्रीज मैंने क्वांटिटी इतनी उठा ली कि 1400 रुपए की मेरी एवरेज आ गई, और जाकर 1900 रुपए में बेच दिया, 1800 रुपए की एवरेज से बेच दिया, तो मेरे को 25% का प्रॉफिट मिल गया। बहुत है मेरे लिए एक हफ्ते के लिए। तो क्या है कि आप पार्ट्स में खरीदिए और पार्ट में बेचिए, एक अपनी रिटर्न बना लो, ठीक है। हो सकता है मेरे बेचने के बाद वो 2000 रुपये और बढ़ जाए, 2000 की जगह 2500 हो जाए, 3000 हो जाए, बट आई एम सेटिस्फाइड। अगर शेयर मार्केट में सस्टेन करना है और पैसा कमाना है, और सब मेन इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट में क्या है, अपनी कैपिटल को बचा कर रखने का। अगर कैपिटल है तो आप आगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, और कैपिटल नहीं है तो आप कैसे प्ले करोगे उसमें। बेसिकली अजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करते रहो धीरे धीरे। यस, प्रॉफिट बुक करते रहो, और जब अगर शेयर नीचे जा रहा है तो एवरेज करते रहो। हमने एक कहावत सुनी, 1 in hand इज बेटर देन 2 in bush। तो जो हाथ में है वही अपना है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक सचिन जी का क्वेश्चन आया है सर। हाँ जी, हाँ जी। वो पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी रहनी चाहिए, कि मतलब हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर के तरीके से अगर देखें तो कितनी एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चले। देखिए ऐसा है, जहां एक्सपेक्टेड रिटर्न की जब बात आप कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट विल डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट,
अगर मैं बात करूं कि जो इंसान बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट है 5, 6, 7% की एफडी। तो दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि बिना रिस्क के आपको कोई और मिलेगा नहीं। शेयर मार्केट में तो आपने 100 का लिया तो हो सकता है कल 110 का बिक जाए, और हो सकता है वो 60 रुपए का भी आ जाए, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, आ भी सकता है। तो आपकी रिस्क एपेटाइज क्या है वो है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी निफ्टी या सेंसेक्स है, इसने पिछले 50 साल में 15% की एनुअलाइज रिटर्न दी है। रफली 15% की, 14% है, 16% है, 15% की मैं मान के चल रहा हूँ वो दी है। और आज की डेट में अगर आपको 15% की एनुअलाइज रिटर्न मिलती है ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, देखिए अब आप कुछ ऐसे भी हमारे जो कहते हैं ना श्रोतागण होंगे, वो कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो आप, तो 15% की बात कर रहे हो, मैंने तो अभी 3 दिन पहले अडानी का एंटरप्राइज लिया था 1017 रुपीज पर, आज 2200 बेच दिया, डबल कर लिए। तो वैसा है कि मैंने क्या बोला, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपका वो 5 गुना हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने 15% की रिटर्न निकाल ली दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे बढ़िया कोई रिटर्न नहीं है कैपिटल मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। मार्केट में अभी हम एक रिसर्च पेपर देख रहे थे, तो उसमें यही था कि 365 दिन में मार्केट में 5 दिन ऐसे होते हैं कि जिन 5 दिन अगर आप मार्केट में नहीं बने हुए हो तो आपकी रिटर्न डबल डिजिट से कम हो जाएगी। वो 5 बेस्ट डेज आप नहीं, डोंट नो, नोबडी इज नो कि भाई वो कौन से 5 दिन हो सकते हैं। और धीरज जी मैं एक बात और बताता हूँ, वो 5 दिन तो कर नोबडी नोज इट। और जब हम प्रॉफिट जब बुक करते हैं ना, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं हम। जी 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 बिल्कुल, खास तौर से जो वेरी खास तौर इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अभी आपको ये देखना है कि आपको शेयर मार्केट में बने रहने के लिए, अच्छा कुछ लोगों का मानना जैसा है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, गैम्बल है। तो गैम्बल उनके लिए है। गैम्बल में क्या है, देखिए आपने एक लॉटरी का टिकट लिया 50-100 रुपए का, 200 रुपए का, वो हो सकता है 1 करोड़ का लॉटरी का टिकट लग जाए आपका। बिल्कुल हो सकता है जिंदगी भर नहीं लगे तो वो जीरो हो जाएगा ना वो तो। बिल्कुल बिल्कुल तो आपको देखना है गैम्बल की तरह आपको शेयर मार्केट में रहना है या ये इन्वेस्टर रहना है। और मैं तो ये कहूंगा, अगर कभी कहते हैं ना कि अब फिजिकल प्रोग्राम जब हम करते हैं करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी जो है वो कुछ लोग उसको कहते हैं गैम्बल है ये। और मैं तो कहता हूँ इट इज ए हेजिंग टूल। हैज के तरीके से अगर यूज करोगे तो हैजिंग है, अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो मनी है। विदाउट हैजिंग तो वो गैम्बलिंग है, प्योरली गैम्बलिंग है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 1 लाख के शेयर खरीद सकते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फ्यूचर और उसमें अच्छा 1 लाख रुपए आपने लगा दिया तो प्रॉफिट आपको 1 लाख के हिसाब से ही होगा। हाँ, उसमें तो सिर्फ मार्जिन की जरूरत है आपको, राइट। और आप चले गए फ्यूचर ऑप्शन में, विदाउट टेकिंग ये हैजिंग टूल, आपने सोचा यार उसमें 20% का हमारा मार्जिन लगना है, ये हमने ले लिया निफ्टी उसमें 15% 14% का मार्जिन लगना है, बैंक निफ्टी ले तो 15% का मार्जिन लगना है, तो हम तो उसमें 6 टाइम काम कर लेंगे। सर 6 टाइम काम तो कर लोगे, 6 टाइम लॉस भी तो लगेगा। लॉस 6 टाइम नहीं होगा, लॉस 12 टाइम्स होगा। क्योंकि जब लॉस होता है ना तो वो उस लॉस को संभाल नहीं पाता है कोई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। तो फिर ट्रेड गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। अब इसी में राजेश जी का एक क्वेश्चन हो रहा है सर, वो पूछना चाह रहे हैं क्या अगर डायरेक्ट इक्विटी में ना जाके एमएफ के थ्रू जाया जा सकता है? 100% जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अपने कहते हैं काम में बिजी हैं, अब देखिए मैं तो 100% इसी में लगा हुआ, राइट। तो मेरे ऊपर तो कहते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड पसंद नहीं आते, लेकिन जिसने देखो जो डायरेक्ट इक्विटी का मजा ले रहा है और जो जिसके पास पूरी रिसर्च टीम है, वैल्यूएशन, जो फंडामेंटल्स, देखो अगर डायरेक्ट इक्विटी में या किसी में भी देखना है तो उसमें 3-4 चीजें मेन है, वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स, करंट सिनेरियो, मार्केट सिचुएशन क्या बोल रही है, और आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक कर सकते हो या नहीं, जैसा कि कनिका भी बोल रही है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये करने का टाइम है और आप कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट इक्विटी में जाओ। बिल्कुल जाइए, यस बिल्कुल बता रहे हो यहाँ पे। देखिए म्यूचुअल फंड भी अगर देखा जाए वो भी आपको 14-15, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये 14-15% की रिटर्न हर एक के लिए अवेलेबल है, ये हर कोई कमा सकता है। इसमें ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने 100% कमाया ईयर एंड आफ्टर ईयर, 200% कमाया हुआ है। आई नो दोस गाइस आल्सो। तो ये आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करेगा ये।
और वो कैपेबिलिटी आज जब मैं बात करता हूँ, अपने चैनल की बात करता हूँ, तो बहुत से लोग पूछते सर वो अभी जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का जैसे शेयर अडानी की हम बात कर रहे हैं, तो अडानी की जब शेयर गिरे मैंने खरीदवाना स्टार्ट किया, अरे सर बहुत नीचे आ जाएगा, तो मैंने क्या ऐसा कर, फिर शेयर इक्विटी मत जाओ, म्यूचुअल फंड में जाओ। आप बात कर नीचे आ जाएगा, नीचे ऊपर तो छोड़ो, आपको 4000 पे अच्छा लग रहा है कि 1200 पे अच्छा लग रहा है? 4000 में सबको अच्छा लग रहा था, 1200 में किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि उनको एंट्री टाइम नहीं पता ना, या उनकी वैल्यूएशन नहीं पता कि भाई उसकी वैल्यूएशन, राइट वैल्यूएशन क्या है। और मैं एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक मंत्र और देके जा रहा हूँ सबको आज। शेयर को कब परचेज करना है और कब बेचना है, उसके बीच दो टाइमिंग भी आपको मैं देके जा रहा हूँ आज। जब मार्केट में 90% जनता जो है ना वो रो रही हो, दैट इज द टाइम टू बाय द स्टॉक। तब इन्वेस्ट कर दो, अपने आप कमा लोगे। दैट इज द टाइम टू बाय द स्टॉक। और जब सारे बोल रहे कि अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, दैट इज द राइट टाइम टू सेल द स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, मेन क्रक्स यही है। अगर पैसा कमाना है तो मार्केट पैसा ऐसे कमा सकते हो, मार्केट में तो पैसा। अभी जब 17,800 जो आया था, उससे पहले भी जब 17,800 4 बार लौटा था, दिसंबर 23 दिसंबर को देखा था मैंने कि पहली बार मार्केट के 17,800 के आसपास आया, तब भी मैंने दिया था 17,800 का क्वाइट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे सर अभी कितना नीचे और भी आएगा, हम सुनने और नीचे आएगा, कोई 15,000 आएगा, मैंने हो सकता है 7,500 रुपए 7,500 आ जाए। कोविड में 7,500 आया था ना। बहुत अच्छी आपने काफी नीचे टिप्स आ दिए। गया था। लास्ट में मैं आपसे ऑलरेडी 3-4 मिनट्स लेफ्ट हैं, तो मैं लास्ट में एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे एडवाइस। सुमित भाई एक चीज और फिर उसका बताना। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नीचे देखोगे कि 17,800 सर वो 15,000 आएगी, और जिस दिन वो 15,000 आएगी ना, nobody will come to buy the stock। उस दिन सेंटिमेंट इतने खराब हो रहे होंगे, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी खरीदने की। तो मार्केट में पैसा लगाने को, डोंट टाइम द मार्केट, अपना इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाओ, राइट। इसी और में इंस्टॉलमेंट में पैसा निकालो। नोट हाँ जी, वो बोल रहे थे कि क्या ये बजट जो है वो डिस्करेज कर रहा है सेविंग्स को और फोकस कर रहा है स्पेंडिंग के लिए? फोकस कर रहा है स्पेंडिंग के लिए, जो न्यू टैक्स स्कीम आई है जिसमें तो मतलब ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। यस। और धीरज जी, हमने बचपन से एक कहावत सुनी है कि कमाई बढ़ाने से पहले खर्चे बढ़ाओ। तो खर्चे बढ़ाओगे, स्पेंडिंग करोगे, मोर स्पेंडिंग मींस मोर इन्वेस्टमेंट। स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपका स्पेंडिंग ज्यादा हो गया है। स्पेंडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने स्पेंडिंग ज्यादा की है तो वो कहीं ना कहीं किसी की इनकम बन रही है। इनकम बन रही है। नहीं, ये चैप्टर 6 के रिलेटेड बात कर रहे हैं सर यहाँ पे। अच्छा। का जो क्वेश्चन है चैप्टर 6 से रिलेटेड। चैप्टर 6 की न्यू टैक्स में एग्जम्पशन नहीं है ना सर? देखिए, अब ऐसा है कि आपने इनकम टैक्स में बहुत आप लोगों ने बात कर ली, मैं इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं बोलूंगा आजकल, मैं बोलता ही नहीं हूँ, समझ में नहीं आता। तो सर इसको इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अब इंश्योरेंस में पैसे कम लगाओ और स्टॉक मार्केट में ज्यादा लगाओ। तो स्टॉक में, इंश्योरेंस में वैसे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70-75 ईयर, तो बहुत इससे ज्यादा क्या करना है। नहीं तो सर मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट भी अब कह रही है कि इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़े कम पैसे लगाओ और इक्विटी में थोड़ा, स्टॉक मार्केट में ज्यादा आ जाओ। देखिए ऐसा है, अभी इंश्योरेंस वाले जो भी हैं वो भी तो इक्विटी पैसा लगाते हैं, बट इंश्योरेंस क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस जो नीडी है उनको लेना चाहिए। इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं मिसयूटिलाइज कर रहे हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए उसको मिसयूज कर रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसको लिमिट आउट किया है। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से सही स्टेप है, और उस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। और जहां तक सेविंग्स की बात है, ऑब्वियसली जितना कैपिटल मार्केट में पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी पे रही होगा ना। एग्जैक्टली, मेन पॉइंट यही है। तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बड़ी जल्दी हो जाएगी। और आज की डेट में आप ये मान के चलिए, आज हमारे पड़ोसी देशों की क्या हालत हो रही है। इफ योर इकोनॉमी इज नॉट गुड, किसी भी घर की, किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो कैसे सर्वाइव करोगे। आज हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आप कमा रहे हो तभी तो करोगे, कर पा रहे हो ना। अगर आप नहीं कमा रहे तो कैसे कर पाओगे खर्चा। तो
खर्चा जब ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं, एफर्ट ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली इनकम आपकी मीट आउट होगी। हाँ जी, और बताइए सर। ऑलरेडी 6 PM मैं सर। सुमित जी एक क्वेश्चन आप पूछे, उसका जवाब दूंगा, फिर मैं भी साइन ऑफ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था बिफोर समिंग अप। कपिल जी एज ऑल्सो ज्वाइन, सो सर लास्ट क्वेश्चन टू यू एंड आंसर चाहूंगा आपसे कि कोई एडवाइस कि किसी शेयर्स की तरफ हम मूव करें, कोई एडवाइजेबल शेयर्स टू द ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने 5 सर सुमित जी हमेशा यही पूछते हैं सबसे पहले, सर हमें कोई एडवाइस दे दो, आज का शेयर रह जाए कोई। तरुण जी जब हमारे पास गुरु आए हो तो सबसे क्वेरीज यही आती है सर कि कौन सी स्क्रिप्ट खरीदें आज के डेट में। राइट, तो कोई एडवाइस, जब ये मार्केट का सेशन हो रहा था तो मैं क्विकली सर से कोई एडवाइस बिफोर क्लोजिंग दिस 5th सेशन। अब मैं यही बोल के जाऊंगा कि अडानी इंटरप्राइज खरीद लो विद टारगेट सर, विद टारगेट दो लोगों को कि ये टारगेट प्राइस ये है। 2500 रुपये हो जाएगा जल्दी से, मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं दूंगा, 2500 हो जाएगा तो आपको 20% 18% की रिटर्न मिल जाएगी आपको। तो ये तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं 2200 क्रॉस हो गया आज। अच्छा ये कम प्राइस का लेना चाह रहे हैं? यस। तो अंबुजा सीमेंट ले लो, मैं अडानी ग्रुप के शेयर की बात कर रहा हूँ, अंबुजा सीमेंट ले लो। नहीं जर्नल कैटेगरी में भी बता दो सर कोई। सर आप अदर देन अंबानी ग्रुप में भी बता दीजिए एक शेयर। सर अडानी ग्रीन सर। अभी थोड़ा और वेट करो, मेरे हिसाब से अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस ओवर वैल्यूड है इस रेट पर। सर ओवर वैल्यूड तो सभी हैं इसमें सर, मेन है अडानी ग्रीन्स में थोड़ा बहुत सर्किट खुल रहे हैं आपसे, वो खुल रहे हैं, वो बॉटम अप बन रहा है सर उसका। सर बॉटम बन रहा है, आई एग्री, आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, सपोज उसमें तो 5 जितना भी आपने लेना 10% ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंसीडरिंग द बिजनेस, देखिए बहुत पिक्चर दिखाई जाएंगी इसमें, ये होने वाला है। एक स्टॉक की मैं और बात करूंगा, बहुत अच्छे ग्रुप का है, टाटा टेली क्या नाम महाराष्ट्र करके, आप लोगों को याद सुना होगा। क्या नाम लिया स्टॉक का? टाटा टेली महाराष्ट्र, टाटा टेलीकॉम का। यस। वो अभी 200-250 रुपए कितना लेके गए हैं पिछले 2 साल के अंदर, और उसमें भी यही कहानी हो रही है कि इसमें ये कहानी है, इसमें ये प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं। आज वो 70 रुपए आ गया है, और मैंने तब भी बोला था ये 2-3 ईयर का, और मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं तो उसका वैल्यूएशन 25-30 रुपए ज्यादा देखता नहीं हूँ, 7-8 रुपए चलता था। आई डोंट नो क्यों वो 200 रुपए लेकर गए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 या 11 रुपए में शेयर लिया है। ओके, तो बाकी पब्लिक क्यों बेवकूफ है जो 200 रुपए के पीछे भाग रहे हैं कि शेयर की वैल्यूएशन 200 रुपए, और प्रमोटर क्यों 10 रुपए का शेयर ना देके पब्लिक को 200 रुपए का देंगे? तो कहीं सोच समझ के तो भी इन्वेस्ट करो मार्केट में कि कौन सा शेयर लेना है, किसकी भागने की जरूरत थोड़ी उसके लिए। डोंट चेज द वैल्यूएशन, जब आपके पास पड़ा हो शेयर तो आप लीजिए। सीमेंट में मेरे को एक शेयर अच्छा लगता है, दैट इज बिरला कॉर्प, 900 रुपए का है, अपने लोएस्ट रेट पर है ये, 1600 रुपए ऊपर गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज गुड स्टॉक टू बाई, ये 1200 रुपए का रेट कभी भी दे जाएगा। सो सर इट इज टाइम। इसके अलावा और चाहिए तो आपको मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर देखते रहिए, टेलीग्राम का चैनल आप लिंक शेयर कर दीजिए फर्स्ट, एंड हम लोग एक सेशन दोबारा प्लान करेंगे। आज हमें पता है कि आपको टाइम कम मिल पाया ड्यू टू दिस स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, बट एज कपिल जी ऑलरेडी हमारे 5 सेशन 5 घंटे हो चुके हैं इस वेबिनार के, और कपिल जी इज हियर। सो सर अजय सर, थैंक यू so much for your wonderful presentation and this certificate of appreciation from Team CASA to you for your wonderful experience and deliberation on the topic. And thanks to भाई को राम 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 कैसे भाई? सर मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा था, मुझे तो शेयर का बिल्कुल नहीं पता था, मैं भी लाभान्वित हो रहा था थोड़ा बहुत। तो अच्छी बात है। तो कपिल को अच्छा लगा तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कपिल भाई? सर कपिल सर ने उस टाइम पर ज्वाइन किया है जहां पर आपने वो टिप्स भी दिए ना। अच्छा वहां इंटरेस्ट बन गया कपिल भाई। कपिल भाई को मैं अलग से टिप दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अजय भाई, यू आर ऑलवेज काइंड हार्टेड एंड मैग्नानिमस टू अस। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। चलिए सचिन, सुमित भाई और आपकी एंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, और आपने जो हमें सर्टिफिकेट
से नवाजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी चाहूंगा, मैं कपिल भाई को सुनने के लिए मैं भी ईगर हूँ। सो आई विल रेस्ट माय डेलिब्रेशन हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस हियर। Thank you, Ajay sir. Thank you so Thank you much. all panelists, Kanika ji, Asha ji, and Dheeraj bhai. Now, welcome to Kapil sir, for as always ready to deliver the session on this Team Casa platform. Folded hand, welcome to you, sir. Kapil bhai. Samit bhai. Karan ji, are you there? Yes. Yes. Welcome, Kapil sir. Thank you. तो मैं चाहूंगा कि करण इंट्रोड्यूस करें कपिल सर को। सर अगर कपिल सर का इंट्रोडक्शन देंगे तो मेरे को लग रहा है कि अमानत में खयानत वो वाली जो है ना एक वो, फिर भी हम ये बताना चाहेंगे कि कपिल जी हमारे बड़े भाई हैं जो है, और टीम कासा के ऊपर सर की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रही है। कभी भी हमने ये फील नहीं किया है कि हमारे पास कोई स्पीकर आ रहा है, हमें यही लगा कि हमारे एक फैमिली मेंबर हमारे साथ जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस की वैल्यू हम लगा नहीं सकते हैं, कि उसको हम वैल्यू में नहीं मेजर कर सकते कि वो एक्सपीरियंस जो हमें मिल रहा है, जो नॉलेज शेयरिंग हमारे साथ हो रही है, उसकी क्या वैल्यू है। तो एक जो इस डिस्कशन को हम कहेंगे अनमोल है। तो इसी के साथ सर हम चाहेंगे कि आप अपना दिस इज द जो है 6th सेशन and 5 hours already passed where more than 150 participants have joined. YouTube पर भी live है सर। तो this is the 6th hour where all are waiting to listen you on this judicial topic. Over to you. Thank you सुमित भाई। मैं एक बात कहता हूँ करण भाई कि आप लोगों के साथ जो ये मेरा प्यार है ना, क्या होता है वैसे प्यार का ना वो नहीं हो सकता। माय वॉइस इज कमिंग ओके सर? Yes sir, yes sir, yes sir, okay. ओके। तो मैं करण भाई कई बार सोचता हूँ अपने मन के अंदर अजय जी, कि जैसे प्यार की कोई ऐसा तो नहीं बनाया भगवान ने कि किसकी तरफ से प्यार ज्यादा है, पर मैं हमेशा ये मानता आया हूँ डॉक्टर साहब कि आप लोगों का प्यार जो मेरे प्रति है व्यक्तिगत रूप से और मेरे परिवार से, वो कई गुना ज्यादा है, पर मेरा प्यार भी सबरी और सुदामा वाला जरूर है। तो आप उसी भाव से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एंड इट इज लाइक दिस कि दैट आपके यहाँ जो ये सेमिनार चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैंने बताया था करण भाई को कि जब मैं आज सवेरे कोर्ट जा रहा था सुमित भाई, तो आजकल क्योंकि यूट्यूब की आदत सबको भी है और देखना जरूरी हो गया, इट्स इंडिस्पेंसिबल फॉर एवरीबॉडी, इट्स ए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो सो आई वाज गोइंग टू हाई कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल टुडे, सो व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द कोर्ट टू माय होम, तो मैंने आपका वो कासा वाला चल रहा था, बोल रहे थे शायद शुरू में, इफ आई एम राइट। तो क्या है कि मैंने ये देखा कि इसको मैं इस समागम को जो आपने बना रखा है, इसके लिए मैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक वो कहा है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। वाह जी वाह, वाह वाह। तो ये जो क्या नाम आपने समागम लगाया है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एक सबमिशन है कि आई बिलीव फॉर ऑल योर लर्नेड एंड एरुडाइट ऑडियंस, और परमात्मा की कृपा हम सब पे बनी रहे, मेरे पे भी बनी रहे, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। सी I have been discussing the budget in the past also on your platform, and in number of days we have lot of seminars. आप सबने भी कई बार पढ़ लिया होगा, और सवेरे से आप you are already occupied with this marathon going on. So this on this marathon, I would just not bore you, but just give you some important angle. See, always I submit. जैसे अभी अजय जी अपना एक पॉइंट रख रहे थे, आप लोगों ने और भी गणमान्य स्पीकर्स को बुलाया था सवेरे। तो सुमित जी क्या होता है, हर एक का एक दृष्टिकोण होता है और सबके दृष्टिकोण अपने जगह महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि बजट को हम एक ही एंगल से पढ़ सकते हैं। करण जी किसी भी लॉ को, करण भाई मेरे साथ रहो थोड़ा दिन, मैंने आपको बोला था कि आज का सेमिनार का मेरा असली मोमेंटो ये है कि मैं आई वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू पीपल। सर मैं आपको बता दूं, टाइम कोई हाईजैक नहीं कर सकते। तरुण क्वात्रा जी, आशा जी, कनिका जी आर हियर, एंड सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर लें और सर के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट। पता है क्या है, आप लोग मेरे वैलेंटाइन है सर, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। राइट सर, इट नॉट बी एन एक्सैगरेशन टू सबमिट लाइक दैट। So what I am submitting, sir, is that all of us, Kanika ji, have a different, we can have a different angle to study a law and a budget document. See, it is like this. I always say कि जैसे आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें आपका दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस दृष्टि से उसको पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप उसको बिजनेसमैन की तरह से पढ़ रहे हैं, एक आप उसको बहुत ज्यादा क्या नाम एक इकोनॉमिस्ट के एंगल से पढ़ रहे हैं साहब,
एक आप उसको पॉलिसी मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो सब चीजों का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। अब हमारे जैसा व्यक्ति, जैसे हम हैं, कपिल गोयल हो गया, तो हम टैक्स, करण जी हम टिपिकल लिटिगेशन लॉयर हैं, सीए वाला काम करते हैं, टैक्स लिटिगेशन वाला संगीता जी काम करते हैं, तो हम लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल एक अलग हो जाता है। हम लोग उसको ज्यादातर इसी एंगल से पढ़ते हैं कि टैक्स प्रपोजल में क्या चेंज आ रहा है और उसमें अभी ज्यादा टैक्सेशन साइड पे चीजों को सिंप्लीफाई हो रहा है या लिटिगेशन का क्या होगा। But I am telling you one thing very importantly, sir. Budget can be read in multiple manners and multiple ways, and everybody's views has a very serious importance in when budget is analyzed. So with these prefatory remarks, I want to say कि जैसे अगर आपने आज बजट को देखा या जब सब सूर्य से आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें काफी सारे चेंजेस तो बहुत अच्छे भी हैं कि जिनमें उनका उद्देश्य सही में ये बात को लेकर है गवर्नमेंट का कि साहब हम लोगों को एक राहत पहुंचाना चाहते हैं। वो करण जी बात डाउट में नहीं है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं जगह जाकर हम लूज कर जा रहे हैं या हम पीछे, जैसे एक कदम हमने आगे बढ़ाया हम 5 कदम पीछे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज अगेन ए वेरी हम्बल सबमिशन, इट्स नॉट ए क्रिटिसिज्म टू एनीबॉडी, इट्स एन एकेडमिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स दैट व्हेन वी गो टू कोर्ट्स ऑफ लॉ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड व्हेन वी, हमें तो जो कुछ मुझे सिखाया कोर्ट्स ने सिखाया, आप लोगों ने सिखाया, मैं ये देखता हूँ कि आज एक चीज को पढ़ने का एक डिस्पैशनेट तरीका ये है कि आप ये देखिए कि उसके आने से, उस प्रावधान के आने से गोयल साहब क्या होगा, उसके आने से क्या लोगों को उससे क्या नाम एक एंजाइटी जाएगी, एंजाइटी बढ़ेगी। जैसे एक किसी ने चंद्रचूड़ साहब को हम सब जानते हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा। लेट मी स्टार्ट माय जुडिशियल एनालिसिस विद हिज वर्ड्स। वी ऑल नो डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़, द चीफ जस्टिस ऑफ आवर कंट्री टुडे। करण भाई, उन्होंने एक जजमेंट लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, मारुति सुजुकी लिमिटेड का इनकम टैक्स का फैसला है, 416 आईटीआर में कहीं रिपोर्टेड है। उस जजमेंट के लास्ट पैराग्राफ में सौरभ जी इन्होंने क्या लाइन लिखी है, और नन अदर देन डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, कि दैट टैक्सेशन हैज टू बी प्रिडिकेटेड ऑन 3 पिलर्स पॉइंट्स। क्या 3 पॉइंट्स? आप नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं, आपके सबमिशन बनाने में मैं तो बहुत रट्टा मार के रखता हूं, देखो साहब, क्योंकि हमें तो जरूरत भी पड़ जाती है करण जी कौन सी लाइन कहां लगानी पड़ जाए, आपको पता है ना, वो डायलॉग तो याद रहने चाहिए। तो उसमें क्या है कि 416 आईटीआर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है मारुति सुजुकी का, जस्टिस माननीय न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ साहब का, उसके लास्ट पैराग्राफ में साहब ने बोला कि सर्टेनिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, सर्टेनिटी, यूनिफॉर्मिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी। मुझे नहीं पता, अब ये आपके लिए है फूड फॉर थॉट, कि अब आप जब इतना बजट पढ़ चुके हैं कि कौन सी ये सारे चेंजेस कितने इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर उतर रहे हैं, सर्टेनिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी, एंड नो ऑफेंस टू एनीबॉडी। तो सौरभ भाई की स्माइल देखो कितनी सरकास्टिक है, इन्होंने इनकी स्माइल बड़ी बड़ी कनिंगली बात को कम्युनिकेट कर रही है। सॉरी सौरभ भाई। तो क्या है कि वो बात आगे जा रही है सर, कि आप मेरे तक भी पहुंच रही है, आप जो मुस्कुरा रहे हैं मैं समझ रहा हूं, और मेरी भाव भी आपको पहुंच गए। तो यूनिफॉर्मिटी, अच्छा मैं कई बार ऐसा करण जी बोलता हूं या समझता हूं, जब हम कोर्ट में जाते हैं कात्रा जी, हम लिटिगेशन देखते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ चेंजेस तो लॉयर्स पैराडाइज है, मतलब उसके लिए लॉयर्स के पास इतना काम आ जाता है, और हमारे जैसे लॉयर जो कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं उनके पास केस ही केस आते रहते हैं। जैसे 148 का चेंज आया था 2 साल पहले 2021 में, अब उसकी लिटिगेशन सर इतनी बढ़ गई है। कल हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उससे शायद हो सकता है कुछ राहत मिले, बट अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग करण जी कि दिस टाइप ऑफ सी, अल्टीमेटली आपको मैंने जो लाइन लिखवाई ना, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रिडिक्टेबिलिटी से क्या समझते हैं? प्रिडिक्टेबिलिटी का करण भाई मतलब ये है कि आपको जैसे आज आप टैक्स देना सौरभ जी, आपको किसी आदमी को, करदाता को, और उसको ये चाहिए, ठीक है, किसी भी करदाता की एक सिंपल से सिंपल एक्सपेक्टेशन संगीता जी ये होगी कि उसको पहले पड़ाव से पता चले कि मुझे इतनी अमाउंट पे इतना टैक्स देना है, कोई इफेंट बट ना हो, कोई उसके लिए हिडन सरप्राइजेस ना हो, कोई इसके लिए कोई ऐसा ना हो कि उसको कोई हिडन चीज आप इतना बड़ा पता चले कि आपने उस पर इतना टैक्स लगा दिया कि वो भाई साहब उसका बिजनेस ही खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि दिस सेक्शन हैज टू बी रैशनलाइज्ड, एंड इवन इट इज टुडे, इवन इट इज नॉट रैशनलाइज्ड 115 BBE। See, ultimately, if I go to Kautilya, if I have to analyze the budget in a different sense, I take you to very old time. कौटिल्य हमारे यहाँ जिन्होंने ये अर्थशास्त्र बढ़ाया था करण भाई, और आज के मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप लिंक करेंगे तो कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। कौटिल्य ने क्या कहा,
आप किसी भी टेक्स्ट कमेंट्री में जाएंगे बड़ी, तो उसमें कौटिल्य के बारे में आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा साहब ने कि साहब कैपेसिटी टू पे के हिसाब से टैक्स सिस्टम होना चाहिए। कैपेसिटी टू पे वर्ड लिख लीजिए आप। कैपेसिटी टू में मतलब जितनी आपकी हैसियत मान लीजिए वो है, वो उसी के हिसाब से आपको टैक्स लगना चाहिए। ये नहीं कि सौरभ भाई आप में वजन उठाने की क्षमता तो 1 किलो आप पे टैक्स लगा दिया 100 किलो का। दैट कैन नॉट बी द लॉ। तो सो अल्टीमेटली व्हेन पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन, वी आर नो बोर्ड, सी हम तो एक सिटीजन है, एक नागरिक हैं, उसके नाते इस बात को डिस्कस ऐसे कर रहे हैं, और कोर्ट के रूलिंग्स आए हुए हैं, और कोर्ट ने कई जगह ये बात बोली है कि एडम जब थे, एडम ने एक बात कही थी कि किसी भी लॉ में अगर आप टैक्स लॉ की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स तो हैं बहुत बड़े, उन्होंने एक बात कही साहब कि आपको पहले से पता होना चाहिए टैक्स पेयर को कि क्लैरिटी के साथ कि कितना टैक्स उस पर आने वाला है। अगर इसमें इफ एंड बट होंगे तो सारी चीजें चरमरा जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आगे दौड़ पीछे छोड़, तू डाल में पात। फिर क्या होगा कि यू विल बी इन ए सर्कुलर मोशन ऑफ अमेंडमेंट्स, कि that amendment will follow amendment, and when Palkiwala used to say, and none other than this country has never seen a lawyer better than Mr. Palkiwala. तो पालकीवाला जी जब अपनी बजट स्पीच करते थे, मेरे जीवन काल में मुझे परमानंद जी कभी मौका नहीं मिला, हमें तो कि हम तो मैंने नहीं सुना उनको कभी, बट जो उनकी किताबों में उनकी बजट स्पीच आई हुई है, मैं उससे आपको 1 मिनट रूबरू करा सकता हूं। मेरे पास सारी किताबें हैं उनकी, उसमें उनका क्रक्स ये है कि साहब जो भी लॉ बनाया जाए, तो ये सौरभ भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा, और कुछ दोस्तों को थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा भी लगेगा कि गोयल साहब क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि लॉ ऐसा बनता है, पर मेरी बात को आप अगर बहुत डिस्पैशनेटली सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें मेरिट है। क्या लॉ बनाते वक्त सिर्फ उन्हीं को देखा जाना चाहिए जो सिर्फ इवेडर्स हैं, या बैलेंस लॉ मेकिंग होनी चाहिए कि जो आपको एक हेल्दी लॉ मेकिंग की तरफ जाना चाहिए? जैसे आपने कोई सेक्शन बनाया और उस सेक्शन में आपने ये सोचा कि साहब सारे लोग तो, ज्यादातर लोग तो टैक्स को अवॉइड करते हैं, इवेडर्स हैं, एक तरीका तो ये हो गया, उसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसमें तो बोनाफाइड वाला भी फंस जाएगा परमानेंट जी। और एक लॉ बनाने का तरीका ये हुआ जनाब कि जहां आप लॉ बना रहे हैं तो आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, आप उस आदमी को इंश्योर कर रहे हैं कि जो गलत नहीं कर रहा है, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको नुकसान नहीं होगा। शेफ और ग्रेन को हम बोलते हैं ना, शेफ को ग्रेन से अलग करने वाली बात। तो सो ऑल दीज थिंग्स आर, आई बिलीव, very important, and sometime when we find, see Asha ji, all this budget making, as I am again saying, and as a humble student of law, I find myself slightly disappointed on that score. It is not like that I am saying budget is bad. I am not nobody to rate budget because I am not having complete knowledge of economics, but I am submitting as a litigant lawyer, tax lawyer, that as a tax jurisprudence student, that when we see the law making and provision of law being made, then they should not be made just because you believe that everybody is stealing the evading the taxes. That cannot be the policy of healthy law making policy. And what happens, Saurabh bhai, all these things land up to litigation, Batra ji, all things, these things land up. See, I can say goody things also, but that is I have already submitted that there are some very good things also. Nobody can discount it. But there are certain things, Batra ji, where we are taking one step forward and we are taking many steps backward. For example, I would like to give you 5-6 examples in this budget. Now, one of the examples, Saurabh bhai, which comes to my mind is that this change of section 142. Now, you see, as a chartered accountant, Batra ji, आप लोग तो मेरे से कई गुना जानते हैं accounts को भी, और आप तो मैं कह सकता हूं कि आप जो कौन सा वो पक्षी होता है वो उससे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, और मैं आपके सामने अकाउंट्स बताने की हिमाकत नहीं कर सकता हूं। बट क्योंकि मेरा भी दिल सीए का तो है ही, लोग मुझे अभी क्या बना दिया, अभी तो मैं एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूं, बट मेरा दिल तो बत्रा जी सीए का ही है, और मेरा दिमाग सोचता भी ज्यादातर सीए की तरह ही है। हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से आई अपीयर बिफोर कोर्ट्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अभी सीए की तरह मेरा माइंड क्या कहता है सर कि अकाउंट्स को अगर चार्टेड अकाउंटेंट साहब ने टैक्स ऑडिट कर दिया है, या कंपनी में आपने ऑडिट कर दिया है सर, और इन्वेंट्री को वैल्यू कर दिया है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस करंट बाय व्हिचएवर इज लेस पे, तो व्हाट इज दिस प्रोविजन? आई डोंट नो। पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा मेरे सर कि स्पेशल ऑडिट का प्रोविजन आया क्यों था। जब आया था 142 सबसेक्शन 2A, आप नोट कर सकते हैं, उसमें चेंज है। सबसेक्शन 2A पहले जो था 142 का क्वात्रा जी, और जो अब है उसमें बड़ा विस्तार आ गया, अब वो अलग हो गया, मतलब उसमें कुछ एडिशन कर दिया इन्होंने। अभी वो क्या कह रहे हैं कि आपकी इन्वेंट्री अगर आपके पास है, इन्वेंट्री डिफाइन नहीं है, इन्वेंट्री का मतलब तो हमें यही समझ में आता है स्टॉक,
एंड आई बिलीव सर इन्वेंट्री इज ए वेरी वाइड वर्ड कि जो आपके पास किसी भी चीज का स्टॉक है जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ रही है सौरभ बाबू, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने अगर उसको अंडर वैल्यू कर रखा है तो वो उसको किसको वैल्यूएशन के लिए भेजेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंट। मैं आप सबको थोड़ा सा फिर पास्ट में लेकर जाऊंगा कि ये प्रिंसिपल आया कहां से कि क्लोजिंग स्टॉक किताबों में वैल्यू होना चाहिए। मेरे ख्याल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमने पढ़ा था आशा जी जब हमने सीए करी थी, कि तो उसमें भी ये बात थी कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। और ये प्रिंसिपल बाबा आदम के जमाने का है, टाइम इमेमोरियल, की जब आप बुक्स बनाते हैं और फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से क्वार्टर जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है ताकि आपका उस साल का सही प्रॉफिट निकाला जा सके। पर सौरभ जी उसमें पॉइंट ये है कि किसी के आप कोई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं, किसी भी लाला का बैलेंस शीट ले लीजिए और स्टॉक ले लीजिए, तो क्या वैल्यूएशन इज एन एग्जैक्ट साइंस? और एक चीज सोचिए कि इनकम टैक्स को हम वैल्यूएशन से कितना कोरिलेट कर सकते हैं। एक तरफ तो इनकम पे टैक्स लेने की बात है जो इनकम टैक्स एक्ट का प्राइम गोल है, और एक तरफ से क्वात्रा जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो अपने आप में एक बहुत सब्जेक्टिव इशू है, उसको ये चेक करा जा रहा है कि नहीं आपके जो डिपार्टमेंट के हिसाब से किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए और आपने उसको 50 वैल्यू कर रखा है। अब भाई साहब ये जो 50 रुपए का डिफरेंस है ये क्या है? ये नोशनल नहीं है क्या? अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, या क्लोजिंग स्टॉक बिकेगा? जब भी बिकेगा कुछ भी होगा उसका अकाउंटिंग तो होगी ना, किताबों के अंदर ही तो है वो, किताबों के बाहर के स्टॉक की बात नहीं कर रहे करण जी, हम अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे। आप किताबों के अंदर जो इन्वेंट्री रखे हुए हैं उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर उसको डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कम पे वैल्यू किया हुआ है तो वो उसको एक सब्जेक्टिव उसको पावर दे दी गई है कि वो उसको कॉस्ट अकाउंटेंट को रेफर कर सकता है प्रोसीडिंग के दौरान। मैं कह रहा हूं सर कर दिया सौरभ जी, और मान लीजिए 100 आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर रखी थी 100 रुपए और उन्होंने इन्वेंट्री की वैल्यू आपके बैलेंस शीट पे, और उसने करण भाई जैसे कोई कहेगा गोल साहब आप ये कैसे कह सकते हो कि 100 का 200 ही होकर आएगा। मैंने कहा भैया जनरली जो हमारा अनुभव है ऐसा तो बहुत कम होगा ना क्वात्रा जी, कि आपने अजय जी ज्यादा का आपने कम का वैल्यू, मतलब कोई कम का बताए उसको कि आपने ज्यादा वैल्यू किया, कम कर दो उसको, ऐसा तो बहुत कम होगा। ऐसा अजय सिंघल जी कर सकते हैं, वो लकी आदमी है, चार्मिंग भी है, हैंडसम भी है, तो हमारा साथ कभी नहीं होगा, कपिल गोयल के साथ बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यह है सर कि अल्टीमेटली व्हाट इज द पॉइंट इज दिस सर कि दैट आपने किसी चीज को वैल्यू कर दिया संगीता जी ज्यादा, तो उससे आप करेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं कि 100 की वैल्यू की रिपोर्ट आ गई, आपने 50 का वैल्यू कर रखा है, तो क्या 50 मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा? और वो हो सकता है, और क्या ये कहा जा सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन की वजह से आपकी इनकम कम दिखाई गई है, लाला ने टैक्स की चोरी करी है? See, it's a very, I don't know from where they have borrowed this kind of concept कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम चेक कराने के लिए पहले कॉस्ट अकाउंटेंट को भेजेंगे, फिर असेसी को ये हैरेसमेंट फेस करने पड़ेगी विद ड्यू रिस्पेक्ट क्वात्रा जी कि अगर वो ज्यादा का वैल्यू करके उसने भेज दिया तो ओनस आप पे आ जाएगा कि आप प्रूव करो कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट गलत है और आप सही हो। आपको ये ओनस अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? और ये ओनर्स मैं बता रहा हूं कि जिसकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक होगा, और ऐसी कितनी बैलेंस शीट होगी जिसमें नहीं होगा, और ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है उसके अंदर कोई। तो आप कहेंगे कि क्या गोल साहब आपका कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे लोगों का कॉस्ट अकाउंटेंट को वैल्यूएशन चला जाएगा? आई कांट एस्ट्रोलॉज, बट आई एम टेलिंग यू द वे वी हैव सीन डिपार्टमेंट वर्किंग, इट्स अ वेरी सीरियस प्रोविजन सर। और कई बार हमारी बात होती है कि जब इस चीज को ऑब्जेक्ट करने का या इस चीज को हेल्दीली रेस करने का सबसे पहला ओनर सौरभ भाई बिजनेसमैन पे है, बीइंग प्रोफेशनल से पहले। अब अल्टीमेटली देखिए अगर ये इस तरीके की प्रोविजन आ जाएंगी और इसमें नोशनल अमाउंट के ऊपर आप चले जाएंगे, रियल इनकम को बहुत पीछे छोड़ देंगे। देखिए मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं सर, आप लोग सब लोग बड़े एक्सपीरियंस भी हैं कि इनकम टैक्स की प्रिंसिपल जो हमने सीखी है सर तरुण जी शुरू से, एक प्रिंसिपल है कि बिजनेस इनकम की जब आप बात कर रहे हैं तो रियल इनकम पे टैक्स लगना चाहिए सौरभ जी, नोशनल इनकम पे नहीं लगना चाहिए। अब ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का जो डिफरेंस है, आपको क्या नहीं लगता करण जी ये नोशनल है, हाइपोथेटिकल है, आर्टिफिशियल है? यस सर। ये कहां से लाएंगे? कोई भगवान आकर दे देगा मुझे? सॉरी ठाकुर जी बाकी बिहारी लाल की जय हो, मैं हमेशा बोलता हूं कौन दे देगा? बाकी बिहारी से बोलेंगे दे देंगे तो सी अल्टीमेटली इट्स नॉट ए क्रिटिसिज्म, अगेन इट हैज टू बी सीन हेल्दीली कनिका जी कि व्हाट इज दिस चेंज अबाउट when a chartered accountant and a tax consultant will face this kind of higher valuation report. In my humble opinion, it will be very difficult to defend this kind of subjective valuations. हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहां पर भी वैल्यूएशन के प्रोविजन आए हैं वहां पर वैल्यूएशन को असेसी के लिए सुमित भाई चैलेंज करना या उसको डिफेंड करना एक कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बड़ा सब्जेक्टिव है।
तो ये जो सेक्शन 142 है आप सबने नोट कर लिया। आप कहेंगे गोयल साहब आगे का फिर क्या होगा? जब तक कोई इसको हाईकोर्ट में नहीं ले जाता, इसलिए मैं सुमित भाई बोलता हूं, और आपके यहाँ आने का मेरा आज एक पर्पज इस टॉपिक को रखने का ये भी था कि सब लोग नॉर्मल तरीके से बजट पढ़ रहे होते हैं, पर इसको ऐसा भी पढ़ना चाहिए कि क्या एसएससी के पास ये अधिकार है जब उसको इस सेक्शन में डाला जाए कि क्या वो इसकी संवैधानिक वैधता को चैलेंज कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा संवैधानिकली इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है सेक्शन 142 का ये नया प्रोविजन, बट आई एम टेलिंग यू that all of us must understand one thing, sir, including me, that what is the supreme law, Sumit ji? Supreme law क्या है? सुप्रीम लॉ, जैसे अब आजकल डिबेट भी चल रही है अदर कंटेक्स्ट में, हालांकि वो हमारा मैटर नहीं है, कि सुप्रीम लॉ करण भाई संविधान है, पार्लियामेंट है, या लॉ मेकिंग लॉ जो बना रहा है वो है? अमित जी क्या है? और हमारे फोर फादर्स ने, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख रखा है भाई साहब, संविधान से बड़ा कोई नहीं है इस देश में। और अगर संविधान से बड़ा कोई नहीं है तो संविधान ने आपको, हमारे को ये राइट दिया है, अधिकार दिया है सुमित जी, कि हम किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सके और इस बात को उनके सम्मुख ला सके कि ये प्रावधान हमारे बिजनेस के लिए, आर्टिकल 19 के लिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, 3 अनुच्छेद लिख लीजिए। ये तीनों अनुच्छेद हमेशा मेरे को लगता है कि हर एक व्यक्ति को पता रहने चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा हमें याद है, सुंदरकांड याद है, मेरे को नहीं याद है, मैं बता रहा हूं लोगों को याद है, हमारी माता जी को याद है, पिताजी को है, पर मैं थोड़ा थोड़ा याद कर रहा हूं। तो आर्टिकल 14, 19, 21 इनको याद रखना बड़ा जरूरी है साहब। और आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू। और आप देखिए भाई, आई डोंट नो, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मुझे लगता है आप लोगों को एक सीरीज करानी चाहिए। मेरा समाज, आप कहेंगे यार गोयल साहब बड़े अच्छे आदमी है, आए तो बाद में सुझाव पहले देने लग जाते हैं, तो ये मेरा अनसॉलिसिटेड संविधान के ऊपर कोर्स कराइए, संविधान पढ़ाई। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना ज्यादा हमारे को चार्टेड अकाउंटेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, उतना ज्यादा हम बेटर रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट के लिए कर पाएंगे। ये मैं बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूं और अनुभव से भी बोल रहा हूं, क्योंकि आज जब संविधान से हम किसी बात को रखते हैं अमित जी, तो उसका फोर्स अलग होता है। आप सोचिए आर्टिकल 19 में क्यों लिखा है कि राइट टू कैरी ऑन बिजनेस कैन बी ओनली इंटरफेयर्ड विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इज इट ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि दैट कॉस्ट अकाउंटेंट विल ऑलवेज वैल्यू माय इन्वेंटरी? आई आस्क माय क्वेश्चन टू माय लर्नेड ऑडियंस, दैट इज द क्वेश्चन मार्क 1. And question mark number 2, that a already given a competent expert and a chartered accountant has already valued the stock. Can it be superimposed by this cost accountant? You can't say I have no right to question. I am a citizen of this country. Constitution give me this right. You can't snatch me. I'm nobody to submit that. Sumit bhai ki ultimately ये गलत है सही है तो कोर्ट डिसाइड करेगी. फाइनल आर्बिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन मेकिंग किसकी है? संविधान कोर्ट की है. तो ये मैं पर्सपेक्टिव में बात को लाना चाह रहा था सुमित भाई। आने वाले समय में हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कानून में टैक्स लॉ में मेकिंग हो रही है अमित जी, क्या वो संविधान के हिसाब से सही है या नहीं है, और क्या वो जो लॉ बनाया गया है वो संविधान के प्रावधान को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को। अब जैसे मैंने आपको सेक्शन 142 में टैक्स जूरिस्प्रूडेंस भी बता दी, अकाउंटिंग सेंस भी बता दी जितनी मुझे पता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस भी बता दी। अब आप इन सबको मिक्सचर करिए तो इसका एक ही तरीका है, एक ही बात निकल के आएगी कि गोयल साहब फिर इसका मतलब तो डिपार्टमेंट के हाथ में एक बड़ा तगड़ा वेपन मिल गया, उनको जहां मिसाइल छोड़नी होगी न्यूक्लियर वेपन की तरह, वो न्यूक्लियर वेपन दाग देगा। यस संगीता जी की आईसी, अल्टीमेटली संगीता जी आईसी का जो रोल है, मैंने इसलिए बड़ी विनम्रता से बोला मैडम, यू आर माय एल्डर सिस्टर, इसी अल्टीमेटली व्हाट इज दिस हैपनिंग, सीए इंस्टीट्यूट का रोल सेकेंडरी है, प्राइमरी रोल इसके अंदर सुमित भाई हमेशा बिजनेस एसोसिएशन का रहेगा। क्योंकि टैक्स, अच्छा किसी ने पूछा, सौरभ जी मैं ही अभी भी पढ़ रहा था, किसी ने पूछा भी कि गोयल साहब अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा हो गई खुदा ना खास्ता, और कॉस्ट अकाउंटेंट की रिपोर्ट के बेस पे, आजकल तो फेसलेस असेसमेंट हो रही है अमित जी, सब उसी में रिपोर्ट आएगी, ये उसी के दौरान होगा वैल्यूएशन, तो अब उसके अंदर मान लीजिए ये एडिशन होता है, तो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नोट कर ले, जुडिशियल साइड का क्वेश्चन है कि किस सेक्शन में एडिशन होगा, ये बिजनेस इनकम में एडिशन होगा या अनएक्सप्लेन इनकम की तरह सेक्शन 69 और 69 जिसके ऊपर लग गया सुमित भाई। मैं हमेशा बोलता हूं ओम शम शनिचराय नमः, 7.5 से भगवान बचाए, 69 जिस पे लग गया उस पे 115 बीबीई की 7.5 लग गई, सब वो गए हो, क्योंकि उस पे तो टैक्स रेट 60% है और उस 60 नहीं है, वो तो 100% है, तो 69 लग गया अगर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन पे, तो क्या क्या डिमांड निकलेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको एक हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट ने कितनी जगह क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर ही 69 लगा दिया, जबकि क्लोजिंग स्टॉक संगीता जी अगर एडिशन होता है वैल्यूएशन का, तो एडिशन तो बिजनेस इनकम का होगा ना, अनएक्सप्लेन इनकम थोड़ी ना पैदा होगी उससे कोई।
Anyhow, I believe I have given you sufficient point on that. And this is a revenue neutral situation, Sumit bhai. Closing stock of 1 year is the opening stock of other year. There is a ruling of Supreme Court of India. You can all note down. 358 ITR. Yes, Sangeeta ji, it is impacting importance of, you're right. See, I will again agree with you humbly that ultimately it is encroaching and क्या कहते हैं ना, जैसे एक आदमी धीरे धीरे हमारे स्पेस के अंदर encroach कर रहा है. You know, there is a word encroachment. And encroachment should not be taken as an offensive word. So our space is encroached somewhere. And this is writ large, Sumit bhai, on the face of it. And that's why you, Sangeeta ji, your point is well taken, at least from my side. That it is like this, that you can't compare this kind of professionals. One professional is evaluating the work of other professional in this what you say, a very nebulous manner and impromptu manner, and in this kind of high-handed manner. So what I was telling you, एक judgment आप note कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कि revenue neutral situations में कोई addition नहीं हो सकता है सुमित भाई. डिपार्टमेंट ने ये प्रोविजन तो बना दिया है. फिर ये बात आगे आएगी क्वेश्चन कि क्या अगर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक मैंने अगले साल में कम वैल्यू का दिखा रखा है और वो आगे चलता जा रहा है और हर एक जगह मेरी असेसमेंट संगीता जी होगी, तो क्या आप एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक पकड़ के सिर्फ एडिशन कर सकते हैं? और आंसर का है नो. यस कनिका जी, वो बिल्कुल कॉमन सेंस है, rudimentary, elementary. That you can't bring an earthquake into my accounting by limitedly interfering in my closing stock valuation. This is a sort of an earthquake into my value, into my accounting affairs. I am giving you a citation of Supreme Court of India, Honorable Supreme Court of India, 358 ITR 295 Excel Industries Limited. That Karanji, 358 ITR 295 says कि if an issue is a revenue neutral issue, कि अगर एक साल की चीज अगले साल में जाकर न्यूट्रलाइज होती है तो उसमें सौरभ जी कोई एडिशन नहीं होना चाहिए. तो ये डिपार्टमेंट मानता नहीं है कई बार. और एक चीज मैं तो हमेशा बोलता हूं सुमित भाई, आप सोचेंगे कि पता नहीं पिछली बार जब भट्ट साहब थे, मैंने जब आपने लास्ट टाइम मुझे बुलाया था तब भी मैंने एक बात कही थी संगीता जी उस समय भी, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे आप, और इससे आपको जो मैंने शुरू में बोला था चंद्रचूड़ साहब के व्यूज और जो सारी बातें बोली थी, आपको लगेगा कि मैं मेरी बात में कितना मेरिट है. आज इनकम टैक्स एक्ट में इस तरीके के प्रावधान सुमित भाई हैं कि जहां रेवेन्यू का कोई लॉस हो रहा है उसको प्लग करने के लिए तो आप बोलते हैं कि साहब ठीक है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. टैक्स लगाने की बात हो, पेनल्टी लगाने की बात हो, प्रोसिक्यूशन करने की बात हो, आपने तो यहां तक कनिका जी इस बार बजट में ये भी क्लैरिफाई कर दिया साहब. और आप देखिए, आई डोंट नो व्हाट इज दिस मोह विद टीडीएस. आप कहेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है गोयल साहब, मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब टीडीएस का नाम आता है. तो पता नहीं मेरा और टीडीएस का किस तरीके का बेट एंड ऑवर वाला संबंध हो गया. आजकल मैं टीडीएस को कभी देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीडीएस चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ रहा है सर. बट अब आप लोगों को बात कहनी है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा. सौरभ बाबू, एक मिनट में सौरभ बाबू आपकी तरफ आ रहा हूं. 276B, जस्ट बियर विद मी फॉर सम मोमेंट. तो 276B में वो क्या कह रहे हैं कनिका जी कि अगर आपने काइंड की चीज पे टीडीएस नहीं काटा तो उसको क्लैरिफाई कर दिया, अगर उस पे भी आपने टीडीएस का कोई डिफॉल्ट कर दिया तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाएगा. जबकि इतना ज्यादा कवात्रा जी टीडीएस से मोह और ऐसा लगना कि सब कुछ टीडीएस में ही हो जाए, जैसे कहते हैं ना हमारा जन्म और हमारा आनंद सब टीडीएस में हो रहा है क्या सर. फिर वो बाकी का रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, वो क्या है. और आपको मैं हमेशा एक क्वेश्चन पोज करता आया हूं कि अगर आपने सब कुछ टीडीएस में ही करना है और आपका टीडीएस इतना बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड चैप्टर हो गया कि उसका परिवार इतना बढ़ गया है कि उसमें पता ही नहीं चलता कितने सदस्य हैं. हर एक साल 4-5 लोग उसमें ऐड हो जाते हैं सेक्शन, और ऐड होते ही रहते. दूधो नहाओ पूतो फलो, वो दूधो नहाओ पूतो फलो सुना, दूधो नहाओ पूतो फलो चल रहा है यहां. और ये परिवार बढ़ोतरी की तरफ है, जबरदस्त बढ़ोतरी की तरफ है सर. इनका बहुत जबरदस्त चल रहा है टीडीएस चैप्टर का. सॉरी. और उसमें क्या मेरे जैसे कम समझ के व्यक्ति को, जिसको कम समझ में आता है, उसके लिए समझ पाना तो बड़ा चैलेंज है सुमित जी की ये टीडीएस क्या है और कितने सेक्शन है और कौन सी चीज कहां फिट होगी. अब मैं बात पे आ रहा था कि टीडीएस को आपने जब इतना विस्तार कर दिया है तो क्या आपने उसको इसी एक तरफ तो ये बात हो रही है सुमित जी की मैं टीडीएस कंप्लाई कर रहा हूं, टीडीएस के रेट्स आ गए, टीसीएस बढ़ गया 5 से 20% हो गया एक जगह, तो और टीडीएस के सेक्शंस भी आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या आप उसको रैशनलाइज कर रहे हैं कि इन ए सेंस दैट कि टीडीएस का प्रोविजन एक बेन ना हो जाए. सी इट कैन बी बून समवेयर बट इट शुड नॉट बी बेन. You know the difference between boon and bane, I believe. So now, Sangeeta ji, this TDS has also become somewhere to my mind bane.
because it is becoming so complex and so hard to understand at times and difficult to implement. And this is creating a bridge between the real income taxation, Batra ji, and right taxation. क्योंकि आप देखिए अगर ज्यादा टीडीएस कट गया उसकी वजह से मेरे को हमेशा एक फील होती है बात सर कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसमें रिफंड मांगना पड़ेगा, आपका केस सिक्योरिटी में आएगा कनिका जी, आप उसको समझाने जाएंगे तो ये सारा जो रिग में रोल है और जो मंत्र है, विधि विधान है, ये चालू हो जाएगा। और हो सकता है उस रिफंड के चक्कर में ही आपको, और ज्यादातर हमने प्रॉब्लम कहां देखी सौरभ जी, जब आप रिफंड मांगने जाते हैं तो डिपार्टमेंट को कई बार बहुत दुख होता है, कई बार कि रिफंड क्यों मांग रहे हैं, ये पर्सोना नॉन ग्रेटा है। पर्सोना नॉन ग्रेटा समझते हैं ना? अब बोलिए सौरभ बाबू, कुछ कहना चाह रहे थे आप? Sir, couple of minutes ago you were telling about that no addition due to revenue neutral situation can be done. Yes, Saurabh. So what was the case law that you were citing? 358 ITR दादा 295. 358 ITR 295 एक्सेल इंडस्ट्रीज। देखिए हमारी आशा शर्मा जी ने नोट भी कर लिया है। हाँ, आशा जी ने लिख के भेजा है, वेरी स्वीट आशा जी। तो इसमें में एक मिनट ये था बताने का कि अगर एक चीज जाकर आगे ज्यादा रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाती है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और उसका कारण ये है कि आपको टैक्स से मतलब है ना, ईयर से क्या ज्यादा प्यार कर रहे हैं आप समझ गए बात? ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि एनर्जी शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन दिस फ्रिवोलस थिंग्स। अब मैं यही तो बात आपको अभी एक मिनट अभी इसको कह रहा था मैं कि जैसे अब आपने सारे इनकम टैक्स लॉ में सर तो सुमित जी डिपार्टमेंट को पूरा राइट है गवर्नमेंट को कि जहां जहां पर लूपहोल है करण जी उसको प्लग करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, डू। बट क्या आप ये भी कर रहे हैं कि आपके ऑफिसर अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं और डिसोबे कर रहे हैं ओपनली, उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है? और उसके लिए न्याय के लिए किसको दर दर की वो करना पड़ रहा है? आपने कितने असेसमेंट ऐसे देखे हैं जहां असेसिंग ऑफिसर ओपनली कह देता है कि नहीं साहब मैं ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा, जो आपके फेवर में है, अगेंस्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूं। संगीता जी अमेंडमेंट इंफ्रुक्चुअस होगी नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा मैडम, बट हाँ जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है संगीता जी वो बिल्कुल क्लियर है कि आप क्लोजिंग स्टॉक की वजह से किसी आदमी के इनकम में एडिशन नहीं कर सकते। देखिए मैं सुमित भाई कई बार सोचता हूं, देखो मेरे दोस्तों को एक ही पॉइंट पकड़ के बैठता हूं तो उसी पे लग जाते हैं। तो अभी हम इसी को संगीता जी मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अमेंडमेंट इंफ्रुक्चुअस नहीं हो रही, बट उस अमेंडमेंट के बाद भी एडिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा इनकम में, वो सुप्रीम कोर्ट के जो सेटल्ड प्रिंसिपल है संगीता जी वो साथ चलेंगे। और नहीं चलेंगे तो ये प्रोविजन आर्बिट्रेरी भी बन सकता है। आप समझ रहे हैं? आई होप यू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू मैम। So what I was submitting Saurabh bhai that ultimately at the end of the day what matters is that when you are making some changes Kanika ji, you should not make only those changes where you find that revenue is loophole is there. You should also make those changes which creates better tax administration and a smooth tax administration and harassment free tax administration. It might reduce work of advocates like Kapil Goel. But Saurabh ji, that is a lighter side point that cannot become a point of matter of कि साहब हम ऐसा चेंज तो नहीं लाएंगे ना जिससे लिटिगेशन कम हो जाएगा या लोगों को हैरेसमेंट कम होगी। Somebody can say it. तो अल्टीमेटली मेरा कहना यह था कि जैसे सेक्शन 263 आप नोट करिए, उसमें लिखा हुआ एक जगह आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपको बड़ी कमाल की लगेगी बात। 263 में लिखा हुआ है सर कि एक एक्सप्लेनेशन है, डीम टू बी ऑर्डर्स विच विल बी treated to be deemed to be erroneous and prejudicial to interest of revenue. तो कनिका जी उसमें ये माना जाता है कि जो ऑर्डर विभाग मान लिया जाएगा वो ऑर्डर का सूची दी हुई है और उसमें एक दो पॉइंट है कि जो चीज डिपार्टमेंट के फेवर में कोर्ट के रूलिंग आए हैं हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के, अगर एओ साहब ने आपके असेसमेंट में उसको नहीं देखा है तो उस ऑर्डर को कमिश्नर साहब 263 की पावर के तहत रिवाइज कर सकते। अब आप सब मेरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्या यही चीज उल्टे तरीके से जो 264 का प्रोविजन है और कहीं लिख रखी है कि अगर करण जी एओ फेवर वाला कोई ऑर्डर है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का और वो नहीं मानेगा किसी असेसमेंट में, उस असेसमेंट को असेसी के खिलाफ मान लिया जाएगा? भैया दोनों चीजें हैं तो सेम ही ना। आपने अपने फेवर का तो कर दिया, हमारे फेवर का क्यों नहीं करा आपने अभी तक? आज तक क्यों नहीं? और 2015 में जेटली साहब लाए थे एक्सप्लेनेशन 2, ये भी नोट कर लीजिए। और आज 2023 हो गया है, 8 साल बाद है। I am still yet to search that provision in the Income Tax Act where they say that कि अगर असेसी के खिलाफ जो असेसी के फेवर का जो ऑर्डर है अगर नहीं माना गया तो उस असेसमेंट को गलत माना जाएगा और आपसे टैक्स रिकवर नहीं होगा, आपको डिमांड को अबेंस में रखा जाएगा। क्यों आपको स्टे के लिए धक्के खिलाए जा रहे हैं? हमारे को क्यों 20% हर एक केस में मांगा जा रहा है?
जहां पर खासकर आपने आर्बिट्रेरी असेसमेंट कर दिया और जुडिशियल डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया है? और क्यों आपके ऑफिसर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जुडिशियल डिसिप्लिन फॉलो करेंगे? और क्यों आप नेचुरल जस्टिस देने के लिए तैयार नहीं है? क्यों आप ओरल हियरिंग देने के लिए तैयार नहीं है प्रॉपर? क्यों आप शो कॉज नोटिस देने के लिए तैयार नहीं है? ये मैं आपको हवा में नहीं बोल रहा हूं, रोज केस इसी पे चल रहे हैं सारी इंडिया के अंदर। हाई कोर्ट में अमित जी केसेस, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, यही है नेचुरल जस्टिस। तो ऐसा तो है नहीं उनको पता नहीं है कि हमारे ऑफिसर्स नेचुरल जस्टिस की धज्जियां उड़ाकर काम कर रहे हैं। तो उसको सेंसिटाइज कौन करेगा संगीता जी? उसको चेंज कौन लाएगा? वो चेंज क्यों नहीं आ रहा कि आप अपने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करें कि आप अगर टैक्स पे राइट्स का उल्लंघन करेंगे तो आपकी खैर नहीं है। जब आप असेसी को बार बार बोल रहे हैं कि आपकी खैर नहीं है अगर आप टैक्स का वायलेशन करेंगे, तो असेसिंग ऑफिसर को भी तो मैसेज जाना चाहिए। What is this kind of discrimination going on? Sorry, आपके असेसिंग ऑफिसर को तो सब राइट्स मिल जाएं असेसी को इंटेरोगेट करने के लिए, और असेसी के पास, बेचारे के पास कोई राइट ना हो। और एक बात सुमिता, मैं लेटर साइड पे कहता हूं, देखो हम तो बिजनेसमैन के बच्चे हैं, फैमिली के। और दूसरी बात एक और है कि हमने बिजनेसमैन का अन्न बहुत खाया हुआ है, तो थोड़ा सा जिसका अन्न खाया होता है ना, हमारे दूसरे का है कि उसका अन्न खाया होता है, वो भी दिमाग में रहता है। ये अन्न देश का भी खाया है, अन्न स्टेट का भी खाया है। बट अल्टीमेटली क्या है कि बात ये हो रही है कि साहब, आप जब लॉ मेकिंग बना रहे हैं तो नेचुरल जस्टिस को आप कितना तवज्जो दे रहे हैं और कितना एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप एसएससी के राइट्स का सम्मान कीजिए। मैं दूसरी बात पे आता हूं, सेक्शन 132 नोट करिए। 142 हो गया, 132। सुमित भाई, ये गजब का चेंज है। मतलब ये चेंज गजब का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्रैक्टिस काल में मैंने आधे केस 148 के लड़े और आधे सर्च के लड़े। मेरे पास दो ही टाइप के केस आते हैं, सेक्शन 148 और सर्च। पता नहीं क्या चक्कर है। एनीवे, अब जो सर्च होती है इसके यहाँ, वो बड़ा, उसको दो पॉइंट से देखा जाता है अमित भाई। एक हमारे दोस्त बोल रहे थे, यार गोयल साहब आप खाम में सर्च के प्रोविजन को क्रिटिसाइज करते हो, आपकी तो प्रैक्टिस ही ज्यादातर सर्च की चल रही है। आप डिपार्टमेंट को कभी बढ़ाई भी तो कर दिया करो कि देखो इतना अच्छा सर्च कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं मेरे मुंह से निकलता क्यों नहीं है। मैं कोशिश बहुत करता हूँ कहने की, पर हो नहीं पाता मुझसे। ये सर्च बहुत अच्छे के लिए हो रही है, ये मैं कह नहीं पाता हूँ सुमित भाई। ये दिस इज माई प्रॉब्लम। शायद मेरी कमी है कि मुझे ऐसा अपने आप को करना चाहिए कि नहीं, सर्च बहुत अच्छे के लिए हो रही। अजय, मेरे दोस्त मजाक में, सुमित भाई की पर्सनैलिटी आप जैसी है, हैंडसम, वो कह रहे हैं गोयल साहब ये सर्च होने से ना, पता है आपको, ये नहीं शायद पता। मैंने कहा क्या? कह रहे हैं जिसके सर्च हो जाती है ना, उसका रिश्ता विश्ता बहुत अच्छा होता है, क्या पैसा वैसा भी अच्छा लगता है, सब उसकी वैल्यू, जैसे भी वैल्यूएशन की बात हो रही है, उसकी वैल्यूएशन मार्केट में अच्छी हो जाती है। ये तो गजब का काम है। तो अगर लोग करा भी लेते हैं अपने ऊपर सर्च, उनका कहना ये था। मैंने कहा मैं तो आज तक इस बात से अभिभूत नहीं था। सर्च पैसे वालों की होती है ना, पैसे वालों की सर्च होती है तो ये टैग लग जाता है कि उनके पास ज्यादा माल है। हाँ, ये माल वाली जो बात आपने कही ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनीहाउ, अभी आगे बढ़ते। राइट। तो दादा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कपिल गोयल का टिपिकल स्टाइल पे आ जाइए। डागा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, इनको माइक ओपन कर दीजिए। क्या कह रहे हैं सर? और एक और दोस्त है, ओपन कर दीजिए सर। अलाउड? डागा जी माइक ओपन करके पूछ लीजिए। डागा जी बोलिए, अपनी चेहरा तो दिखा दीजिए दादा। हाँ जी, कपिल जी। हाँ बोलिए दादा, राम राम। हाँ राम राम। आप जो ये कह रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल के बारे में सर, और कि एक सीए के काम को दूसरा सीए में चेक करेगा, मेरा इसमें आपको कहना ये था कि अभी 142(2)A का जो क्लॉज है उसमें भी तो दूसरा सीए तो आपके किए हुए सीए के ऑडिट को चेक करता ही है ना। तो ये पॉइंट अपना कैसे सीएमए के करने से कहा है इनवैलिड हो पाएगा? आपकी बात यहाँ तक सही है दादा जी कि दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर गोयल। आज तक ये बिल्कुल क्लियर है कि सीए, ठीक है, ऑडिटर का काम ऑडिटर चेक कर रहा है, बट अब यहाँ सीए का काम, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, कॉस्ट अकाउंटेंट चेक करेगा। दिस वैल्यूएशन इज नॉट विद द सीए। दोनों में अंतर हो गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आप उसकी बात कर रहे थे और उसमें कह रहे थे कि एक का काम दूसरा, तो ये तो प्रैक्टिकल अभी भी है कि एक का काम दूसरा चेक कर रहा है ना। नहीं सॉरी सर, मेरा पॉइंट उस पे अटैक करने ज्यादा, मेरा पॉइंट अरुण बाबू उस बात पे ज्यादा है, आप अप्रिशिएट करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा संविधान में, यू विल अप्रिशिएट आर्टिकल 19 इज वेरी क्लियर डागा जी कि दैट आई हैव राइट टू कैरी ऑन बिजनेस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड नो प्रोविजन कैन बी मेड बाय द legislature. Supreme Court in triple talaq case by Shara Banu case, leading case, has said manifestly arbitrary provision cannot be made. Even in tax law, it cannot be made. Now, my angle to say is this: not only to this power has been given to a particular type of professional. My main attack is this, Dada, ki it is an interference in my right to carry on business beyond a reasonable point. Why? I have a reason to submit. Maybe we can have a difference, but I have my own reason to understand it. नहीं, कपिल जी, मेरा ये कहना है कि सीएमए के करने से
आपका नहीं वो राइट चैलेंज हो रहा है और सीए You के are करने right, से नहीं you हो are- रहा, ये दोनों मंत्र क्यों है? नहीं भाई आप वो तो अभी 142A में that है, is तो why पहले से भी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अभी भी चैलेंज नहीं हुई, उसको नहीं सर, ऑडिट करने का नहीं अधिकार उसकी अभी हुई भी है सर, हुई है, कॉम्पिटिशन के आपको पॉइंट मैं ऑफ बता रहा व्यू हूँ, से। हुई, दैट इज आई एम क्लैरिफाइंग यू, नो सॉरी, you read the judgment of Delhi High Court by Justice Ravinder Bhatt in case of Patanjali case. This is a reported judgment argued by Mr. Ajay Vora, order authored by S. Ravinder Bhatt on the constitutional validity when 142(2)A was last time expanded, और उसमें आपको याद होगा दागा जी, you will appreciate कि वो जो नहीं डाला था उन्होंने, बिजनेस वाला सब डाला था, उसको उन्होंने अपील कर दिया। मैं यहाँ ये बात पे अलग बात पे हूँ दादा, अभी तक आज तक जब से 1961 का एक्ट बना और 1922 का एक्ट, आई कैन सबमिट you go to 1922 एक्ट, यू चेक 1961 एक्ट और 145 के अंदर सबसेक्शन 3 में अलग से लिखा हुआ है कि अगर आपके मेथड ऑफ अकाउंटिंग सही है तो उसको पूरा रिस्पेक्ट मिलेगा। नाउ क्वेश्चन विल बी दिस, व्हेन यू विल चैलेंज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कोर्ट हैज टू एग्जामिन कि वेदर दिस 142 इज अगेन इंटरफेयरिंग इन 145 सबसेक्शन 3, यू नोट इट डाउन कि 145 सबसेक्शन 3 क्या कहता है और 142 क्या कह रहा है, और दोनों में हेड ऑन क्लैश हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं एक्चुअली क्या मेरी बात को, मैं अपनी बात को पहुंचा नहीं पाया कपिल जी। मेरा सिंपल सबमिशन ये है कि 142(2)A में यदि एक ऑडिटर एक सीए का काम दूसरा ऑडिटर सीए ही देखता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, चैलेंज हो मैं रही क्लैरिफाई कर चुका हूं, वो बात करने दादा जी से आपकी सही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आ जाती दादा है। जी, वहां ये तक बात आप और मेरे, वहां तक मैं और आप एग्रीमेंट में सर, हैंड रेज किया। सर मैं क्या कह रहा हालांकि मैं भी आपका चार्टर्ड ब्रदर हूँ, तो मैं हम कोई डिसएग्रीमेंट में नहीं है, जस्ट मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई हाउ यू आर टेलिंग दिस थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशनल दादा जी वैलिडिटी इसमें चैलेंज होगी, मैं भी इसमें नहीं उसको बड़ी, होगी। बल्कि आप पता है क्या होता है कई बार दादा, मैं दादा इसलिए बोलता हूँ, दादा को आप मतलब समझते हैं ना बंगाली में कि आप बड़ा भाई, बड़े भाई को दादा ही बोला जाता है और मैं उम्र में आपसे बड़ा ही हूँ। दाऊ जी भी बोलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि क्वेश्चन सर, आपके क्वेश्चन को तो मैं बहुत अच्छे सेंस से ले रहा हूँ, पर मैं अपनी बात को ऐसे क्लैरिफाई कर रहा था, एंड आई एम हम्बल्ड बाय योर क्वेश्चन कि सी इट इज अ डिफरेंट मैटर कि क्या काम कॉस्ट अकाउंटेंट चेक कर रहा है, दिस इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, आई रिपीट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पॉइंट विल कम, यू विल रिकॉल, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह ये बात रखी है सुमित जी कि राइट सी अल्टीमेटली बिजनेस चलाने का काम किसका है, बिजनेसमैन का है, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना भी उसी में आता है और वो भी आर्टिकल 19 का काम है। तो अब ये जो नया प्रोविजन आया है 42 में, वो आपके आर्टिकल 19 के राइट को इंटरफेयर कर रहा है नहीं कर रहा, दिस इज क्वेश्चन मार्क, दैट इज व्हाई दागा जी आप और मैं दोनों एक ही पेज पे हैं, हम अलग अलग पेज पे नहीं है, पूर्ण सहमति है। अरे डियर कपिल जी, मेरा ये कहना है यदि वो आर्टिकल 19 की आ रहा है तो वो तो उसमें भी आ रहा है कि वो जो ऑडिटर को करने के दे रहा है, सर उसमें फर्क है, नहीं उसमें फर्क नहीं सर, नहीं उसमें फर्क है, अभी इक्विटी का पॉइंट है तो क्यों दे रहे हो आप उसको? नहीं सर उसमें फर्क है दादा, उसमें आप सॉरी वी विल डिबेट इट सम टाइम मोर, बिकॉज़ मैं आपके साथ किसी दिन और करूंगा उसमें, और इसमें कोई नहीं, मेरा जो पॉइंट था वो मैंने रेज कर दिया, बाकी तो ठीक है। मेरे पास इसको अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए दादा जी 10 अभी मैं आपके साथ पूरी रात तक इस पॉइंट पे डिबेट कर सकता हूं, मेरे पास इतना मसाला है, मैं और हेल्दी लेता हूं अपनी चीज को, मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोलता हूं कोई बात, मेरे पास पूरी रिसर्च है अपनी करी हुई कि ये क्यों मैं बोल रहा हूं, बट आई ऑलवेज सबमिट कि आप, मैं किसी चीज को अपने तरीके से देख रहा हूं, आप अपने तरीके से देख रहे हैं, हमारे पास राइट है, और मेरे पास अपनी चीज को, आज मैं 115 बीबी आपको बता रहा हूं कि 115 बीबी आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, आई चैलेंज इट बिफोर पंजाब, सॉरी आई हैव माय ओन वे ऑफ लुकिंग एट इट, प्लीज। Supreme Court decision of 295, I read it out. It's a very well versed and it is beneficial to us. There is no problem at all. I appreciate, but I just raise the hand for the two different thing, 142(2)A by the CA। सर आज ना पता है, मुझे लगता है आज सुमित जी आपका सेमिनार हमारा सेक्शन 142 पे रह गया, मेरे को तो लग रहा था टाइम ज्यादा रहेगा, मैं बोर हो जाऊंगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ये टॉपिक एंडलेस है, आपका वेल पॉइंट नोटेड हो चुका है। ओके सुमित जी ये लाइटर साइड पे बोल रहा हूँ मैं चीजों को और जॉली करने के लिए। देखिए क्या है, कभी हम किसी प्रोविजन में घुस जाते हैं ना सौरभ जी, उससे बाहर नहीं निकल पाते, ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है और ना उसको, क्योंकि being a chartered accountant we have a thinking brain, parachute minds, and I take it all discussions very healthily. Anyhow, I was on Sumitji's 132. Now you see this is also a very tricky change. आज तक आप सेक्शन 132 सबसेक्शन 2A खोल के पढ़िए, उसमें ये पावर दी हुई थी किसी के अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करने आ रहा है तो पुलिस ऑफिसर वगैरह की सुमित भाई सिर्फ वो रिक्विजिशन ले सकते थे,
बट अब उन्होंने क्या पावर दी है, ये एक अलग एक लाइटर साइड का विषय बना सौरभ भाई, कि उन्होंने कहा सेक्शन 132 में सर्च करने आएंगे तो हमें डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, सारे प्रोफेशनल चाहिए। अब उन्होंने प्रोफेशनल में सुमित भाई किसको मान लिया, कारपेंटर को और लॉकस्मिथ को भी प्रोफेशनल मान रहे। तो वो ये कहा लिखा है, मेमोरेंडम में लिखा है। तो वो कह रहे जिसके सर्च करने आ रहे हैं, सर्च टीम तो आएगी आएगी, और पुलिस की सहायता जो चाहिए थी वो तो मिलेगी मिलेगी। जितने भी प्रोफेशनल की जरूरत उनको लगता है सर्च टीम को, सर्च के दौरान वो भी सर्च टीम को सहायता कराने के लिए वहां रहेगी, और अगर उनको वैल्यूएशन कराने के लिए भी बोलना है तो वो वैल्यूएशन भी करेगा। अब इसका डिपार्टमेंट साइड क्या है, गवर्नमेंट साइड? गवर्नमेंट साइड ये है सौरभ जी की आज बहुत सारी चीजें क्लाउड में है, फॉरेंसिक सेंस से देखी जाती है कनिका जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी मस्ट हैव द असिस्टेंस ऑफ द domain experts at the time of search itself, and they have their own justification. But I will again say in my own critical style with due respect to others. That is why I was saying to Daga ji, we can all, and I said in the beginning also, Sumit bhai, we always have a different viewpoints. That's or should be always welcome, and that is how courts works. So, and healthy democracy works. So what is now I'm submitting is that this change has a very serious effect now, Saurabh ji, ki जिसके यहाँ पर भी सर्च करने आएगा विभाग, वो सिर्फ सर्च टीम को लेकर नहीं आएगा कनिका जी, वो सारे वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स भी उस असेसी के सर पे रहेंगे। जो डिपार्टमेंट को लगता है, और किसको लगता है सौरभ जी जरूरत पड़ेगी, वो डिपार्टमेंट तय करेगा कौन आएगा। उसमें सिर्फ एक चेक एंड बैलेंस उन्होंने डाला है कि कमिश्नर की अप्रूवल से आएंगे, हायर अथॉरिटी के अप्रूवल से लेकर उनको। अब क्वेश्चन ये कि जब आपकी टीम में सर्च के अंदर डिपार्टमेंट आ रहा है तभी मेरी प्राइवेसी राइट इन्वेड हो रही है। देखो मैं इसको ऐसे देखता हूं, आर्टिकल 21 केएस पुट्टू स्वामी 9 जज बेंच का डिसीजन संगीता जी, कि जिसके यहाँ सर्च करने आ रहे हो डिपार्टमेंट ही मेरी राइट को इन्वेड कर रहा है। अब क्या होगा, 8 लोग और आएंगे, वो भी पैरेलली मुझे इंटेरोगेट करेंगे। और सुमित भाई इन सब का जो इफेक्ट है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, in my career I have argued 3000 cases with high court and tribunal, and I have seen this, all these powers are not used for the benefit of the justice but are misused against the taxpayer, and I am saying with responsibility at my command. I have various judges to court in the high court and supreme court of this country which have said that the more naked powers you give to the administration, more they are abused. एंड अल्टीमेटली सौरभ जी क्या होगा कि जिस आदमी की अप्रेजल रिपोर्ट बनती है सर्च के बाद, आप लोगों को पता है जिन जो सर्च देख चुके हैं, सर्च के बाद अप्रेजल रिपोर्ट बनती है, सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक आदमी, सॉरी मैं कनिका जी एक अलग सी एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, वो जैसे किसी आदमी की वो भगवान को प्यारा हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ वो रखवाया जाता है कौन सा, गरुड़ पाठ, और गरुड़ पाठ में वो नदी आती है, उसको पार करने की बात आती है। सुमित भाई ये वो नदी है, सॉरी मैं उसको उससे इक्वेट कर रहा हूं। तो आप संगीता जी सही हंस रहे हैं कि ये जो जिसके यहाँ बैतरनी नदी क्या बोलते हैं उसको। तो कहने का तात्पर्य है साहब कि जिसके यहाँ सर्च करने डिपार्टमेंट सुमित भाई आ गया, वो राधे राधे है भैया, उसको बाके बिहारी लाल का प्रणाम, वो अपना सारा मंत्र करे और उसको शक्ति दे भगवान। देखो मैं कॉमिसरेशन ही दे सकता हूं, बट दिस पावर आई एम टेलिंग यू इट कैन गो टू एनी डायरेक्शन, क्योंकि उसके साथ उन्होंने उनको बोला वो तो लेकर आएंगे। आपके पास उस चीज की कोई सामग्री है, उसकी वैल्यूएशन की भी पावर उनको दी अलग से, और वो असेसमेंट से पहले है, सर्च असेसमेंट तो बाद में होगी, सर्च जब चल रही है उसके दौरान वैल्यूएशन की पावर है। तो सुमित भाई दिस 132 चेंज इज अगेन ए क्यूरियस चेंज। मेरे को 142 का चेंज क्यूरियस लगा, वो मैंने काफी देर तक आपके साथ एनालाइज कर लिया। 132 का भी चेंज बड़ा क्यूरियस चेंज है। नाउ 2 चेंजेस मोर सुमित भाई, मतलब दे आर एब्सोल्युटली वर्थ डिस्कसिंग आई बिलीव। और आपके यहाँ पता नहीं उसको पहले कितनी डिस्कस हुआ है, मेरे को लगता है इन पे आपको सुमित भाई अलग ही सेशन कराना पड़ेगा। कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, अब फिर मैंने जो पालकी वाला साहब की बात बोली थी ना, भूलना चाहिए कि सारे लोग चोर हैं, एक तो वो मेंटालिटी है, सब चैरिटेबल ट्रस्ट गलत काम कर रहे हैं, सब चैरिटी को मिसयूज कर रहे हैं, कोई चैरिटी कर ही नहीं रहा है। आप अगर इस धारणा से कानून बना रहे हैं तो फिर मेरी बात खत्म होगी, मेरे को बात करनी नहीं अगली। और फिर आप अगर ये मानते हैं कि नहीं साहब इस देश में चैरिटी, जब कोविड आया इतने लोगों ने, नॉन एनजीओ ने इतना अच्छा काम किया, सौरभ जी हम उसको कोई नहीं कह सकता सेंसिबल आदमी की वो चैरिटी काम नहीं करते, चैरिटी सब फ्रॉड होते हैं। अब आप देखिए संगीता जी चेंज क्या है, मतलब एक होता है हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से ही निकल के आता है। मैं संविधान को देखिए, मेरी बड़ी खराब है, मैं संविधान को आजकल जितना पढ़ता हूं उतना मेरा प्यार उससे बढ़ता जा रहा है। आर्टिकल 14 से एक बात, और ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, आर्टिकल 14 विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आर्टिकल 14 में एक पॉइंट है जो निकल के आया जूरिस्प्रूडेंस से, सुमित भाई आप सब नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि कोई भी एक्ट, कोई भी अथॉरिटी कर रही है, कोई भी कानून में प्रावधान आ रहा है, वो प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए, मतलब जितना उसका प्रोपोर्शनल बैलेंस होना चाहिए।
अब ये सौरभ बाबू, ये प्रोपोर्शनैलिटी का पॉइंट 142 पे भी लगता है, 132 पे भी लगता है, सब जगह लगता है। और धनंजय चंद्रचूड़ माननीय मुख्य न्यायाधीश इस भारतवर्ष के, उन्होंने खुद कई जगह लिखा है कि अगर कोई भी कानून प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को ब्रीच करेगा तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। और ये इजराइल के कानून से हमने संविधान से लिया है, अपने इंडियन से। एनी हाउस, अभी मैं क्या कह रहा था, अब चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्शन 12A नोट करिए, 12A। अब उसमें कनिका जी क्या कह रहे हैं, जिन लोगों को गवर्नमेंट के पास जाकर, कमिश्नर के पास जाकर, इनकम टैक्स के पास जाकर अपना रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कराना है और वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना है, उसकी एप्लीकेशन में अगर सुमित भाई उनसे क्या क्या वर्ड लिखे हैं, उनको मैंने कहीं लिखा था, रट्टा मारा था, फॉल्स इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, और या इनकरेक्ट दिए। 3 वर्ड लिख लीजिए, फॉल्स, इनकरेक्ट, कंप्लीट। और इन वर्ड को आप डिक्शनरी में ढूंढिए, किसी भी लॉ लेक्सिकन में ढूंढिए। फॉल्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुमित भाई, फॉल्स, इनकरेक्ट और कंप्लीट नहीं है। तो संगीता जी, अगर किसी ने कोई ऐसा आवेदन फाइल किया जिसमें अगर इनमें से कोई इन पर भी आप फंस गए, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, फॉल्स तो चलो डेलिब्रेट हुआ, मेरे को ज्यादा आपत्ति इनकरेक्ट वाले से है और उससे है कंप्लीट वाले से। मान लीजिए सुमित भाई, आपसे इनऑक्यूअसली कोई ऐसा कॉलम मिस हो गया या गलती से भरा गया जो आपकी कोई ऐसा मंशा नहीं थी, डेलिब्रेट इंटेंशन नहीं था, और उससे पूरे फॉर्म पे कनिका जी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर आपने कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे दी किसी भी फॉर्म में, या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी, बट इनकरेक्ट भी है, तो परमानेंट जी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। भाई साहब, ये कोई कानून है सर? ये मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट को हम क्या समझ रहे हैं कि क्या वो उनके पास हजारों सीए होते हैं और उनके पास सब कुछ है और वो सुपर ह्यूमन बीइंग है? हमारे असेसिंग ऑफिसर तो ऑर्डर पास कर सकते हैं और उसमें सेक्शन रहित ऑर्डर, मैंने तो बहुत देखे हैं सेक्शन रहित ऑर्डर। सेक्शन रहित ऑर्डर का मतलब समझते हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि उसमें आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका एडिशन किस सेक्शन में हुआ है। वो ऑर्डर बतेरी तादाद में मिल जाएंगे आपको। मेरा ऑफिस चैम्बर रोज ऐसे केसेस को डील कर रहा है हमारे आपके। तो यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट से, इनॉक्यूअस चैरिटेबल से कनिका जी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उससे एक गलती हो गई बेचारे से तो उसका रजिस्ट्रेशन ही उड़ा देंगे आप। और सुमित भाई, ये रजिस्ट्रेशन उड़ाने की सजा आपको पता है? एग्जिट टैक्स, फेयर मार्केट वैल्यू पे जितना उसके पास पड़ा है उस सब पे टैक्स ले लेंगे आपसे, ट्रस्टी से। तो ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन क्यों डाला गया सर? फॉल्स इंफॉर्मेशन समझ में आता है सौरभ जी, पर ये बड़ी सी वर्ड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। एनी स्लिप ऑफ एरर, any punching error, any silly mistake, Kanika ji, can lead to incorrect statement, information, and it can lead to dangerous, what you say, lethal consequence of revocation of registration under 12AB. Again, Sumit bhai, it needs to be very seriously looked into. I am telling you, when these things will go into constitutional courts, high courts and Supreme Court, because हमारे यहाँ कोर्ट जब किसी चीज को देखती है ना, हाई कोर्ट, उनका नजरिया ये नहीं होता सिर्फ टिपिकली कि एक्ट में क्या लिखा है। और ये बात सौरभ बाबू मैं बड़ी सम्मान से बोल रहा हूं, उनका नजरिया ये होता है कि आदमी के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, और ये बैलेंस क्या है। आप किसी को टच करने के लिए सजा उसको फांसी पे लगा देंगे। और दूसरा चेंज संगीता जी इसी कड़ी में है 12AB के साथ, आई वांट टू से इट, 115 TD आप नोट कर लीजिए, 115 TD। सुमित भाई, ये भी बड़ा डेंजरस चेंज है भाई साहब। इन्होंने क्या कहा है इस बार कि 115 TD में ये लिखा है कि अगर आप चैरिटेबल से नॉन चैरिटेबल हो जाते हैं, कन्वर्जन हो जाता है आपका, जैसे आप अपने आप को नॉन चैरिटेबल में मिक्स कर लेते हैं, या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है कि आपने चैरिटेबल नहीं रहे, तो उसमें आप पे टैक्स लगता है, जो जेटली साहब लाए थे 2016 में, जितनी मेरी याद है, एग्जिट टैक्स 115 TD जेटली साहब लाए थे। उसका पर्पस ये था कि जिन लोगों ने चैरिटी एंजॉय करी है सुमित भाई और आज तक एग्जाम्पशन लिया, उनका जो एक्यूमुलेटेड फंड है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे, जिस दिन कनिका जी उसको 115 TD लगाना है, उस दिन के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू एक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स लग जाएगा। अब ये एक्रेडिटेड इनकम तक का टैक्स यहां तक तो सही था, चलो 1 मिनट के लिए, हालांकि अभी तक इसकी वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुई है, जैसे डाका जी अभी तक टेस्ट नहीं हुई, किसी ने अभी तो इसको टेस्ट नहीं किया मेरी नॉलेज में। अब इसमें सुमित भाई इन्होंने क्या डाल दिया है इस बार कि अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में देरी हो जाए, डिले, तो आप गए हो, मतलब ये मान लिया जाएगा डीम टू हैव बीन, ये, और ये चेंज रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है। आप देखिए इन्होंने कहा कि हमको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लाएंगे, ये चेंज कब से आप सब नोट कर लीजिए, 115 TD वाला ये असेसमेंट ईयर 23-24 से चेंज है, निर्धारण वर्ष 23-24 से, निर्धारण वर्ष 24-25 से नहीं है, निर्धारण वर्ष 23-24 से है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं सुमित भाई, जिस फाइनेंशियल लागू हो गया, नहीं हो गया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और कनिका जी इसका इंप्लीकेशन कितना गजब का है, ये कह रहे हैं कि अगर आपने गलती से किसी एप्लीकेशन को लेट, मतलब चेक ऐसे भी फाइल कर दिया लेट, मान लिया जाएगा कि यू हैव डीम्ड टू बी हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम चैरिटेबल टू नॉन चैरिटेबल एंड योर एग्जिट टैक्स इंप्लीकेशन विल कम ऑन योर हेड। आई बिलीव सुमित भाई
शुड डेफिनेटली गो टू, मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में कहीं, किसी बहुत बड़े हमारे विद्वान है इंस्टीट्यूट में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गौतम नायक साहब बॉम्बे के, वो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सपर्ट बहुत है, तो उनको मैंने उनका व्यू पढ़ा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये चेंज बहुत 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 ड्रैकोनियन और बहुत हेरेसिव चेंज है सर। क्या आप सोचिए अगर एक दिन मेरी एप्लीकेशन डिले हो गई सुमित भाई, तो क्या मैं क्रेडिटेड इनकम पे टैक्स दूंगा? और वो एक दिन की डिले क्या कंडोनेबल नहीं है क्या? मतलब उसमें एक दिन की डिले और 100 दिन की डिले सब बराबर है। मतलब उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन सौरभ भाई फाइल करने में, वो जो एप्लीकेशन जो रिन्यूअल के लिए फाइल करनी है उसमें लेट हो गए, तो आपको डीम टू भी कन्वर्ट मान लिया जाएगा और आपके पास जितना भी एसेट पड़ा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से आपको टैक्स दिया जाएगा। नहीं संगीता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज ओपन योर माइक, यू कैन स्पीक मैम। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू। हाँ कपिल जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी हमने जो 10A की एप्लीकेशंस लगानी थी ना, टाइम बार हो गई थी, 31 मार्च तक नहीं लगाई, तो इन्होंने अभी नवंबर तक उसकी डेट एक्सटेंड करके टाइम दिया था। दैट मे बी द बैकग्राउंड सो दैट द पीपल वुड कंप्लाई फॉर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ दिस रेलवे रजिस्ट्रेशन। आप अपनी जगह सही हो, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इसका आप सी देखिए क्या है, एक आदमी, मैं इसको सरल तरीके से अपनी बात को दोबारा बोलता हूँ कि आपने एक एप्लीकेशन लगानी थी मैडम, आपने उसको लगाने में कोई भी डिले कर दिया, और वो डिले मान लीजिए मार्जिनल डिले है, मॉडिकम डिले है, नेग्लिजिबल डिले है या अनइंटेंशनल डिले है, और उस हो सकता है मैडम यू विल अप्रिशिएट कि चैरिटेबल ट्रस्ट आर, अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, कि आर नॉट असिस्टेड एज ए कॉर्पोरेट बिजनेसमैन इज प्रोफेशनल, यू कांट एक्सपेक्ट एनी हाउ. Now, what they are envisaging is that if you fail to meet the deadline given in that 12A of filing this application within that stipulated statutory time limit, then you are deemed to be converted to non-charitable, and entire implication of exit tax. As ipso facto समझते हैं ना आप, automatically by operation of law. Operation of law. Even if you haven't filed your tax return, then also they are making you liable to 115 TD. And now you see, I'm sorry, मेरी तो अभी तक यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा मैडम, मेरा डाइजेशन पावर इतना as far as my mental digestion goes, see, I have a problem, you all know. I go by my own sense of understanding. See, आप एग्जिट टैक्स उसके लिए लाए थे जो एक लोग ऑफेंडर हैं और जो सही ने, जिन्होंने चैरिटी को मिसयूज किया और अब चैरिटी से बाहर आ रहे हैं, दैट वाज द, हाँ। बट आज अमित जी क्या हो रहा है कि जिसने इनऑक्यूअसली कोई डेडलाइन मिस कर दी किसी वजह से, एनी गुड रीजन, एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो किसी ने ये बात कही ना कि आपने 119 में पावर दी, आप नोट करिए 119 में सीबीडीटी के पास पावर्स हैं, तो क्या अगर मैं सीबीडीटी के पास जाता और सीबीडीटी को लगता है कि मेरी कनिका जी डिले कंडोन होनी चाहिए, तो क्या तब भी एग्जिट टैक्स लगेगा? एक्ट में आंसर नहीं है अभी इसका। सर वो पता क्या हरास करना है लोगों को? नहीं, ये सी, अब ये संगीता जी इसका एक अलग फैक्टर है कि इससे जो लिटिगेशन बढ़ेगी, इससे जो कोर्ट में ट्राइब्यूनल में केस जाएंगे, फिर लोग पूछ रहे थे कि गोयल साहब इस समस्या का क्या समाधान निकलेगा अगर किसी से रेड लाइट गलती से मिस हो गई या जंप हो गई। मेरा उनको सबमिशन ये था, या तो आप 119 नोट कर लीजिए जो मर्सी पावर है सीबीडीटी की, और या हाई रिट में जाएंगे, हमारे जैसे वकील के पास आएंगे, आर्टिकल 226 में हमें फीस भी देंगे, हम रिट फाइल करेंगे, फिर काम होगा। तो आर्टिकल 226 इज ए पावरफुल आर्टिकल। आई ऑलवेज से कि आज की तारीख को न्याय मिलता है तो हाई कोर्ट से, और कोर्ट से तो वो सबसे पावरफुल आर्टिकल संविधान। एनी हाउस आई विल से 2 मोर सेक्शंस। 19-3 हो गए क्योंकि मैंने 10 मिनट बाद में चालू किया था, मैं 2 सेक्शन और बोलूंगा सुबर भाई। सेक्शन 148 और सेक्शन 151। 148 का चेंज इस प्रकार से है सर कि जो आपको 148 के नोटिस में रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, पहले आप 30 दिनों के अंदर करते थे, अब आपको उस रिटर्न को फाइल करने के लिए उन्होंने कहा कि आप 3 महीने के अंदर कर सकते हैं, और एडिशनल टाइम जो आपको एओ साहब देंगे। और अगर आपने उस 3 महीने के अंदर या एडिशनल टाइम में कनिका जी रिटर्न नहीं भरी 148 सेक्शन की, तो उस रिटर्न को निरस्त माना जाएगा, मतलब उसको 139 धारा के तहत रिटर्न नहीं माना जाएगा, और उसके ऊपर सब सेक्शन 2 का नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं होगी। अब ये चेंज सौरभ बाबू प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आया है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसका इंप्लीकेशन ये है कि डिपार्टमेंट ने अगर पुराने केसेस में 148 की रिटर्न के बेस पे 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया है, तो वो अमित जी सारे केसेस डिपार्टमेंट नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आज उन्होंने ये बात कही है कि 148 की रिटर्न जो 148 के टाइम लिमिट के बाद भरी जा रही है, उसको हम 139 में नहीं मानेंगे। ये बात उन्होंने आज बजट में डाली है, जो अभी एक्ट बनेगा। तो मेरा सबमिशन कनिका जी ये है कि जो पेंडिंग केसेस है, पास्ट केसेस है, उसमें आप इस अमेंडमेंट से हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये भी एक एनालिसिस का तरीका, नोट कर लीजिए कि अगर एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ जाती है, तो आप ये बोल सकते हैं उसके बेसिस पे कि सब्सिक्वेंट पोजीशन क्या, अर्लियर पोजीशन क्या थी, प्रीवियस पोजीशन। I hope Sangeeta ji, my point is well taken note of. Yeah, good.
और इसका जजमेंट नोट कर लीजिए, कपिल गोयल की बनाई हुई चीज नहीं है। फिर आप बोलेंगे मैं जजमेंट बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, नागेश्वर राव हमारे देश के जज रहे हैं, उनका लिखा हुआ इनकम टैक्स का, मित्सुबिशी लिमिटेड 438 ITR पेज नंबर 174, 438 ITR पेज नंबर 174, Mitsubishi Limited, that subsequent change in the law can clarify what is the previous position, and this is a very healthy preposition of law कि आज का तो ये बता सकता है कि पास्ट की पोजीशन क्या थी सौरभ जी। और ये मेरे हिसाब से हम कई बार जब हम बजट पढ़ते हैं ना संगीता जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, कि हम कई बार इस चीज को नहीं एनालाइज करते हैं, हम इसको ऐसा ही पढ़ लेते हैं कि हाँ ठीक है चेंज हुआ है, पर उसका ये भी प्रोस्पेक्टिव डायमेंशन, रेट्रोस्पेक्टिव डायमेंशन, पास्ट डायमेंशन, सब्सिक्वेंट डायमेंशन भी ध्यान में रखना। 151 सेक्शन 151 डील करता है कनिका जी अप्रूवल की। जब 148 का नोटिस आएगा 3 साल के बाद तो चीफ कमिश्नर महोदय की अप्रूवल चाहिए, और 3 साल के अंदर आएगा आशा जी तो कमिश्नर की। अब डिपार्टमेंट ने सेक्शन 151 की अलाइनमेंट कर दी है धारा 149 के साथ। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग अलाइनमेंट कि जो टाइम एक्स्ट्रा 149 के अंदर ग्रेस पीरियड मिल रहा है, वही ग्रेस पीरियड उनको संगीता जी 151 के अंदर मिल जाएगा। तो आप सब इस चेंज को नोट कर लें कि ये चेंज भी आज से हुआ है। डिपार्टमेंट ने क्या करा था सौरभ भाई, 149 के उस ग्रेस पीरियड को पहले से ही मान लिया था 151 का हिस्सा पास्ट में 2 सालों से। तो मेरा कहना यह है कि आप आज अगर आज 151 में चेंज लेके आ रहे हैं तो क्या वो आपको पास्ट में हेल्प थोड़ी ना कर सकता है, क्योंकि आप चेंज को तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेके आ रहे हैं। आई होप माई पॉइंट इज वेल टेकन नोट ऑफ इन सेक्शन 148 एंड 151। एक और चेंज है संगीता जी, जैसे टाइम हो रहा है तो बस लास्ट में बोलूंगा, 43 कैपिटल बी। अब ये भी एक चेंज है जो बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है, जिसपे बड़ी इंटेंस डिबेट हो सकती है, जैसे अभी हमारी हो रही थी 142 पे, कि क्या इनकम टैक्स एक्ट को कनिका जी हम ऐसा एक्ट बना रहे हैं एक जगह जाकर, जैसे एक तरफ आप लोग पूछ रहे थे अजय भाई से कि क्या सोशल सिक्योरिटी सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या है, मैं उस पर नहीं हूं। मेरा पॉइंट ये है कि 43B को आप पढ़िए आज क्या है। 43B इज ए सेक्शन जिसमें लिखा है कि एक्चुअल पेमेंट पे आपको जो खर्चा मिलेगा। संगीता जी उन्होंने क्लॉज एच में 43B में कनिका जी क्लॉज डाल दिया है, अगर किसी पर्टिकुलर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के साथ बिजनेस कर रहे हैं और आप खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर खर्चा तब मिलेगा जब आप पर्टिकुलर पेमेंट कर रहे हैं। am I right? 43B का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर वो पेमेंट पर्टिकुलर जो सेक्शन उन्होंने लिखा है 43B क्लॉज एच में, सेक्शन 15 है कुछ MSME एक्ट का। तो इसके अंदर आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जुडिशियल एनालिसिस में ये देखनी पड़ेगी कि जो सेक्शन है मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नोट कर लें, क्योंकि उस सेक्शन का इंटरप्ले डिसाइड करेगा 43B लगेगा या नहीं लगेगा। आप सीधा स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को देखकर इमोशनल होकर उसको 43B नहीं लगा पाएगा डिपार्टमेंट। उसके अंदर एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या जिस पेमेंट की हम बात कर रहे हैं स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को, वो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सेक्शन में आ रही नहीं आ रही, और उसके अंदर उसका क्या स्टेटस है। एंड दैट इज द सेक्शन इज सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसका सेक्शन 15। उस सेक्शन 15 में क्या है सौरभ बाबू, ये बात मैं भी कल डायरेक्ट टैक्स कमेटी का जब हम सेमिनार कर रहे थे ICI में, तो वहां चिटले साहब हमारे जो चेयरमैन है उनसे भी मुझे ये बात समझने को मिली कि इस सेक्शन 15 का संगीता जी बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है कि सेक्शन 43B में जब उन्होंने उसको डाला है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को, तो उन्होंने सेक्शन 15 को रेफर किया है। तो आपको इसको हॉरिजॉन्टली इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल इंटरप्रिटेशन समझते हैं आप, कि आपको दोनों को कोलेसेस करके कन्फ्लैट करके समझना पड़ेगा। धारा 15 MSME एक्ट 2006 और धारा भी आयकर अधिनियम 1961, दोनों का समन्वय करके आपको पता चलेगा कि आप कहां लैंड करते हैं। बट करण जी मेरा इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि अब ऐसा लगता है कि कई बार कि 43B में धीरे धीरे आप जैसे ESI को बोलते थे कि साहब अभी तो बोल रहा था कि अगर आपने एक दिन का डिले कर दिया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का तो गया। अब ये चीजें क्या हो रही है धीरे धीरे, आप सोचिए सपोजिंगली आपने कोई बोनाफाइड डिले कर दिया किसी पेमेंट में, तो अब संगीता जी क्वेश्चन ये है, एक लार्जर क्वेश्चन है, मैं माइक्रो क्वेश्चन पे नहीं हूं, मैं मैक्रो क्वेश्चन पे हूं। फिर वही बात है, माइक्रो इशू अलग है, मैक्रो इशू अलग है। आई एम ऑन ए ब्रॉडर इशू कि जो डिफरेंस क्रिएट होगा रियल इनकम का और 43B की एप्लीकेशन से, फिर कोई कह सकता है जैसे डाका जी पहले ही तो भी गोल सब क्लॉज थे, पहले थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब जितने ज्यादा क्लॉज बढ़ते जाएंगे और जितना ज्यादा आप मुझे रियल इनकम से परे लेते जाएंगे, उसका इंपैक्ट सर का वजन तो पांव पे आएगा ही आएगा ना। आप कह सकते हैं कि सर का वजन सर पे ही रहेगा। Anyhow, with this discussion, I come to the end of my deliberation in a sense, and I will say again with the see, हमारे यहाँ रामचरितमानस की बड़ी मान्यता है साहब, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि रामचरितमानस की संगीता जी मेरे को तो बहुत छोटा सा पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चौपाइयां समझने की। तो एक चौपाई और मेरे सुमित भाई माइंड में आती है हमेशा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा भावा, वे कपट छल ना भावा। और यह है कि हरि व्यापक सर्वत्र स्थाना प्रेम ते प्रकट
हो ही मैं जाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आई बिलीव एंड आई एम सॉरी इफ सी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आई एम सॉरी इफ यू find my words slightly harsher to side, but it is my own way of expressing my humble thoughts. I have no offense to anybody, and it's like this that we all in a journey of learning, and in that journey of Ma goddess, this goddess of knowledge, Ma Saraswati witnesses our discussion, and I believe we all remain blessed, and I pray. Thank you all of you. Thank you Kapil sir for your wonderful deliberation as always, कि आप जो गागर में सागर भर देते हैं और expression the way of delivering the session fantastic. So give a यहाँ पर आपके लिए and sir this is the 6 hour long already 6.25 घंटे का वेबिनार जहाँ पर 6 घंटे से ज्यादा सभी लोगों ने मैं तो बोल चुका हूँ सर, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भी वो क्या है, तुलसीदास तिलक करे रघुवीर, तो चल रहा आपका। कई लोग आए गए, इनमें सौरभ जी में देख पा रहा हूँ कि सौरभ जी जिन्होंने शुरू से पहले सेशन से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एंड अवर मैनेजमेंट टीम जिन्होंने प्रोग्राम को सफल बनाया, अलग अलग टाइम पर पार्टिसिपेट किया, जिसने जितना हो सकता था उस टाइम पर पार्टिसिपेट किया। सो आई रिक्वेस्ट आशा जी टू से फाइनल फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स टू कंक्लूड द टुडे बजट डिस्कशन। आशा जी। Thank you Sumit ji. First of all, thanks to each and every participants जिन्होंने इस आज के सेशन को सुना, एंड हमारे सभी स्पीकर्स जिन्होंने अपना टाइम निकाला, अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया इस कासा के प्लेटफॉर्म को। कुछ पार्टिसिपेंट, कई सारे पार्टिसिपेंट्स है, कुछ नहीं, कई सारे जो पूरे हमारे फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट सेशन तक रहे। सबका नाम तो मुश्किल है, बट जैसे देख पा रहे हैं संगीता गर्ग जी हैं, सौरभ जी हैं यहाँ पर, संगीता जी also from the starting. बाकी नाम तो नहीं ध्यान में आएंगे, बट ईच एंड एवरीवन बहुत बढ़िया सेशन है मैम, मजा आ गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वी होप कि फिर जब हम कभी भी करेंगे तो आप लोग फिर से हमें ज्वाइन करेंगे। तो ईच एंड एवरीवन थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू कपिल जी, थैंक यू कपिल जी, हमें फूड फॉर थॉट देने के लिए। कुछ इश्यूज बड़े अच्छे आपने उठाए हैं। कासा की ना हमें मेंबरशिप का भी भेज दीजिए लिंक, कि भी आप लिंक सुमित जी विल डू ऑफलाइन। डेफिनेटली विल शेयर मैडम। मैडम मैं तो पता है क्या आशा जी, आप लोगों से मिलने के बारे आता हूँ, मैं करण जी को बोल रहा था, मुझे बोलना नहीं आता ज्यादा, ये तो मेरा तुक्का चल रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से आप मुझे प्यार करते, चलिए ये आपका लव एंड अफेयर, आई एम ब्लेस्ड सच काइंड ऑफ एडुलेशन। आपने तो हमें जो कपिल सर एक अपनी आंसर भी दे दिया अपनी ना, कांटेक्ट डिटेल जरा प्रोवाइड कर दें कपिल सर। कौन दो? सौरभ जी मैं शेयर कर दूंगा, मेरे से ले लेना। हाँ सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। विजिटिंग कार्ड है, सुमित भाई और करण भाई वो बैठे जी जी। करण भाई की यात्रा कर रहे हैं आप, लग रहा है। हाँ सर, वो ऑफिस में स्टाफ है ना, ऐसे घूर घूर के देखने लग गया था कि सर जाएंगे तो हमें छुट्टी मिलेगी। मुझे लग रहा था कहीं आप अकेले चल गए, हम तो घर में बैठे ऑफिस में हम काम कर रहे हैं। नहीं सर, ऑफिस से घर के लिए यश ड्राइव कर रहा है, ब्रदर ड्राइव कर रहा है, और मैं साथ में बैठ के सुन रहा हूँ पूरा सेशन। गिव माय रिगार्ड्स टू एवरीवन। So with this, Kapil sir, once again thank you, and wonderful deliberation once again. Hare Krishna sir, Radhe Radhe, thank you. Thank you sir, thank you. राधे राधे सर, राधे राधे सभी को। राधे 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 जी, राधे राधे। क्लोज करने सेशन। Yes, just a minute.